ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝਾ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ if they caught gasoline ਫੋਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣਿਆਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰ ਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਸਾਠਿਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੈਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਮਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾਵਾਂ ਸਲੀਪ ਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮਨੀ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸ ਜੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸ ਜੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝਾ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ if they caught gasoline ਫੋਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣਿਆਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰ ਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਸਾਠਿਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੈਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਮਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾਵਾਂ ਸਲੀਪ ਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮਨੀ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸ ਜੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸ ਜੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸ ले हुई जान जान
आज होने वाला है बहुत ज़्यादा वो। तो आज क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। देखते हैं कुछ क्या ही होगा। चलो चलो चलो, आज होगा क्या? मुझे एक्शन की मीटिंग जज एक्स मैवरिक भाई। देखते हैं भाई आज मैवरिक भाई क्या बोलते हैं सोचने के बारे में। चलो, बढ़िया आपके एक बार देखता हूँ। नहीं, हैरान का नहीं है, वो वाला है, ये वाला नहीं है। ये अपडेट किया था कल। वो वाला बोलो जो इसमें अरे तो वीर का चलते हैं भाई। हाँ भाई है। राजवी वेलकम टू लाइव। क्या हाल है राजवी? हाँ राजवी, योर गेटअप ब्रो। ऐसा ही होता ना, नहीं ऑलमोस्ट तेरा ही गेटअप है भाई। पता नहीं, यही कैरेक्टर देखने से राजवी तरह लगता है मुझे। चला गए जंगल 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 जंगल, बात चली है पता चला है। माइक माइक से कर, लेकिन तो माइक नहीं है भाई। माइक यही है, इनबिल्ट माइक है। एडजस्ट कर, माइक नहीं है हमारे। अभी ठीक है, आई गेस अभी ठीक हो मोस्टली। मेरा ना पूरा ये नॉइस सप्रेशन, नॉइस का है। लिमिटेड भी डालते थे, एक मिनट। अभी अभी आ गया, आ गया सब आ रहा है। अच्छे से आएगा मोस्टली। गोली मार दूँ। गोली मार दो, गोली मार दो। चल बे। देख, बट रहा है क्या, बट रहा है आवाज़ है। ऐसा ही होगा, लाइक कंटिन्यूस बात नहीं कर रहा हूँ। कंटिन्यूस बात करूँगा तो ऐसा नहीं होगा मुझे। एविडेंस का रखना है भाई। एविडेंस, एविडेंस एविडेंस है भाई। लॉक हो गया। और ऑक्सर आ गए। हाँ भाई अभी। वो कहाँ जा रहा है? क्या? कहाँ जा रहा है? ए, क्या? गाड़ी रुकी है। हाँ हाँ भाई। तो सुन, हम्म। मुझे कुछ मिला है। ओजी 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 मिला है मुझे।
कहाँ से? नहीं दे, अच्छा नहीं था क्या तू? मैं कह रहा था आफ्टरनून। नहीं देखा ट्वीट? नहीं क्या हुआ? पलेटो में पूरा भाई वीड का फार्म बना दिया पलेटो को। हाँ, क्या? चेक एविडेंसेस ना। कहाँ पे डाला है? ईमेल उस पे पे उस पे ईमेल मेल पे पे। ईमेल मैं पे देखता चेक हूँ, 2 मिनट दे एविडेंसेस। मेरे को। और उधर से सैंपल कलेक्ट किया मैंने। भाई ये और कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये था। हाँ भाई क्या है? क्या हाल है अभी से? नहीं आया बंदा। जंगल जंगल बात चली है पता चला है। कौन? हम्म। क्या हाल है रॉक्सर? बढ़िया बढ़िया। अच्छा कुछ बात करना है। हाँ हाँ, बात करते हैं, आ जाओ आ जाओ। जो तुमने फोटो डाली थी हाँ। वो हीरोइन टेबल है, मैंने चेकआउट किया था। अच्छा ओके। हम्म, आओ। अब पता है क्या आज आज क्या हुआ आपको? आफ्टरनून को। क्या हुआ? क्या हुआ आज? आफ्टरनून वाज ट्वीट दैट पूरा पलेटो बैंक है ना। और पलेटो हम्म, बैंक के आमने सामने पीछे पूरा वीड का फार्म बना दिया जी। क्या बात है? या एविडेंसेस भी अपलोड कर दिया है मैंने। हाँ मेल पे देख लो एक बार। हाँ हाँ, देखा मैंने, बिल्कुल देखा हाँ यो उसका। व्हाट अप? तो बड़ा बड़ा। पीडी का कॉल था कि टीए शुड कम इमीडिएटली, सो दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन। मैं गया हम्म सिचुएशन पे और सैंपल भी कलेक्ट किया है। हम्म। सैंपल में कुछ ओजी कुछ आया था मेरे को, वो पता नहीं क्या है। अच्छा, मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया या नहीं कर दिया अभी तक? डिस्ट्रॉय सब कर दिया। हाँ पीडी वालों ने भी हेल्प हाँ। किया था सब मिटाने में। हम्म मिटा लिया एंड सैंपल उधर पड़ा था, मैं लेके आ गया सैंपल। तो वो कुछ कोई हम्म फॉरेंसिक वाले हैं तो सैंपल उनको दे देता हूँ। एंड हम्म। मेरे आदमी को यही बोला वो क्या है बीड का क्या है तो प्रोसेस जान के मुझे बोलो। तो ही से डिलीटेड बाई 8:30। अरे बेंचो, ये क्या हो रहा है? और जरा देख के आएंगे। कहाँ बेडी को प्रोटेक्ट कर दे। है? आओ 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 आओ। अब लीजन को गाली फाड़ दी थी। काली। यार मैं तो मुझे बताऊं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जिस तरीके आज जज चार्ल्स वापस उठ गए ग्रेव यार्ड से, मतलब ग्रेव यार्ड बोल रहा हूँ, मतलब इधर से हॉस्पिटल से। एंड ही वांट्स टू नो द रिपोर्ट। रिपोर्ट मैंने बना दी थी, ठीक है, मैंने बना के फॉरवर्ड आउट की है, तुम लोग भी देख लेना डीओजे ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी डीओजे डीए ट्रांसक्रिप्ट में। आई होप, देखते हैं क्या होता है। और अक्सर। पैनल मेंबर में भी हाँ लोगों हाँ को बुलाया है, पता है मुझे ऐसा क्यों लग एक रहा है, मिनट कहीं इधर आओ पीडी वाले ना हो रॉक्सर। पैनल मेंबर में। ये मिली थी सैंपल। इसको स्टैश हाउस में रख दो यार। है 40 है 40-50 है। बड़ा तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या मिला? दिखाता हूँ। अरे ये रख ले तू सैंपल के लिए। फिर जी से भी बात कर ली थी, आ गए ना। विजयन बाबू बाबू हिन्नच के ये भी सही है।
देखना अपने डिपार्टमेंट का ही होगा right? कौन है वो? लाइक होगा इन्वेस्टिगेट कर। ये 602 हाँ वो मिला क्या कुछ? ओए हाँ मिला यूनिट मेरे देख को। रहे हो? तो भी 5-10 मिनट दो ना, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है, no worry। नहीं मिल गया मतलब पूरा? हम कैसा करना, मिल गया वो? हाँ नहीं पूरा नहीं मिल हम गया। चूतिए हैं क्या जो हम हमारे ऊपर रोज गोलियां चल रही थी ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ? मैं बात करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं वही लोकेशन है ना? नहीं हाँ हाँ मैं प्रोटेस्ट कर दूंगा अब तो मैं प्रोटेस्ट कर दूंगा। क्या हुआ? यहाँ साला अपने ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है। हाँ हमारे ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है हैं? डॉक्टर, क्या हो रहा है ये? अरे पीडी है ना, पीडी को हमारे सब ऊपर मिलेगा, पीडी को सब मिलेगा। नहीं हमारे ऊपर फ्लाईओवर है, हमारे ऊपर से लोग बचा के चले जाते हैं, रोज का है, वो कुछ नहीं हो रहा। वहाँ साले कैंप करते हैं। पार्शियलिटी देख रहे हो? आओ जरा देखें। डॉक्टर भाई गलत है भाई, आ सुनो, जाओ छोड़ो। एक 10 मिनट में हमें उधर जाना पड़ेगा थोड़ा। किधर जाना पड़ेगा बताओ यार, मेरा वॉशिंग ड्यूटी देने का ही वॉशिंग मतलब। वॉशिंग वॉशिंग थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, जाना पड़ेगा। क्या? नो ट्रेसपासिंग क्या लिखा हुआ? रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो ट्रेसपासिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। भैया पार्शियलिटी तो है। अरे आज पता है रॉक्सर क्या हुआ? मैं एमिनेशन के आसपास घूम रहा था अपनी गाड़ी में, ठीक है? तो एक एमिनेशन का बंदा मेरी गाड़ी में आके बैठ गया कि भगा भगा भगा, बचा ले बचा ले बचा ले। लीजन ने मेरे पे गोली बोल दी। वाह भाई वाह। वो तो मैंने उसको उतार आगे जाके मैं कहा भाग, मैं भागा फिर वहां से। फिर तब भी मेरे पे स्नाइपर शॉट लेता रहा बार बार, बच गया। ये अच्छा नहीं है। आराम से आराम से। Sir, are you listening? अरे ही इज इन शॉक, पार्शियलिटी देख के शॉक हो गए। बीसी गेम्स खेल लोगे वो। अरे खेल ले होंगे भाई, गाड़ी कौन चला रहा है? स्टार्ट में चला रहा है क्या? अरे मुझे पागल वागल हो गए? मोबाइल पे। हाँ बीसी गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल है। आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, पानी पी लो एक बार। आवाज नहीं आ रही है, कुछ बात कर रहे हो पर आवाज नहीं आ रही। अरे चाबी तो दे के जाओ। गला दे वो करो। अरे वो चले गए ना प्लेन। सुनो वो प्रोफेसर, हाँ 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 ये कर लो तुम, ये करो प्रोफेसर, ये क्या करो। करा मैंने? हाँ करो करो, नहीं सुनाई क्या दिया करा है, मैंने? क्या करा? सुनाई दिया सुनाई दिया सुनाई दिया। कुछ नहीं सुनाई दिया। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं ये ना मुझे सुनाई दिया, कोई ना कोई नहीं कोई नहीं ना। सुनाई अरे नहीं कर लो दी। कर लो कर लो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे नहीं नहीं कुछ देख रहा है ना टीवी में, वही नहीं नहीं हो गया विक्टोरिया की टीवी टीवी बंद कर में। दी मैंने। हाँ हाँ एक तो रॉक चाबी लेके नहीं गया यार। तो बेकार है। कौन कौन बता रहे? देख। हाँ प्रांजल मैम You बोलिए। okay? हाँ सब बढ़िया, रॉक सर चाबी लेके भाग गए। Okay, okay. अरे प्रांजल मैम नहीं है क्या? वही तो है। अरे प्रांजल मैम नहीं है वो, प्रांजल ऐसे दिखते नहीं और सुंदर दिखते हैं। रीम बलायत। टीम रीम बलायत। बलायत। टीम बलायत भाई हॉट वायर कर सकते हैं क्या गाड़ी? कैसा करें? आई डोंट नो। वो प्रोशार को होना चाहिए, प्रोशार क्या नहीं। हटो तुम, वो आएंगे हवा में तेलते आएंगे, वो हो रहा है उनका।
तुम भी देख लो। नहीं नहीं, मैं मेरा देखूँ, मैं किसका भी नहीं देखूंगा भाई, मेरा ही देखूंगा बस। मेरा देख के शाना होगा। हम्म। मैं देखा एक भेजा, देख फोन में देख। यार निंदौर कॉल भी भर रहा है। वो नहीं था। हाँ देख, हेलो। नहीं नहीं, रेडियो पे मैं था ही नहीं, सॉरी। एक काम करो जरा, पिल बॉक्स आना है, गाड़ी लेके कोई भी। रेडियो में मैं भी नहीं हूँ भाई। मैंने भी ज्वाइन नहीं किया, मैं इंदौर आ रहा है। 520 सोल्यूशन पड़ी मैं। 10 को। सुन, वो नहीं था। आ, गाड़ी लेके हम दूसरे जगह जाना है। वी ठीक हैव है, टू कहीं गो। नहीं, अरे चलो अभी आने दो, डॉक्टर को आने दो। ऑक्सफोर्ड अबे को यार आना है। 9:30 बजे मीटिंग है, बहुत बढ़िया, आज अरे डीए खत्म हो इन्फॉर्म। सकता है। हाँ मैम, बोलिए मैम। ये ट्विटर पे जो फोटो है सही है क्या? क्या चाहिए? कौन सी वाली? कौन सी? पीडी की हालत ऐसी हो गई? हाँ हाँ हाँ, सही है। वही है। He is now लग नहीं secure रहा, now. ऐसा क्यों? अगर पार्शियलिटी है डेड मैम, हुआ ना आज, आरपीजी पार्शियलिटी है। लेके मार दिए। सर ये क्या? पार्शियलिटी आरपीजी। बहुत है शहर में। अरे पार्शियलिटी नहीं बे, आरपीजी चली है आज पीडी पे। हाँ, हम पे नहीं चलिए। हम पे आरपीजी चली है कभी? चलिए भाई। भाई अच्छा। कटाना लेके मारे भाई, पीडी डीए के डीओए, सामने। डीओए क्या है? डीए का एक टीम है। डीए मतलब पता है आपको? टीम नहीं है वो, टेलर ने थोड़ा मिस्टेक बना दिया, समझ। हाँ। ई के बजाय वो डाल दिया। अब गवर्नमेंट का बजट इतना लो है कि दूसरे कपड़े सिलवा के नहीं दे रही, कह रही यही पहनो। एरिया अभी बजट नहीं है, बजट होने के बाद करवा के। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो चलो, लगे रहो आप लोग। कोई आपका आपको नाम? ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं नहीं, आ रहा है हमारा, आ आपका रहे नाम? आ रहे, इनका 4-0 हो गया, नेता का, मेरा नाम रॉकस्टार का। रीम है। नीम। प्रांजल कौन नहीं तो है क्या? आज? क्या? प्रांजल प्रांजल। प्रांजल? प्रांजल वापस आई है मैं इसमें? हाँ हाँ, नहीं वही देखा आ मैं। रही है 3 दिन से। हाँ। आप भी बहुत टाइम बाद ही आए मेरे साथ। हाँ। अरे 5-6 बजे उठना पड़ता है डेली तो। अच्छा। अच्छा ठीक। ठीक। हाँ, तो मैं तो गिर जाती हूँ 8-9 बजे। ठीक। समझ गया समझ अरे प्रोफेसर, सुना है निंडोर ने रिजाइन किया है? गया। अबे नहीं भाई, ये तो आ गया। नहीं भाई, रिजाइन किया, देख रिजाइनिंग शीट पे। मैं गुलखान है वो। अबे निंडोर है भाई। जिससे निंडोर, जरा चाबी देना हाँ मुझे। मैं हूँ मैं हाँ हाँ, चाबी देना मुझे। बेटा बेटा आई हैव टू ड्राइव टू समवेयर। क्या चाबी? हाँ चलो, पीछे हो जाओ। आ गया आगे पीछे कर। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ पर मिलो आपको? वही सेम लोकेशन। सेम लोकेशन मतलब रेंटर? सेंटर नहीं, तो पत्थर पत्थर। पत्थर? हाँ भाई, अ, रॉक सेल से मिले थे ना आप- भैया। अच्छा वहाँ पे आ जाओ, ठीक है आ रहा हूँ। गवर्नमेंट है कौन? है पता दो भाई। अच्छा सुन, गुलकन नहीं, इसका नाम क्या है, इंदौर। हाँ सर बोलो। मुझे ड्रॉप करके उधर चले जाना, ठीक है? मेरे को प्रोफेसर को, ठीक है? हम 91 बुला लेंगे, फिर से आ जाना। क्या पैरामीटर्स बना लिए हैं? पीडी गोइंग ह्यूज। तो सर आसपास ही रहूँगा आपके या फिर कहीं दूर चला जाऊँ? नहीं, थोड़ा दूर चला जाओ बस, मैं बुला लूँगा बाद में। तो डोंट माइंड, हाँ, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ कोई नहीं।
प्रोफेसर उधर था, मैं बुलाता हूँ तुमको, नेटवर्क बुलाता हूँ। अंदर पोजीशन करना, हाईवे पे ही रहो, ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है? कहीं ट्रस्टेड है बंदा ना, अभी पे कहाँ है जरा इन्फॉर्मेंट? आ रहा है। चल छोटा सिगरेट विगरेट तो तू सर इधर बस हो, 1 माइल दूर हो, आ रहा हूँ, इधर 2 मिनट। मैं आ गया इधर, फिर इसके इसमें हाँ आ रहा हूँ। एक माइल दूर है। अरे मास्क उतार ले, मास्क उतार ले। You wanna smoke? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी सब सही है। He also wants to join DEA, but उसका criminal records and सब है। तो रॉक्सर एंड मैंने बोला कि उसको इन्फॉर्म करते हुए, और नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ DEA, बट वी आर एक्सटर्नल एमिनेशन पे काम करता बंदा। नाम क्या है? चांद सितारे। अरे ये तो अपने खाने वाला है। हाँ वही है, ये वाला एमिनेशन में काम करने वाला पूरा वही है। इसने क्या क्राइम करा? कोई कॉल में। हाँ बोलो। मुझे मुझे लोकेशन भेजो ना, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जगह मैप में। ठीक है, मैं आता हूँ। हुआ लोकेशन याद नहीं आ रहा।
100 back 10-8 after code 0. अरे अरे क्या हाल है? अरे अरे हाथ क्यों अंदर आ जाओ, अंदर आओ। क्या हुआ बॉडी तेरे कैम को? ऑफ। हाँ बॉडी अरे कैम ऑफ कर लीजेंड दिया ने गोली मार दी बहन। प्रोफेसर, बॉडी कैम ऑफ कर। चालू ही नहीं ना मेरा। हाँ चालू नहीं करती। हाँ। सर पहले तो एक मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो। हम्म। अरे आपका अरे पहले किसका फोटो खा लिए? उनको उनको दो। मेरा भी वो खा एक लिया है। पहले सैंपल लेता हूँ, रुको ये लो। आ हाँ ये मिला है मेरे को, ऑलरेडी है हाँ मेरे ऐसे पास। 50 है मेरे पास। अच्छा हमारे पास 90 है। अच्छा वो पलेटो बैंक के यहाँ पे गए थे हाँ आप? वही वही। हाँ तो वहाँ पे और भी थे तो मैं उठा लिया। हाँ ठीक। तो सर इसका ये तो सर ये फार्म करने से ही बनता है सर। हम्म, इसका आपको सीड है ना सर, 3 लोकल जॉब करने से मिलेगा। एक तो जो रिसाइकल सेंटर है ना, ठीक वहाँ है पे जब आप ट्रैश साफ करने जाएंगे ना तब आपको सीड्स मिलेगी उसमें से। ठीक है। तो प्रोफेसर एक उसमें बार से इसका नोट बना लो ना, ताकि एविडेंस का प्रॉपर सबमिट कर सके हम। बस मेरा नाम मत लेना अरे सर। नाम नाम नहीं नहीं नाम नाम नहीं आएगा ना। तो मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें। हाँ तो एक रिसाइकल सेंटर वाला जॉब है, फिर दूसरा है टैक्सी वाला। ठीक है। टैक्सी में भी कुछ कुछ कस्टमर्स आपको दे के जाते हैं। कोई आ रहा है? काफ़ी इलीगल। वाक है क्या? Volume is 25 at meeting room. अरे मत आओ, क्यों आ रहे हो? मत आओ, जाओ 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 निकलो। कॉल तो दो मेरी जान। अरे कॉल दे दिया भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई ना नहीं नहीं ना, अभी नहीं अभी नहीं। अबे इन्फॉर्मेंट ही तो है, वो तो सीनियर है ना, वो तो आ ही सकता है। ठीक है, आ जाओ। जाने दो, तुम कर लो, मैं अरे इसका प्राइवेसी है भाई, मेरा कुछ नहीं है। सीनियर जूनियर में कुछ नहीं है, इसका प्राइवेसी सीनियर तो है। बोल रहा हूँ ना, वो मास्क में है ना। हाँ कोई ना, हाँ बोलो। अरे ये हमारा दोनों का है, हम दोनों का प्रमोशन मिलेगा। अच्छा सेकंड टैक्सी वाला जॉब है, उसमें सर काफ़ी इलीगल चीज़ें देखी जाती है सर। ठीक है। पोशाक हो गया, ये वीड सीड हो गया, हम्म, फिर नेकलेस वेकलेस भी होता है चोरी का। और तीसरा होता है गार्बेज कलेक्टर का। ठीक है। तो उसमें भी आपको सीट्स मिलते हैं सर डस्टबिन में। ठीक है। अगर गार्बेज कलेक्टर अभी इतना मतलब लोग करते नहीं है, पर ये 2 जॉब है जो इसमें से आपको वीड सीड मिलेंगे। हम्म, फिर आपको पलेटो के यहाँ पे देखो फार्मिंग स्टोर है, फार्मर फार्मिंग स्टोर स्टोर है। किधर है? अरे तुम फार्मर स्टोर पलेटो के यहाँ पे, नहीं तो मेरे को लोकेशन 1 मिनट दिखने दो। मुझे वो लोकेशन का एक फोटो मिल सकता है बाद में? हाँ पलेटो के यहाँ पे देखो ना सर, आप मैप में देखो करके एक लोगो रहेगा। अच्छा एफ करके, हाँ ठीक है। हाँ वो फार्मर स्टोर है सर। उधर से आप लाइक जो भी फार्मिंग का चीज़ है ना वो आपको मिल जाएगा, लाइक जैसे कि फर क्या बोलते हो उसको, इंसेक्ट के लिए मतलब फार्मिंग के लिए जो भी आपको चाहिए ना सर वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ पे सॉइल मिलेगा तो यू कैन फार्म ओवर देयर। ठीक है। पर वीड के लिए सर मतलब कैसे होता है कि आपको पहले बेसिक फार्मिंग से चालू करना रहता है, जैसे कि पोटैटो सीड्स ये सब से चालू करना होता है। फिर वहाँ के जो फार्मर्स हैं ना आपका लेवल मतलब आपको सिखाते, देन ओनली यू कैन फार्म लाइक वीट फार्म कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी सिविलियन उठ के सीधा फार्मिंग करेगा वीट ठीक के लिए। और वो जैसे फार्म हो गया है। तो आपको ये जो है ना मैंने आपको दिया हाँ वो मिलेगा। हम्म, तो वो लेके आपको बीच साइड है ना एक आपको Volume is मिलेगा, देखो 25 स्मोक at ऐसा कुछ meeting room करके is up. स्टोर है, मैं सर आपको बता कैन वी दूंगा। गेट 10 मिनट्स ओके ऑन समथिंग? 10 pro. स्मोक ऑन वाटर आपको करके एक स्टोर स्मोक ऑन मिलेगा बीच वाटर। साइड पे, देखो जरा। ठीक है हाँ समझा, मेरे को बता। हाँ हाँ उधर लिख लो एक आपको बार पेपर। प्रोफेसर, पेपर में थोड़ा लिख लो तो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ स्मोक ऑन द वाटर, ठीक है। हाँ उधर आपको पेपर रोल लेना है, बस हम्म, उसमें ये स्टैश डालना है और हैव योर फन। क्या मिलेगा? वो मिक्स किए तो क्या मिलेगा? एक ओजी मतलब एक स्मोक सिगरेट जैसा बनेगा सर वो, तो यू कैन ओके इजीली सो स्मोक देयर इट। इज नो प्रोसेसिंग एट ऑल फॉर दिस। नहीं इसके बाद कुछ है नहीं। एंड व्हाट अबाउट अदर कुछ ड्रग्स होता है ना, कोई अदर ड्रग का मालूम प्रोसेसिंग? और तो सर अभी के लिए तो सर ओजी ही मतलब लोग यूज कर रहे हैं। और सर इसका आपको बता दो तो रेटिंग्स भी बहुत कम हो गए, इसलिए आपको एक केस किधर भी गिरा हुआ अभी ठीक है। मिलेगा सो रेटिंग। दिस इज ऑफिशियली ब्रदर्स वंस, ब्रदर्स यूज करेंगे। विच गैंग नो विल बी आइडिया सर। यूजिंग इट मोर? एनी आइडिया?
आइडिया नहीं सर, ये लीड हर कोई कोई कर रहा था शहर में। सर आपको पता रहेगा तब ये बादशाह का आप देख सकते हो, क्योंकि बादशाह ने तो ओपनली ट्वीट किया है सर, मतलब आपके पास तो अच्छा एविडेंस है। कौन? बादशाह ओबेरॉय सर आज सुनामी के पहले किया था सर मैं आपने। मिला था उससे। वो हाँ, बोला कि ट्वीट पीडी क्या किया वाले था? थे उधर, एंड आई जस्ट ट्वीटेड एज देयर इज अ लॉट ऑफ वीक फॉर्म, उसका कोई उसमें हाथ नहीं है। आई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर। बस तो मुझे भी सर इतना ही, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं। ठीक कोई है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत तो नहीं। सर आप ये भी 50 कैसे लोगे सर? मैं लेके घूमूंगा तो मेरे को अंडर कर देंगे। हाँ, अरे एक काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने या स्टैश में स्टोर कर दो, या अरे कौन आ हमारे रहा में है? किसी काम का नहीं है, अच्छा, स्पेशली पुलिस बताओ वाला। तो। कैश में रख दो। सर आप अरे छोड़ो, अरे वेट, अबे तुम निकलो, तुम साइड में हो, मैं तुम साइड में हो जाओ। हाँ हाँ सब सही, सब या सही। वी आर फाइन सर। बाद मीटिंग होती है। श्योर राइट? या आई एम या श्योर, अभी नो इट्स श्योर। गुड, इट्स गुड। जाने दो उनको, जाने दो, रुको रुको रुको। हाँ, तो वही बात है, दैट्स इट। गाड़ी में नहीं है आप? हाँ नहीं नहीं, गाड़ी उधर थोड़ा दूर छोड़ के। मैं इधर ड्रॉप करके जाऊँ? नहीं नहीं, वो आ रहा है। कंट्रोल हो निंदोर, गया ना, नहीं कैन वी नहीं कंट्रोल हो गेट गया। अ 91? नहीं नहीं, गाड़ी मुझे चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस डैश की। कैश की इधर वो। मैं आता हूँ, इधर। Sector 2 going for 91. जेम्स आया भाई खुद। भाई देखा, कुछ जेम्स आया भाई। हम्म। वही है। पीडी चीफ हमारी हेल्प के लिए आ रहा है भाई, क्या आ बात रहा है। है, आ रहा है, हो गया। अरे आफ्टरनून ही हो गया। अरे आफ्टरनून दे हेल्प क्या? में एक्चुअली। जो वो भीड़ है ना, वो निकालने के लिए पीडी ने हेल्प किया। मैं कह तो ना, जिस दिन से जिमी आया है इसने लगाई होगी। इवेंट इवेंट। चलो मुझे और एक मिनट है मेरे को, एक मिनट। ठीक है, और कुछ मिला हो तो, गन्स वगैरह हो थोड़ा बताता हूँ बताता हाँ हूँ, वो भी बता दो। चलेगा अभी के लिए तो इतना ही है सर, कुछ ठीक है, मिलेगा तो हमको ठीक कॉल है, नो करेंगे। वरी। सर आपका बाई चांस कभी प्रमोशन हो गया तो सर मुझे भी मिठाई दे देना, मतलब समझ रहे हो सर? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं श्योर। अभी अभी थोड़ा स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। हाँ, नो वरी। कोई दिक्कत नहीं होगी, मिलते जल्दी। मैं आया, सुनो, एक बार मैं 52.52 जगह पे हूँ। क्यों? कोई एमएसडी का रेडियो, गैंग रेडियो है। मैं सुन चाहता हूँ क्या बात है। कोई नहीं है। और तुम क्या कह रहे थे कि हम दो इसलिए कि प्रमोशन मिलेगा है? हम दोनों को भाई। है ना? मैं इस टाइम अभी सर के भी ऊपर हूँ। वो मालूम है मेरे को, तो प्रमोशन मिलेगा। हाँ, तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए मुझे के लिए गलत है तुम। मैं अकेला अकेले कर दूंगा फिर इन्वेस्टिगेशन, बाहर में हाँ रहते। हाँ, अपने अपनी, अरे वही तो कह रहा हूँ, करो। हाँ। फालतू में लेके आए तुम मेरे को। अरे मेरे सेफ्टी के लिए लेके आया। सेफ्टी मतलब ऐसा नहीं, वो भी उसका दोस्त लेके आएगा। सो आई थॉट ही विल कम आल्सो ड्यू, बट ही केम सोलो। हाँ चलो। चलो चलो। Light लगा देना। हाँ लगा लिया। फाइव 520 प्लस 2 76 to 90। और सुनो, ये जो क्या बोलते हैं टीएलएमसी का है ना, उसमें भी कुछ है। आवाज आ रही है प्रोफेसर? क्या क्या? जो टीएलएमसी का क्लब है, ऑपोजिट टू द टैक्सी वे है, और उसमें भी कुछ है।
पता नहीं बट डाउट है इट्स कम्प्लीटली। वो जो अभी मिला था ना खाना वाला, ही वाज सेइंग दैट। वेट अ मिनट पीडी क्यों आ रही है? वेट अ मिनट, फोटो उसको भगा रही है, हमारे भगा रही है, आराम उसको भगा रही है, उसको भगा रही है। Right to lock, sir. 20. We are on a code one for now. What about the meeting in the briefing room? I disregard it for now. We'll have it for now. We'll have that meeting at 9, so be present. 10%. 503 1041 sir. जब तक कोड चले अपन लोग हाँ चले 10 on the actives. 6 plus 1 performing code 1. Rock, sir, are you solo on a code one? Or is anyone with you? सर आ रहे हैं हाँ पता नहीं वो। रखा सकते हैं ऊपर में। अब मैं चलाऊँ गाड़ी? आपको चलाने मिले आप चला लो। हाँ चलाता हूँ। लाइक मैं अगर बाजू में थे तो मेरे को बैठेगा। हाँ ठीक यू गॉट द कीज ना? मैं got it. You move? 602 direct to 503 to come. अब वो आएगा तो कॉल दे देगा। अभी को अब पीछे हट गए तो अल्लाह अलमेगा ट्राई। मैंने चेंज किया था टिकट। नहीं 520 plus 1 stand on a payment. सर ये देखा आपने पीढ़ी का क्या चेंज किया है? क्या यार देखा है तभी कर दो मतलब ना प्रोटेक्शन। डीए को कम मिलेगा सर? डीए को नहीं मिलेगा। डीए को ज़्यादा खतरा रहता है वैसे। क्या अच्छा पब्लिक प्लेसेस में चलता है फास्ट। हाँ एक मिनट कुछ काम है वो देख के चलता है तो मैं गाइस एक ही है मेरे पास। ठीक है वो एक हम डाल के देखते हैं एविडेंस के लिए। ठीक है That's a nice car. Right, Vijay Tagore. Send it. 20. Near clothing store at PD.
8991 at DEA. Then Port 76. बर्गर शॉप पे कार खड़ी हो देखो ना। अरे वो लोकल है। You got the bed smelling like sex. यस सर। अच्छा जो बताया था ना वो कौन सा सीड्स है, टाइप्स ऑफ सीड्स, ऑरेंज, टोमेटो। नहीं, ओनली बी बस ये इतना ही लिखा रहेगा, बी सीड बस इतना ही, एक ही मिलता है। ओके, ओनली अ सीड। ओनली अ सीड, वो एक सीड से यू कैन ग्रो इट। हमारी गई लेफ्ट में स्मोक ऑन द वाटर देखो, स्मोक ऑन द वाटर एंड द ये ना साइड में यही इधर है। जीपीएस में तो यही दिखा रहा है। बस यही है शायद जो गेट खुला हुआ है ये वाला। जीपीएस में सर यही दिखा रहा है। एक ये भी है। 1 सेकंड। ये नहीं है, पीछे पीछे दिखा है ना, पीछे दिख रहा है। पीछे वाला ही है, मार्क करता हूँ। You're more stoned than I am. Dude! ¿Qué haces, cabrón? Funza! कौन सा, ये वाला और पीछे? तो डिजिटल है। और पीछे लो, और पीछे लो, यही वाला है शायद। इसको पत्ता बनाइए, पत्ता। यही है। मेरे बाजू वाले स्टोर में चाचा बात नहीं कर रहे हैं। फिर वो बाजू वाले में हो, बाजू वाले। नहीं नहीं, यही है। उधर में क्या? ठीक है, ठीक है। देख, इधर है शॉप, इधर है। छोड़ो ये कुछ। वो बनाने के लिए ओ भाई आ गया। ओ भाई क्या क्या बना रहे हो सर आप? हाँ, कुछ बना रहा। देखो, एक मिनट, ये शॉप का फोटो लेने का। चल
पियो। तो वो बोलो शीट सर। का एक सैंपल मिल सकता है मुझे? अरे मुझे वो पूरा ये करना पड़ेगा रिसाइकल सेंटर में जाके। क्या कोई है लाइक? ठीक है, मेरे को आज का टाइम दे तो मैं कल दे सकता हूँ, आपको चलेगा? क्योंकि आज मेरे को ऑलरेडी थोड़ा काम करना है। हाँ ठीक है, नो वरीज, क्योंकि वो मेरे को कैसा है ना सर, वो आपको रिसाइकल सेंटर में कम से कम 100 मतलब 10 बिन आपको साफ करना पड़ेगा, फिर जाके 1-2 या देख ले कम मिलते हैं। अच्छा नहीं कोई है जानकारी वो शीट का लाइक मिलने का? देता हूँ सर, कल तक टाइम चलेगा आपको? क्योंकि हाँ अर्जेंट चलेगा चाहिए। चलेगा, क्योंकि मेरे को वो मिल गया और वो बना लिया मैंने। अच्छा हाँ ठीक है तो ठीक है। अभी वो उसका करने का और एक रिपोर्ट और है, बनवाने का है। तो चलेगा या करता हूँ। ऐसी होती है ब्रो आरती। और खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं फिर कह रहे हैं ये हम नहीं चाहते बिल्कुल ऐसा। हमारी गाड़ी पकड़ ही नहीं पाएगी ना तो उसकी। हेलो हेलो तो कहाँ नीचे है? उतर जाएंगे आप। क्या? अरे अभी तुम्हारे जेरेमी को बताऊं कितने 30,000 रुपए दिए 30,000 दिए। भाई इतना प्रोटेक्शन पीढ़ी पे है ब्रो। सही है सही है। पीछे से भी एक है, कुछ देखना बाजू में लगा क्या? तो मैं देखा था डी ऑफिस आ रहा हूँ। तो रात से लगे कहाँ जा रहे हैं रोड से देखो। पता नहीं, नो आइडिया। डी ऑफिस आ हेलो। हाँ बोल। नो ब्रो आई कम ऑन मंडे डायरेक्टली। नो नो आई डिडंट कम फ्रॉम पास्ट 2 days। जाओ। हाँ एक मैम पूछने कोई दोस्त है, उनको बुला ले यहाँ पे डीए पे। क्या? तो मेरा दोस्त है इधर, हाँ यहाँ हाँ पे हाँ DEA। हाँ बिल्कुल। अरे सर चिकन किसके लिए आई है? 1 मिनट वेट। अच्छा तो हम्म हम्म उसको हाँ बीएड कौन लाया है कॉलेज को? हैं? अच्छा हाँ। हम्म, 6 फीट बीच रात से मतलब। हाँ 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 हम्म, हाँ
हाँ कितनी तो मर गई। who she हाँ हाँ they laid down floor मतलब हाँ हाँ अच्छा नाइस ब्रो हाँ ठीक है क्या हाँ ठीक है हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मैं क्या करूँ रे आके तो तेरे क्लास में ड्रामा चल रहा तो मैं क्या करूँ आगे बता मेरे को पूरा सिचुएशन बता कल क्या हुआ। मैं राजशेखर सर को भी बोलता मैं सर ऐसा हुआ कहते पी के लड़की हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है नाइस वन जी कल भी चेक करेगा तो ला के भी भेज दे ले लेगा वो रिसेप्शन में कलेक्ट नहीं करते ये मामा हमको ही देना पड़ेगा ठीक है ठीक है बाद में कॉल करता लाइव में अरे क्या हंसी है भाई छोटे छोटे लड़कियां दारू पी रहे क्या छोटे छोटे लड़कियां डायरेक्ट टू रॉक सर Send it. सर 9 o'clock हो गया मीटिंग का क्या है Yeah, I will be there. Give me a minute. I'm just looking out for something. क्या सर Can I? Give us. Sir? अरे इधर नहीं है पापा पीछे Dispatch will be needing a 91 at PD. 76 Disregard. ये भाई Disregard, we got गरम this. करके ठंडा छोड़ दिया। अच्छा एक हेल्प करोगे ब्रिंग मी टू 2 or 3 rolling papers from the smoke and the water from the smoke of the water लेके आने हैं हाँ देखे 2 और 3। हाँ, मीटिंग के तीन बाद लेके आऊँ अभी लेके आऊँ? अभी 3 लेके आ जाओ बस बाइक से जाता हूँ सर, दूर कपड़े चेंज करके। नहीं इट्स ओके गो विद दिस वन बट सर अकेला जाऊंगा तो थोड़ा रिस्क है। हाँ ठीक है कपड़े अरे पर बाइक से जाने का सोच रहा हूँ। हाँ बाइक है ना जल्दी 5 लेके आ जाओ ठीक है आई नीड इट फास्ट 4 लेके आ जाओ मैं आई गिव यू द कैश अच्छा प्रोफेसर किधर है क्या कर रहे हो तुम? प्रोफेसर प्रोफेसर मत जेब में वो प्रोफेसर तो निकालो। प्रोफेसर कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने बोला कुछ काम के लिए आ रहा हूँ। चलो यू वांट अ गिफ्ट क्या? आई गिव यू अ गिफ्ट वेट कुछ तो मिला इसको। क्या बात है? हाँ। ये फेंकता हूँ। क्या मिला? फूकता हूँ। अरे तुम्हें भी मिलेगा रुको हमें भी दो हमें भी दो हमें भी दो हमें भी दो। वो अभी सीज होने वाला है तो पी लेते हैं हम क्या दिक्कत अरे रुको उसको ले क्या
लॉक से 20 लेके आना पड़ा उसको। Cassidy Trails, I'm 76 to 19. 10 निंदोर ब्रिंग 10 ना। I think Nindor resigned. नो नो No. It's that back. 10 ला लो ना थोड़ा। I have to talk. क्या पीना है? जॉइंट पीना है? जॉइंट नहीं पीना है नेता, वो प्रोसेसिंग पूरा पता चल गया, अभी रिपोर्ट बनाना है उसको। रिपोर्ट बना अच्छा मतलब के हमको रिपोर्ट सीज बनानी है उस पे। अच्छा उस पे रिपोर्ट अबे बनानी है निंदर और तूने रिजाइन क्यों किया था? वहाँ देना है। हाँ और कहाँ है दिख रहा है तेरे को यहाँ पे? निंदो रिजाइन कर है। दिया, मैं बोला वही, तू बोला अबे गुलकंद है है, अभी ऑन ड्यूटी है वो। वही बोला। ज्वाइन नहीं कर दिया, नहीं किया। इंदौर ने नहीं किया रिजाइन, वो किसी और ने किया था। वो तो गुलखान ने तो किया है, पर निंदौर अभी था ऑन ड्यूटी। इंदौर अभी भी है ऑन किया ही नहीं ड्यूटी। है। इंदौर ने तो किया ही नहीं है रिजाइन। अभी कहाँ घूम रहा है? अभी एंड रॉकर हूँ। अच्छा अच्छा तो मतलब अभी हमको जॉइंट से क्या बनानी है? रिपोर्ट बनानी है। या इन्वेस्टिगेशन पे को अरे वो जो उसने अभी तेरे बंदे ने रिपोर्ट दी है ना, वो सबको पहले से पता है पता है। ऑलरेडी। मतलब लिखा है, हाँ का ऑलरेडी वीड वाली जो चीजें हैं, हमें एक गैंग ने कहा था कि ला 500 अभी तेरे को ऐसे ही दे दे रहा हूँ, ले जा, क्योंकि अच्छा। वीड बिक नहीं रही है। हाँ मालूम है वीड वो। का वीड का ये सीन है कि बहुत लो क्वालिटी हो गई, वो ग्रेडिंग जो होती है इनकी, वो रेटिंग कम हो गई है। वही बोला ना बंदे ने। आउटडेटेड हाँ। हो गई, सिंपल मैथ दिख रहा हाँ। होगा अब। हाँ अब मैथ बिक रहा है अच्छा खासा, अच्छे पैसों अब में, तो मैथ लोग बिक वो रहा बेच है। रहे हैं। चलो फिर मैथ ये का हम कंट्रोल यूज कर खाली लेते एक बंदे हैं, के पास है। हम यूज कर लेते हैं। हमको क्यों यूज करना है? कर लेंगे, वैसे क्या दिक्कत है? बहुत दिनों से हमने स्ट्रेस नहीं बिठाया अपना। हाँ ऑफ ड्यूटी जाके करते हैं। अब टीचर ऑन ड्यूटी में भाई जब बंदूक साले बंदूक illegal चलेगी है। ना, झूमे नहीं है तब अभी नो घूम जाते हैं। नो पुलिस, एवरीथिंग इज लीगल। यस 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 अभी भी everything is legal. वी आर नॉट पुलिस या समझ रहे हो? वी आर फेडरल गवर्नमेंट, नो वन कैन स्टॉप अस। आइए भाई, ये की आवाज निकालने की क्या जरूरत थी तुमको लास्ट में? हाँ आइए आइए तुम्हें शौक है सवाल लगाने तेरे का? कसम हो या कमरिस ये क्या निकाल रहे हो? कैसी हो आवाज या निकाल रहे हो? हो या विजय भाई को कुछ हो गया है लग रहा है यार। अरे मुझे गुस्से का कुछ तो रिमोट तो नहीं है तुम्हारा कहीं यहाँ पे? अरे भाई कहीं बटन दबाए जा रहे हो तुम? मजा नहीं आ रहा? बटन दबाए जा रहे हो, फिर तुम और स्पीड बढ़ाए जा रहे हो। ओ क्या कर रहे हो नेता लोग, पागल हो गए क्या? अरे 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 होमोफोबिया है मैं। हद हो गया भाई। I be homophobic if Vijay is gay, bro. वाह तो विजय तेरी पीछे है। ये आप उसके बाजू पे खड़े हो, आपको भी वो रोग लग रहा है। अच्छा वो कर लिया क्या तू लोगों से? क्या कर लिया? क्या कर लिया? अरे वो जो दिया मैंने, वो रॉक को देना, जो दिया? क्या दिया? दिया बे, जॉइंट दिया। जॉइंट का वही। क्या दे दिया तुम्हारे? दे मैं देता हूँ नेता। ले मेरे पास आ। हाँ अरे ग्रेटो सर हवा रही। अच्छा हाँ कर दो कर दो। साले नक्की मार दूंगा। ग्रेटो रॉक ने मारी थी उसको। तुम्हें कैसे पता? मैं वहीं तो था। तुमने देखी? तुम्हें याद है? और मैं वहीं तो था, निंदौर उतरा गाड़ी से, मैं बोल भी रहा था वहाँ उतर, बीच रास्ते में उतर गया, 5 लोगों ने गोली मारी निंदौर को वहाँ। बताओ भाई मेरे को याद ही नहीं कुछ। याद कैसे रहेगा? अपनी गांड करके कोई याद तो हैं क्या 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 अबे यार गांड करके कोई याद तो चलो 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 क्या ही बात कर रहा है। हाँ कोई नहीं। रुक क्यों रहा है बीच में? गांड कौन सी गाली होगी? गाली थोड़ी है, वही इमोशन है। और रॉक से लगा है वो गिफ्ट फॉर Did you get it? Yeah, I got Yeah. it. सही है। आउटसाइड पे हाँ साथ बताओ। फूकते हैं। So guys, where are the other units? Indore से These are the all the units. we are the unit sir. Indore 20 Units. ETA will be 2 minutes. confirms। वो डिजिटल लेन के आसपास है। हाँ मैंने वो बाकी 9:30 बजे अपनी मीटिंग है, कंफर्म है? कंफर्म है। we have to go to कोटो। 9:30 बजे मीटिंग है हमारी। कोटो से आना ना। Regarding sir regarding
Regarding, they want to review it out. You remember earlier I told you we got a notice from judge ki अम्मा will the department will stand or माँ not, since he is back after his all his treatment. He want to review all our reports and everything to him, like everything according to that. So let's see, hope for the best. If everything goes well, we'll continue, and if the odds are against us, you know it very well what will happen. बेरोजगारी। एक मिनट Right, so let's see. What is good. Regarding, ये अपने ऊपर एंडी ऐसे काम थोड़ी तो हरकतें तो मैं मतलब मैं ये कह रहा था कि इनिशिएट, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी चक्कर से तुम लोग की नौकरी वोकरी जाए, तो अगर कुछ रॉन्ग टर्म्स पे डिसीजन आएगा, आई विल टेक इट ऑन मी. एंड यू गाइस हैव प्रशांत एंड आतिफ हु कैन टेक केयर फॉर आतिफ भी नाम लिया है मैंने आगे. हाँ, एंड प्रोफेसर टू and professor too, who will be carrying it out. So बट तुम्हारा नहीं ओए रॉकस्टार नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा रॉक्स, जो होगा वी आर हियर वो टू होता है ना इनका सपोर्ट गैंग का भी यू. राइट टुगेदर भी डाई टुगेदर वही चीज कोई नहीं, we'll सेम see what रहेंगे साथ में। exactly happens, because apart from judge there will be a panel as well. अब मुझे ये समझना है बाकी है, हाँ जज के साथ कोई पैनल में भी लोग रहेंगे. अब एक panel कमेंट में कौन, यार पर ये मत बोलना, वो सबीन वबीन वो जो ये पता ऐसे नहीं घूमते भाई, रहते हैं ये सिविलियन वो पता होंगे. नहीं भाई. सीरियसली मेरा पैनल होता में है. जो भी होंगे, मुझे उनका डर है, जज का डर नहीं है. अच्छा अगर पैनल में गैंग वाला है हाँ, पता नहीं और भाई. अगर जज ने हमें उनकी वजह से निकाला, जज को एक गोली तो पड़ेगी। अरे उधर ही इसको भाई. देखो हाँ यार. तो भाई तो आई डोंट दोबारा नो 7 दिन के लिए जा अबाउट यू तू गाइस, ऑर्डर देने आई से विल पहले जस्ट ही। स्ट्रेट अप से दिस टू यू, ठीक है? अगर डीए बंद हुई तो जज तो जाएगा जाएगा, बाकी मेरे को जिससे बदला लेना है वो मार के मैं चले आऊंगा. हाँ मेरे को देखो मालूम है जो कौन है. जो जुडिशियल पावर से मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, उसका तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा. इट विल बी टोटली ऑन योर डिस्क्रिप्शन, बट आई वुड बी हैविंग अ डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन इफ समथिंग गोज रॉन्ग. आई डोंट नो वेदर यू वुड. ठीक अब है, बताना हमें भी, हम भी हाँ साथ वो में अभी बताना, अभी हम बता जान के कोई लेंगे. फायदा अभी नहीं नहीं, है. अभी नहीं, अभी अभी नहीं। तो हाँ, होप फॉर द बेस्ट. क्यों हम गलत रहा, हम अरे होप फॉर द गलत चीजों पॉजिटिव के मैन, बी यस पॉजिटिव. हम गलत चीजों के बारे में क्यों ही सोच रहे हैं. वो आइडिया So, का मुझे हिंट है थोड़ा सा, क्योंकि आपने एक बार ही जिक्र किया था। क्या हिंट है आपके अभी पास? सर हाँ, अभी क्या सर hint है, किसको क्या मारने hint वाले हैं है? मुझे वो पता आप है अच्छे किसी से. से मिलोगे क्या जाके, पता? है ना, ऐसा कुछ ना? हाँ? हाँ, हैं? देखते हैं ऐसा तो मैं बहुत लोगों से हूँ. आई नो, मिलते तो आपने एक डेली बार हम, पता जिक्र नहीं कर कितने रहे थे। लोगों से। सही है ना अभी सर? अभी सर सही है. चलो. अभी नहीं सर नहीं तो यार, ओपी बन गया है। मैं Anyway. इतना भी खराब इंसान नहीं हूँ. अच्छा, एनीवेज गाइस, हाँ निंदोर, आपने शायद रेजिग्नेशन डाला था, मैंने आपका रेजिग्नेशन देखा था. क्या हुआ? वापस ले लिया था, कुछ बात वो हो गई थी, ईमेल कुछ हैक हो बात गया था इनका। नहीं हैक नहीं हुआ था, मैंने ही डाला था. अच्छा, चंदन है. क्या हुआ अचानक बढ़िया, से? बढ़िया। अरे तायम नहीं बात तुम तायमा प्लीज प्लीज चंदन है. अगर डिपार्टमेंट रहा तो इंदौर फिर अरे बात करेंगे। ओन्नानुमा. पता चला करेंगे. डिपार्टमेंट ही अरे नहीं माँ मिला। प्लीज मीटिंग के लिए किया था वैसे तो. चलो प्लीज प्लीज चंदन है सेटा. आता है, मैंने आज वो सुन अपनी बिना document पढ़ने देते submit हैं ना. किया है इनको. ठीक है, अबाउट हम लोग हीरोइन के ऊपर भी आजकल काम कर रहे हैं ना थोड़ा. हाँ हाँ, तो हाँ, तो मैंने वो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है. मुझे तो ये भी लग रहा है मैंने क्यों ही इतनी मेहनत करके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया, बंदी. वो चबा रहे होंगे अरे सर उसी मैं बता रहा हूँ, document वो को. नहीं डाला document क्या बनाएंगे. डॉक्टर जो पलेटो बैंक के सामने वो भी डाला है. तो वीड, अरे तो वीड का अलग डॉक्यूमेंट है, वो ठीक है, हीरोइन का मैं वीड का document बनाऊँ. है. सबका बना के दे रखा है सर ने। बना अरे बना के दे के को फायदा है, थोड़ा रुक देखो जाओ, बनाने क्या में होता हमने है बना दिया है. लेट्स सी. ठीक है, ये कोई अगर नहीं guys. सक्सेसफुल होगा तो मैं वीड का बना. चूहे कुतरेंगे उसको कोने में बैठ के कहीं। हाँ, और ये तो खुद ही चबा रहे होंगे पेपर रोल लग कर रहा। रहे होंगे उसी से, जॉइंट रोल कर रहे होंगे उसी पेपर से. अच्छा मैं आया तो जाओ जाओ। तो मतलब
मतलब ये मीटिंग से ज्यादा तो इन्वेस्टिगेशन होता है Vegetation. आओ guys, I think it's time. हाँ सर Being a current federal agency, हमारा फर्ज होता है कि हम पहले पहुंचे. ओके सर ओके ओके Yes. स्क्वाड में That's पहुंचो भाई, another. स्क्वाड में स्क्वाड. Yes. Yes. सर आप पीस अनित से अभी अभी से चलो सर इसके बाद स्ट्रीट में मिलते हैं अभी सर एक मिनट रुको. छोटा सा स्ट्रीट क्लब खोल लेंगे रॉक सर स्ट्रीट क्लब भाई इसके बाद फिर वो नहीं अरे फिर वो लीजन के टास्क पूरे करते रहेंगे अभी. हाँ वी आर लीजेंड्स. डीओए से कि भाई 10,000 तो देगा हमें, डिपार्टमेंट नहीं दे पाएगा. अरे 10,000 भाई 5 मिलियन और क्या 10 गाड़ियाँ नहीं तो नहीं. 10,000 में इतनी ताकत है, मैं रोज वो कर सकता हूँ. चलो आ जाओ. ये ले लो अभी सर आपके लिए. यार टू बी ऑनेस्ट मेरा जेम्स से और किससे कुछ भी नहीं. अच्छा मेरा राडा सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से था, दैट वाज एलएसपी का. छोड़ो छोड़ो. अरे जेम्स अच्छा बंदा है. जेम्स बॉन्ड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स. बट उसका डिसीजन गलत था उस वक्त, तो गलत था. बात खत्म. कोई कुछ भी बोले, मेरी आदत है वैसे. मैं तो अपने पुराने डिपार्टमेंट में भी सब बोलता हूँ. अरे सब लोग वही बोलते हैं जेम्स डिसीजन वाज रॉन्ग. And everybody knows that like I was the only person about. नहीं सुनो, सबको मालूम है उसका डिसीजन रॉन्ग है, पर नो वन कैन गो ऑन हिज डिसीजन राइट. The people who cares will not go against. People who don't care. नहीं पर पीछे से सब लोग वही ऐसा ही बोले ना. सामने कोई इसने बोला लाइक जेम्स डिसीजन वाज रॉन्ग. पीछे से सब लोग बोल रहे थे या ही डिड द रॉन्ग थिंग. Because when PD was in trouble, we helped them. वो रिस्पेक्ट उस इंसान ने बनाई है. हाँ वही. इंसान ने कितनी रिस्पेक्ट बनाई है. That like even though people know that decision is wrong, people did not question it. Quote to That is a very good thing. मैंने तभी भी उस दिन भी प्रोफेसर को चलो चुप कराया था. Quote to करो. No matter what, we are not the authority to ask गौर और any high command कि उनका चीफ ने क्या डिसीजन गलत या क्या डिसीजन सही है. मेरे को अगर कोई रॉक का डिसीजन गलत है सही बोलने के बोलता, मैं भी उसको मना ही करता हूँ. अरे हम लोग बोल सकते हैं पर अरे भाई कितना चिपक रहा है. वही रॉक नहीं है वो. रॉक इज इन ट्रबल. राइट ले लेना. क्या दे रहे हो मेरे को? प्रोफेसर है. So when I talk about this thing, मेरा राडा पुलिस में किसी में एलएसपी की चीफ है तो उसमें ईगो बहुत है. इस पे राणा में नहीं राणा देखो राणा इज काइंड ऑफ नो. अरे एक्चुअली इंसान से गुड है पर भाई मैं लाइक जनरल बायसनेस नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग राणा इज लाइक व्हाट डू यू कॉल हिम. मोहल्ले की आ जाओ चलो कोई बात नहीं. कुछ नहीं कर सकते भाई. पांच पे ये राणा इज लाइक मोहल्ले की आंटी. यूज्ड टू नो गॉसिप करना बहुत पसंद है उन्हें, बट वो अच्छे ऑफिसर हैं. ही इज गुड बट यू नो उसका आर्गुमेंट जो है वो अच्छा है. बिहेवियर पुलिस डिपार्टमेंट में एक ही प्रॉब्लम है, इनकी जो पंचायत बैठती है ना कैप्टन ऑफिस में, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज. लाइक मैं डीए का बनता हूँ भाई, सबके सामने होनी चाहिए भाई. वहाँ पे आरआर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जा रही है. कहाँ पे? अरे कोई ना गुड ब्रो. देख सब रॉक और मेरा कुछ मतलब ऐसा होता है कि मेरे को रॉक ने कुछ चीज़ नहीं बताई, आई रिस्पेक्टफुली टेक इट. सिंपल एज दैट.
अरे वो तो पीडी में है यार। वो पीडी में मेरे को ये नहीं पता है, मेरे को वो नहीं पता है। दिखाइए हमें कैप्टन से। अच्छे हो क्या? अरे 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 है रॉक सर, हाँ क्या गजब एक्टिंग की जिमी ने। अच्छा सुनिए, कहीं पीडी इज इमिटेटिंग डीईए। डीईए हाँ, लाइक बेटर देन डीईए, सॉरी। नहीं यार छोड़ो यार, लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल द ग्रजेस। बस ये भी हो सकता है कि अच्छा सुनो, हो इधर सकता है। इधर कुछ बात नहीं, नहीं, करो। सुनो पहले इसका मेरी बात कैमरा सुनो। है। अगर अगर डीए गया तो बेटा हो सकता ओ है कि जज्जा ने बोलेगा कैमरा है हम लोग नेता, पीडी कैमरा है, मैं एक काम कैमरा कर बाहर बात कैमरा कर। में बाहर आ ऑडियो जाओ, बाहर आ जाओ। ऑडियो नहीं जाती। ऑडियो जाती है, ऑडियो जाती है, क्यों नहीं जाती है? पागल वागल हो गया। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर डीए गया तो जज्जा ये कह सकते हैं कि हाँ हम अभी लोग पीडी बोलो। में जाएं। मैं ये कह रहा था, काश आज के पॉइंट पे लीजन को कांटेक्ट कर पाते एक और स्नाइपर शॉट। ओ शिट। अरे भाई जज को बाहर बुलाएंगे और सीधा नहीं जज को नहीं, जज को नहीं, जज को नहीं, जज के पैनल वालों को। अच्छा पैनल अच्छा। वालों पैनल वालों को पर पता पैनल है। में है कौन ये तो पता चले सर पहले। टपा भी टप हो हेडशॉट सबके। जज के अलावा जो दिखेगा। भाई रॉकसर क्या दिमाग खराब होगा ना अगर जज के पैनल में जॉन बॉयड और ये बैठे रहे जेनिमी। भाई मेरा हो जाएगा भाई, मैं मैं तो रोज मैं जज के सामने सेलिंग कस्टम नंबर प्लेट 250 के है। सिटी सिटी क्या सिटी करना, हो गया। हमें कुछ नहीं करना, हमें अबे कुछ हम नहीं फ्यूचर करना। प्लान डिस्कस कर हमें रहे कुछ थे, नहीं करना, क्या जज का कर कॉल आएगा आ जाओ। हाँ मैं तो रेडी है भाई, हम तो ऑन टाइम है, हमारी गलती नहीं है भाई। वीजल न्यूज़ वालों ने क्या बोला सर ये तो बताओ। पता नहीं भाई, इनकी बात हुई आ रहे क्या आ फिर रहे से? विजुअल न्यूज़ वाले आ आ रहे रही हैं। है तो कैसे छोड़ सकते हो इतना सेक्सी मसाला। अरे मैंने अरे हम तो बिफोर टाइम है। न्यूज़ भी फैलाने अरे वाला वीजल हूँ, में फैला दी सुनने में आए मैंने लाल वाले कि बंदे जज हैं। साल सब ठीक हो गया है, समझ रहे हो? अच्छा ये न्यूज़ लीजन को भी जाएगी, समझ रहे हो? अभी दिलवाओगे लीजन की लग न्यूज़, रहा है जॉन लग बॉयड को रहा है बोलता हूँ लग अभी। रहा है। फिर से पार्ट से हेडशॉट पड़ेगा। कहाँ ये जज 9:30 बजे बुलाया, अभी तक आया भी नहीं है। अरे 9 बजे नहीं, 9:30 बुलाया। 9:25 हाँ 9:30 9:30 9 ही बुलाया। होता है भाई। यार खाना दो भाई, 9:30 खाना दो। 9:30। कोई नहीं है, अभी 7 मिनट है, वेट करते हैं, कोई दिक्कत की बात अबे नहीं है। खाना दो। खास देते पी सर, जाऊंगा। पैदा करे खाना। करके दिखा, मजा आएगा। ओ अभी झाड़ी में बैठना पड़ेगा उसको। जा जा कर। 300 show me 41 dispatch. ये कौन आया? बस फ्यूचर डीएच। फ्यूचर डी फ्यूचर डीएची 10 for future लीजन आ रही हो देर। come to बताओ this, मैं ट्वीट किया, मैं अरे तुम, ओए पागल हो, तुम क्यों डाल रहे हो? पे का अकाउंट है। 76. ओ अच्छा फिर ठीक है, हाँ भर दो जितना भरना क्या है। डाल रहे हो? फेक अकाउंट से बना के कर रहे हो तो करो, वरना मत क्या करो कुछ। सॉरी हाँ बॉय सॉरी रॉन्ग विक्रम आईडी सिंह राठौड़ की बना दी है। अब वो है लीजन रिटेलिएटर। देख रहे हो लीजन का नाम डलते ही ट्विटर पे जो हंगामा मच गया। मस्ट बी हाइडिंग समवेयर। डेविल इमोजी भी डाल। तेरा अब्बू है लीजन, बताओ तेरा अब्बू है लीजन। NYKTYKY पता नहीं क्या डाला है लोगों ने। इफ यू नो यू नो। लीजन NSK क्या हुआ बताओ। इतनी सारी फेक आईडी बन गई है, देख लौड़ेगा लीजन। क्रेटो सर हम आपका नाम बहुत मिस करेंगे। हाँ मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हूँ। We need Legion back after half an hour। अपन में पता चलेगा ना डीए है नहीं है। तुमको ही ना पकड़ ले, तुम्हारी आईडी ट्रेस कभी करके कभी फेक लगता है आईडी मैं बना अमर हुआ है, इतने अमर साल हो हो गए आज तक कोई नहीं कुछ काट पाया। यार जरा चल यार हाय हाय राव जरीन, शक्ल ये साला मजाक मजे लेने आया है क्या? लग रहा है सर। ये मजे ले भाई। अरे ठीक कल है माँ रोटी। घूम तो रहा था ये सिविलियन वाली, उसमें लोगों के साथ घूम रहा था भाई जरीन was one of the person who Resigned. vouched for me like to get recruited in this department. बुलाओ। Hey, अरे जरा चल यार, इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी सबरीन की। चल लगा है सर, अब तो 4 मिनट है।
अरे यार तुम गलत टाइम पे मत जाओ। गलत टाइम पे बच जाओ सर, 4 मिनट यार है अब अभी। हम ये मार नहीं, पीने के लिए नहीं खिल जाऊं मैं। हम ये बोलेंगे 9:45 तक हमने वेट किया, नहीं आए तो हम बाद में मिलेंगे, कल आना। एक दिन के कल लिए आना। टाल दिया कल आना डिपार्टमेंट। कल। जस्ट तू कल आना। हाँ सीधे बोल दे कल कल आना कल। यस यस, कल। एक दिन के लिए डिपार्टमेंट टाल दिया। जज बोलेगा बेटा बेनो माँ उसके कैसे बीच एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके अरे वो रॉक उसके बारे में सोचा तुमने? किसके बारे में? वो बच्चों हाँ बच्चों कौन? बच्चों बच्चों के बारे में? कौन से अच्छा, बच्चे? क्या बहुत बात है। सारे बच्चे अरे हैं मेरे तो। जज वो अच्छा, हाँ वो पता लगा लिया है, चिंता मत करो। स्नाइपर पहुंच रही है उधर। अरे यार खाने पीने को भी दो यार कोई, नहीं तो मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ इधर आओ 20-25। इधर आओ इधर आओ पे इधर आओ। होप फॉर द बेस्ट भाइयों। बस यही है। आज के पीने बाद के लिए हम मिले मांगा या न बे मिले, ये। लेकिन हम अमर रहेंगे। खाने का है मेरा, पीने का नहीं है। अरे अमर क्या भाई, यहाँ पर गणेश गैतोंडे, डेविड वेस्ट जैसे लोग बेचारे डाउन हो गए। उनसे ज्यादा तो मार हम खाते हैं अब। 300 plus वही यार। 176 to the courthouse. 10-4। भाई एंथुसियाज्म कम नहीं हो रहा, तो भी बोलो प्रशांत को। चांद सर तो सब ज्यादा पीट चुके हैं। प्रशांत इस इतना बार पिटे हैं पता प्रशांत उठे सर, हैं इतना भाई सबसे। पर इतना हमें पिटे, हिम्मत नहीं आ इतना रही सर अभी तक। इतना गंजा हुए यही हैं तो होता है प्रशांत भाई, सर, लेकिन असली चीफ की इसे कहते पहचान। हैं इसे कहते हैं जज्बा। नया चीफ बनेगा ना प्रशांत। इतनी पिटाई सहने के बावजूद भी अरे यार इतने बार देख अच्छा लौट सुनो, पानी की जब बोतल प्रशांत रखी आएगा ना है, चिल्लाओ भाई, नया चीफ आ गया। वो आगे दे रहे हैं। कौन आ गया? आगे शायद जज आगे शायद, इतनी सारी पुलिस आ पागल हो गई। गया, प्रशांत आया है, जज। प्रशांत आया खराब है। हाँ बोलो बोलो, नया ना चीफ है, ठीक है नया चीफ है। ओ सारे बो डाउन सैल्यूट करेंगे, मारेंगे सब, सैल्यूट मारेंगे लाइन में। आते ही रॉक सर लाइन में हो जाओ, लाइन में हो जाओ। टॉक सर आप भी मारो। नहीं तुम करो यार। हाँ ये कर दो तुम। इन काउंट ऑफ 3, ठीक है? मेरे बिना अंदर मारना इनको। 1 2 नहीं मेरे बिना 3। कैसे? वेलकम न्यू चीफ। वेलकम न्यू चीफ। वेलकम New न्यू chief, चीफ sir, मिस्टर welcome प्रशांत। वेलकम वेलकम सर, प्रशांत सर, न्यू चीफ। वेलकम न्यू वेलकम चीफ। सर। न्यू चीफ? या यस यस सर। वेलकम वेलकम। क्या सर आप इस पोस्ट को लेना चाहेंगे? कहाँ गए? हैं? अरे ये तो पहले ही अरे, डाउन हो गए, अरे। तो पहले ही गीले हो मैं गए। कितनी बार डाउन हो गया। रॉक सर रिजाइन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं यार, हम मैं रिजाइन कर रहा हूँ आज। रिजाइन कर रहे हैं। आज प्रशांत सर बनेंगे नए चीफ और संभालेंगे अकेले अपने डिपार्टमेंट को। क्या शौक हो गया क्या? हाँ, बेइज्जती कर लो, तुम सबसे पुराना हूँ मैं। अरे क्या क्या बात कर रहे हो? रॉक सर तो पहले रिक्रूट होता है। हाँ इसलिए रॉक तुम सर। सब में पुराना ना। तभी तो कह रहा हूँ आप चीफ बन रहे हो, सबसे पुराने हो। नहीं मेरे को नहीं बनना। रॉक सर अरे इज द बना। बेस्ट चीफ। रॉक सर रिजाइन कर रहे हैं भाई। भाई रिजाइन कर रहे हैं वो। प्रशांत सर किसी को तो खाली जगह भरनी पड़ेगी। हाँ अरे तो डिपार्टमेंट we had two मैं क्या जगह options. भरूं? We had two options, me और you। मैंने आपको वोट कर दिया। देख लो कितना अच्छा हूँ मैं। तो भाई मान्य। एंड आई वोट बिट्टू। नहीं मैंने तो कर दिया, अब तो हो गए। अरे वापसी को दे दिया। अरे इतना बुरा था क्या? अबे छोड़ो। ये लो सर आप मेरी तरफ से। क्या है, हमको भी दो। आओ सर देता हूँ, इधर आओ सर। मैं सबको देगा क्या अब? दो इधर तो। और मनिया क्या दे रहे हो वैसे? नाम तो बताओ क्या दे रहे हो? क्या ये चल कौन रहा है डाउन हो गया मनिया? पीछे? हमको भी। अरे वो लेट जाता है, कहीं भी जाता है। लास्ट से हमको गुजरना पड़ेगा ऊपर। ओके ओके लेट्स गो। जिसको फिर से नहीं उठा लिया। अरे नौ सर 1 मिनट ज्यादा हो गया। अरे इज ही लेट? We'll wait for 15 more minutes.
है तो सर ऑन ड्यूटी। और जज तैयारी कर रहे होंगे यार, क्या पता अंदर वो हमारा वेट कर रहे हो और हम बाहर खड़े हो। सर डीओजे का ट्रैकर क्या होता है? नहीं होता है डीओजे का ट्रैकर। उनको कौन सा कोड वन पे जाना है? उड़ जाते हैं ना कभी को आ रहा है चौबीस जजमेंट ग्राउंड पीडी चल वाले जाना। हैं, 9 ऑफिसर्स हैं, एक ही एमएस है। क्या हुआ, सब एमडीटी देख रहे हैं? घर से धमका दूं कैसे? आना कि नहीं आना? जज इसी रास्ते से आएंगे ना, क्या पता पीछे कोई रास्ता हो, पीछे से आए बैक डोर से। और फिर बोले हम तो तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे थे, तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? पीछे से तो वो बुला हम तब भी नहीं जा पाते थे, पर बताओ कैसे पता? हमको पता है ना, क्योंकि हम कमरे में ही होते थे ऑलरेडी। अच्छा बेड के नीचे छुपे हुए हैं। बेड नहीं, सीधा ऊपर ही रहती थी, क्योंकि हमको तुम पता था साले ये बंके आदत टटके है। हो गए हैं, तुम्हें पता है सब। ये दूर से टेलीस्कोप लगा के देख रहा होता। हमारा काम कर रहा है डीए वाला। नहीं नहीं वो और लड़की कर रहा था। नहीं, वो लड़की नहीं बताया मुझे। अच्छा वही तो है। वही तो है। अरे यार जज भाई कहाँ हो? डॉक्टर साहब खटकाऊं कैसे एक बारी? किससे? जज को मतलब कॉल हो गया। क्या बोलोगे? कहाँ है? आना आजा। आओ ना। वो बोलेगा आना कि नहीं चला आना? जा। सीधे बोलूंगा आना कि नहीं आना, जल्दी बताओ। अरे वो जज भाई किधर है भाई? तू इधर वेट कर रहा है? अरे 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 भाई जज सर बोलो यार। किधर क्या है? बोल रहे सर बोलो, भाई थोड़ी है तुम्हारे। अरे मेरा भाई है वो। कितना देर लगाओगे भाई? इसका कॉल पागल बना रहा है। ठीक है, अभी कारतूस सर की वो नहीं आया, विजुअल न्यूज़ वाले नहीं आए अभी तक। भाई यार इस बार हेलीकॉप्टर में आएगा, चल के तो नहीं पक्का। बताओ, उसने कॉल भी लगा दी जज को। सही में लगा दी? इसने सही में लगा दी भाई। हाँ भाई। सही है, बातचीत कर रहा है अराउंड 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 सर 10 बजे बोल रहा है। उनको बोलो बाद में करेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। चलो कहाँ जा रहे हो? 20 मिनट बाद आओगे? 20 मिनट बाद नहीं आ रहा मैं जा रहा हूँ मेरा अरे रुक जाओ ना। काम वाम है भाई। आप भी कॉल करके बोल दो ना फिर जज को। हाँ एक बार आप बात करो, आप बात कर लो। तू निकाले संदीप। आना। एक काम करते गाइस, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। तुम लोग को अगर कोड 1 पे जाना तो जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं हूँ फिर। अगर थोड़ा ऑफिस घूम के के अंदर आते हैं ही। फिर आके। आओ आओ घूम के आते समझ गया सर वो। हाँ, इनका तो ऑफिस भी है। पीसी गेम्स। अरे तो सर वो तो मना कर रहे थे कि ये तो दूसरे कपड़े। कौन बोल रहा है? नहीं मतलब वो अभी ये यूनिफॉर्म मतलब कंफर्म नहीं हुआ ना, इसलिए। किसने बोला? अरे वो कल हुई थी ना बात दूसरी। किससे?
क्या शाम में क्या फिंगर अरे कितने ऑफिसर है सर, मैं अभी तक नया आया हूँ, मुझे 2-3 ऑफिसर याद है। एक ये रॉक सर है हमारे। चलो हम नेक्स्ट बाय का फिल्म देखते हैं, बहुत दिन होने के बाद नेक्स्ट बाय आए। नेक्स्ट बाय था मुझे आया था। इंग्लिश की लाएंगे, ऐसे ही खेलते रहो। यस भाई, ऐसे ही खेलेंगे। ऊपर ऊपर हो जाएगा आज ऊपर। Mastered Ultra Tried to set the Instinct. report, वहाँ पे जो Now, आपने Lena, बोला ना, come on. exactly that's my point. वहाँ You're पे up. क्योंकि वही लाइन में कॉन्ट्राडिक्शन है, एक साइड पे लिखा है and it's the same DA with the DA operations the rates were down, but then there is also written कि there is also written कि weed was replaced by these two new drugs which you know resulted in the lower usage of weed. So what's up? क्या लड़ी So है? I mean those are contradicting points. आंसर हमें एक ट्रक की कॉल भी आती थी जिधर हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा था। वी गॉट अ कैन टाइप ऑफ थिंग व्हिच वाज हेरोइन एंड अगर हम बालस पे रेड नहीं करते उस Silver दिन तो equal to हमें MI. ना Yes. टेबल मिलती ना कुछ मिलता, God. हाँ क्योंकि God ही है उससे उदित पहले यार। उस अगला रेड से पहले किसी ने आज तक ना टेबल ढूंढी कर थी सकता हूँ निलेश। ना किसी को कभी दिखी थी वो टेबल। Okay. तो And there is a con of this thank you so much Karan. whole Ultra ego. investigation. What DA is doing also is according to their surveillance, whatever those guys are doing, the DA ones are doing, and जिन क्या groups हाल पे है वो ये आशीष? कर रहे हैं उनकी वजह से civilians also and PD is also facing so many problems related to drug zone. Not only drugs, they are trying to get मतलब they're trying to get information out more than the drugs. And तो उसकी वजह yeah, से बहुत impact हो रहा है सर। आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट सर। एक दिन Yes. रॉक मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं डीए का नया ऑफिस देखना, तो एंड Office. पूरा दिन वो जो डेविस पीडी के पीछे जो पार्किंग वाला बिल्डिंग है ना सर, उनके ऊपर चॉपर खड़ा करके Actually पूरा judges. दिन वही बैठना। एंड नंबर न्यूमरस occasions the came ब्रोग एवेन्यू के पीपल केम एंड कंप्लेंट अबाउट देयर प्राइवेसी, एंड इसी रीजन की वजह से गोली चलना, पहले उनके ऊपर करो। गोली चलने की वजह से पीडी जाना, एंड इवेंचुअली मैं बढ़िया वी हूँ। लैंडेड अप इन casualties along with DEA. We are here to help, but also एक और चीज यार हुई यार है, shit's multitasking. आई थिंक What's up गुरप्रीत? रॉबर्ट मिस्ड इट क्या हाल आउट। है अक्षय? रॉक ने अच्छा हाँ, ये लीजन वाले सीन के बाद हम वी लॉस्ट टू ऑफ आवर ऑफिसर्स, गणेश एंड लगता था डेविड उदित ट्रू। डेविड वेस्ट। दे आर दे वी लॉस्ट देम इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। उनका जो May their soul ये rest in फ्यूनरल, peace. यस सर, तो उदित बट जो उस क्या हाल है फ्यूनरल फ्लिक के बेबी? टाइम पे रॉक हमको दिखते हैं ये रेड माफिया वाले चेन पहन के। सर Yes चेन रेवंत, पहनने everyone से will दे pay मेरे गेट भाई। एग्रीवेटेड और ये भी कोई भी नहीं रुकता है। आप उनके साथ तू तो मैं कर रहा हूँ, शायद दे विल एडजस्ट, बट उनका जो
क्लोथ एक्सेसरी आप अगर पहन के अगर आप उसको आप दिखा रहे हो पब्लिक में, दे गेट एग्रेवेटेड ऑल द ग्रुप्स. It's And we something have of a personal value to them. and we have a special department who is investigating in all of these things. And the very common involvement of a person is from is DEA. Just because of that, that department also and so many things are getting into trouble. Okay, one thing that I Also, want to mention. Whenever we are going into the panel for the review, I want all of you guys to be impartial. ये जो आप partiality और bias लेके अभी चल रहे हैं मेरे साथ, जब आप लोग वहाँ बैठेंगे, तो you guys need to be Right. impartial. Chief, what do you think about DEA? Because honestly, I've just received I had asked for a finance checklist from the DA of how much money we have invested in DEA so far, and it's somewhere about 25 million, and I don't think we are seeing the returns. मुझे एक्चुअल में डीए अभी टीम्स जो दे वर अलॉटेड टू डू जिस बेसिस पे है, वो दे आर नॉट गोइंग थ्रू दैट ऑब्जेक्टिव. वो कुछ और ही चीज़ में लगे पड़े हैं. दे आर लाइक कनेक्टिंग एवरीथिंग टू ड्रग्स एंड ऑल. They are दे more थिंक कि focusing on. या अगर ये बंदा गाड़ी भी चोरी कर रहा है ना, तो ये ड्रग बेचने जा रहा है या ये कर रहा है. लाइक दे आर लाइक टारगेटिंग दैट वे ओनली. उन लोग वही थॉट फिर लेके हर्षवीर चल रहे पागल हैं, है एंड क्या? देन they are Same making here. a mess out of it, and then they come here to get help when they are being chased or anything, and उसपे फिर PD involvement भी हो जाती है, and then also PD is suffering as well साथ में. Jat sir, I wanna Do you add want to one be more part of the thing. panel as well, Chief? I didn't मतलब I didn't know that you'll be here today, तो इसलिए मैंने आपको I don't mind being there. Also, I was अरे trying सुफियान to मेरे help भाई, them. मैंने बोला भी कि thank you so much. there are No, things happening in front of you. You remember, Chief, we had also asked for a meeting. मैंने बोला था उनको कि मीटिंग कराते हैं एक, and Yes. I mean their higher officials were not. I mean, Yes. yeah, none of them, and I think there was then only Officer Rock that's remaining. नहीं रहे. Also, the meeting which Mayor, कैसे हो रहा है? But me guys, can we and have hashtag Sufyan DA and Sufyan? chief had Means a was lot, bro. in that way Means a कि lot. Thank you so they'll much. get a बहुत report बड़ी for बात an बोल दी मेरे भाई. operation, then बहुत they'll बड़ी बात give it बोली to है. Mayor or DOJ, and then PD will help them, right? Yeah. वो वाला communication तो is missing. They सीधा आके तीन शेर they बहुत get नहीं into देगा. trouble, and then they start calling people कि we need help, and then if we Hmm. fail to do so because already situations अभी कुछ ऐसे ही चल रहा, so they start blaming us only. सर इसी और एक बात, एलेक्स इधर ही है, वहाँ कोड रेड चल रही थी सर, गैंगस्टर. आई वाज नॉट देयर. व्हाट आई हर्ड फ्रॉम एलेक्स एंड द रेस्ट ऑल द और ऑफिसर्स, सर राना मेरे को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में मत बताना प्लीज. टेल मी लाइक अ समराइज. नहीं सो जब भी हम कुछ बोलते हैं सर, एरिया लीव करते, दिस इज हॉस्टाइल, उनके तरफ से आते हैं यार उदित, मेरा अल्ट्रा मेरा इट्स सुपर सेयन एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट. फेडरल एजेंट. मेरे को बीच वाले फेजेस नहीं पसंद. बाद में वो सुपर सेयन एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, पीडी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गैंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. गॉड कोड 99 कोड 100 ये क्या. थैंक यू रोहन मेरे भाई. एंड गोली चलती है, 911 करते हैं कई, और वो सिचुएशन वो पूरा अरे यार हीटेड अप सिचुएशन पीडी के अंदर लेके थैंक यू सो मच पीडी से गौरव. गोली चलाना, एंड दैट्स व्हेन पीडी पर गोली चली, ऑफिसर्स बोलते हैं इट्स 99 पीडी के ऊपर गोली चली. वी एक्सप्लेन देम राना मेनी आप फिर मेरे को एक पर्टिकुलर सिचुएशन ठीक है अभी राना, we can आई नीड अ समराइज्ड that pass. Yes. गॉट इट. ठीक है. ठीक है. आई थिंक वी आर गेटिंग. डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल, चीफ? Yes, I don't mind. हाँ. Yes, I don't mind. Yes. Great, perfect. So we'll take Chief along with us as well. बाकी रॉबर्ट एक काम करो, चीफ को जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है उस पर समराइज कर दो. ठीक है. एंड एक काम करो रॉबर्ट, तुम चीफ के साथ एक बारी ट्रैवल कर लो सीधा कोर्ट हाउस. तुम इन द मीनवाइल चीफ को समराइज कर दो सारी चीज़ें. बाकी हम सब लोग एंड अगर आप लोग भी साथ में आना चाहते हैं चीफ एंड रॉबर्ट, I'd like to first go and pay my regards to
David West and Ganesh Gaitonde. So I'd like to go to the graveyard first, and from there we'll go to the courthouse. Regards से याद आया, there was one more thing. There was a guy. रॉबर्ट तुम रोना क्यों शुरू करता था? अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ बहुत सारा। है आवाज आ रही सर मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, मैं तो वही कर रहा हूँ। हमारे जो रॉक्स में था What if I tell you I DEA never watched उन्होंने Animal? That's एक okay. बंदे की But you चेन should ले ली watch that. थी और चेन में रेड माफिया लिखा हुआ था। उस चेन से क्या हुआ, सारे के सारे DEA ऑफिसर्स लीजन में नेकेड उनके कपड़े उतारे गए थे एंड सभी के सभी को गोली मार दिया गया था लीजन स्क्वायर पे। Guys, अमनदीप की तो बात ऐसा सुनो। सब कुछ हो रहा है। Snipe is one of the devs of Soul City. Okay, ठीक है, we'll Yeah. see. आज एक बारी पहले ये वाला इशू रिजॉल्व करते हैं, then we'll look after बिल्कुल the rest बिल्कुल of the सर, things. बिल्कुल। ओके ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं। Convoy. Let's go. Convoy. चलो चीफ चलते हैं। चलो एजेंट। ये कौन है? यस, हाँ जी। तब ठीक है, जाते हैं। Like a L like a L like a L like a Sunset, are you there? Everyone is there. अच्छा अच्छा बाहर देखा क्या क्या हो रहा है। कोई नहीं, कोई ना भाई, मत दैट्स अभी देयर। वो चीजें मत बोलो अभी आप। नहीं मैं बोल रहा हूँ, If you're understanding me, या आई अंडरस्टैंड यू। मैं बोल रहा हूँ कि रॉक्सेट ने बोला अगर नेगेटिव हुआ जो जज के पैनल में बैठा है ना, उनको पेलना है, ठीक है। इसलिए मैं रीजन को कर रहा है। अभी कुछ भी ऐसा स्टेप मत लो जो हमारे खिलाफ जाए। अरे मैं फेक आईडी से कर रहा हूँ तो वही। सबसे पहले जज चार्ल्स को मतलब पूछना कि उनकी हेल्थ कैसी है अब, ठीक है? और इसी खाना चाहिए सर आज आपको? जितना मक्खन लगा सकते हो लगाओ। मक्खन किसको? मजाक कर रहा हूँ, कोई मक्खन नहीं लगाना, बी प्रोफेशनल। जो है एक्सेप्ट करना है हमें, ठीक है? डिपार्टमेंट शुरू हुआ था तो इफ वी गो डाउन वी गो डाउन। अरे चिल मैन, विल स्पीक ना, विल आल्सो सबको चांस मिलेगा ना बोलने के लिए। सो 5 or 6 back 10 it on phone. ये भी दे सुनो, सबको मिलेगा ना चांस बोलने के लिए। आई होप सो, मेरे को आइडिया नहीं है। Because I have some points to raise. I have a lot of points to raise. क्योंकि देखो, और if अगर they're मैंने RR किया तो मैं नहीं, if डबल they're RR going करूंगा। to against DEA, सुनो, चीफ बदल है, असिस्टेंट चीफ बदल है, ऑफिसर्स न्यू ऑफिसर्स आर कमिंग। उन्हें क्या पता है भाई प्रीवियस चीफ क्या किया है? और समझ रहे हो? मैं एक बात बोलूं, न्यू ऑफिसर्स कोई भी नहीं है जो बोलने वाले हैं। वो वही ऑफिसर्स होंगे, You are only the one, right? वो वही Old ऑफिसर्स officers. होंगे जिनको हमेशा शुरुआत से ही थी प्रॉब्लम। और हम भी बोलेंगे भाई क्या किए पीडी जो लीजन में। हम एज DE एज अ फेडरल एजेंसी हम PD से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? जो हमें PD ने पॉइंट्स दिए थे याद है उस टाइम ऊपर, जब वो बोल रहे थे कि प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं। ऑब्वियसली वी एज अ फेडरल एजेंसी वी लेस ऑन एजेंट्स वी एक्सपेक्ट PD टू प्रोटेक्ट अस, दैट्स इट। उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और जहाँ तक रही वो कोड रेड वाली बात, हमें भी पता है कि एलेक्स बर्न्स ने कितनी बदतमीजी से बात अच्छा, की थी आपसे if पहले। listen, if DA gonna close, if DA gonna close, what about us? I'm not going PD for sure, DE or nothing. नहीं, if anyone wants to join PD, can they? Who be? If anyone wills to join वो तो PD, PD ऑप्शन देगी ना, जिस मतलब
मेरे को पीडी के जो हाव भाव लग रहे हैं दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ अस। हम मीटिंग के लिए रेडी थे, पीडी से सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया। वी वर रेडी फॉर द मीटिंग। If DA gonna close, if we get an offer to move PD, I'm gonna go. पहले वो था. श्योर, व्हाई नॉट। If DEA closes or you आप अभिषेक क्या हाल है? क्या करे न क्या करे कैसी मुश्किल है। अच्छा, what do you think will change in the formals income? I don't think so. You're looking good in this. नहीं, because फिर से जज पूछेगा भाई DOA क्या है, DA रखा है, DOA कर जाए, वो एक बात। देख लो यार, इतना छोटा पॉइंट जज नहीं मारेगा। एटलीस्ट आई वुड एक्सपेक्ट दैट। पीडी जरूर बोलेगी हाँ हाँ ही में, बट जज नहीं बोलेगा, बिकॉज इवन जज नोज। जब वो बजट बोलने जाएगा तो हम यूनिफॉर्म की बात उठा देंगे। यूनिफॉर्म कभी दी नहीं हमें। जहाँ तक बोले रिटर्न्स की बात, वी नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अरे we can defend ourselves man. जब डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, वी गॉट आवर व्हीकल्स आफ्टर लाइक 3 to 4 weeks, not Listen, like at the listen. day of department Chill करो. adoption. You have the I think points. we have a lot of points. We got a lot of points, but let's make some sensible points. ये जो मैं भी points बोल रहा है sensible नहीं है. कौन We सा? want to make sensible points on what the works we have done. हाँ, that's right. We do not need to counter him on like shitty points. मास्क उतारो, रश्टि. मास्क उतारो. Yeah, Rusty, please take off the mask. Yeah. ये कौन? ले. हेलो, वैसे नहीं है क्या? Yes sir. Okay. सो गए लगता है। भाई कितना देर वेट करेगा भाई, जल्द से। पागल पागल हो गया था जज। क्या जज? क्या हुआ? We are still waiting. Okay okay. I think the con is coming. कहाँ जा रही है कौन? I'll wait outside, ठीक है? आप लोग talk to me before you leave. Sure. What's your name, by the way? What's your name? I'm Alfred. Give your number. Alfred, I'll okay. call you. If you leave also, I'll call you. Yeah. Here you go. आप कौन से इसमें हैं? Like visual इसमें? I'm a field reporter. Who's your boss? Richard. Is he available? No, he's gone. Right now it's only me, but we might have some more people. Okay. Yeah. एक स्लॉट रखो इस सर्विस पे ड्राइवर का। क्या कह रहे हो? ड्राइवर का स्लॉट रखो ना इस सर्विस पे। ठीक है। कौन है? पीडी है क्या? अच्छा, listen, we'll wait outside because if judge comes, you can salute him from outside. इनको भी बुला देना सब जज आता है। मानिया और when judge is coming closer, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ रेडी पे, इनको बुला देना आउटसाइड। ओके। वैसे बाहर चलो बाहर वेट कर। बाहर चलो बस।
मास्क को डाल दीजिए। मास्क उठाओ, बात करो। बाहर। बाहर क्यों भेजा है? अरे इफ जज कैन कम ना, वी कैन रिसीव हिम। बहुत सही। तो रिसीव करना साला डिपार्टमेंट फायर करने वाला है, तुम लोग कर रहे हो? अरे मालूम है थोड़ा यार चुप हो याद जा आने अभी। आते ही सीधा हाँ। ओपन अप, बूम बूम। TOA ओपन अप, लेट्स गो। या अभी यूनिफॉर्म में है ना, इसलिए बोल। I can do this. अच्छा रुको, एक करता हूँ। सर ये करना है, सर ये करना जज के सामने ही करेंगे भाई। सर ये करेंगे। क्या था ये बोल? पता है क्या? ये देख, इसका नाम ओए क्या हम था? पे कैमरा है भाई, हम पे कैमरा है नाम भाई। क्या था किधर है? सर थिंक अबाउट डॉग। क्या स्पेलिंग DOC के? अरे girls, ये बंद करो भाई, अभी क्या पता, अभी चिल रहे हैं। ओके डोंट रिकॉर्ड दैट। डोंट रिकॉर्ड दिस। चिल रहा है पूरा, ठीक है। नहीं यूज रिकॉर्ड करेंगे करो। सर, डोंट वरी। हाँ। हाँ ये रिकॉर्ड करूँ क्या, बताओ? नहीं, मैं और कुछ कर ये रहा हूँ, रिकॉर्ड रुको। करो सर, ये मैं रिकॉर्ड और कुछ कर रहा हूँ। सर बंदी होके जाओगे क्या आप लोग आज? आप विजल न्यूज़ से हैं? अब Yes, sir. उम्मीद तो है, देखो हमें भी कि बंद मतलब वाले हैं। ऐसा बाकी हमारा रीजन से नहीं इंटरव्यू तो ले इसकी सकते वजह से बंद हो जाओगे। हैं। आप इंटरव्यू ले सकते हैं हमारा। पहले सुन के तो आओ अपना रिपोर्टिंग। अरे मालूम है भाई क्या होगा। अच्छा ये बताओ, प्रीव्यू तो करो। एक मिनट शांत, एक मिनट। ये बताओ हमारे साथ हो? मैं तो हमेशा इंसाफ के साथ हूँ। जैसे कि कौन से वाला? कि DA हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? आई डोंट थिंक हटना चाहिए, बिकॉज हर चीज के लिए होनी चाहिए ना प्रोटेक्शन। वही आप हट जाओगे तो पूरा शहर मतलब गांजा ही प्रोटेक्शन पीता रहेगा, जरूरी है पता नहीं सर। सही गंगम स्टाइल। पुलिस बैंक लूटेगी कि बैंक लूटने वालों को पकड़ेगी कि ड्रग्स देगी। नहीं, पहला वर्ड तो सही बोला। कहना सही बोला। पुलिस अपने लोगों को हॉस्टेल बना रही है आजकल। अरे ये क्या ये बताओ, और बताओ मुझे इसके बारे में। नहीं, ये ज्यादा लीक नहीं होता है। बताओ अपने नहीं है, और को अगर ये जज के आने से पहले एक दो देना है कोड तो बताओ मेरे को। हाँ मैं दे देता हूँ। ए मत दे ओए। सर सुनो सर, ओपन गंगम स्टाइल। आओ सर, माइक खोलें आप, हम देंगे इतना कोड। पैसा होता तो मैं DA में होता। हम कोड Anyway, देंगे सर, आप हाँ, बताएं। हाँ एक सेकंड सर। ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट हम देंगे। जब आप बोले एक्शन तो हम बोलेंगे। हाँ सर, हमारे कैमरा में ही माइक्रोफोन है क्योंकि रुको पड़ रहा है। हाँ अभी बोलो। कोई नहीं। हाँ अभी आप दोनों अपना नाम बताइए पहले। माई सेल्फ स्पेशल एजेंट अजय ठाकुर। माई सेल्फ स्पेशल एजेंट विजय सिंह। हाँ सर, आप बताइए आप सब यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं सब साथ में? तो सर आज हम इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हमको जज की तरफ से नोटिस आया था कि आज हमारा कुछ पैनल वगैरह होगा, तो उससे शायद हमारा डिपार्टमेंट का रिव्यू हुआ एक तरीके से। तो देखते हैं क्या हम अपने जो भी रिपोर्ट सबमिट करते हैं उस पर हमको कुछ प्लस पॉइंट मिलते हैं, या फिर जज जो भी हमको फैसला सुनाएंगे हम मानेंगे उस चीज़ को। अभी के लिए ये सस्पेंस बना हुआ है कि हम लोग आगे चल के काम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आज हमारा जो रिव्यू होगा उस पर हम सब कुछ डिपेंड करता है। लेट्स सी व्हाट हैपन एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। तो ये आपके परफॉर्मेंस की वजह से रिव्यू हो रहा है कि लीजन की वजह से रिव्यू हो रहा है? ये आई गेस हमारे परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों में जो हमने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है यहाँ पे इन सिटी, हमने काफ़ी कुछ पता लगाई है चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है इस टाइम पे, और हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली है रिलेटेड टू ड्रग्स। अगर वो चीज़ बाहर आती है और हम उसको उन बंदों को पकड़ लेते हैं जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें एक पीडी को भी और हमको भी एक बहुत जगह हम लंबा हाथ मार सकते हैं, और मे बी लीजन भी इससे पकड़ा जा सकता है। That would be the best thing for the city, सर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर थोड़ा सा लक आपके साथ ना रहा और आज DA जज ने कहा कि बंद कर दीजिए, तो आप लोग क्या करोगे इसके बाद? देखिए सर, ये तो अभी हम होप फॉर द बेस्ट, जो आपने एक हमारा मोटो सुना है उसके ऊपर है। Be Let's see, अगर positive. कुछ ऐसा कुछ होता है तो अभी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हम इस बारे में अभी सोच भी नहीं रहे हैं, तो अभी इस बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है, और जो भी हमारा डिसीजन होगा आफ्टर द जज का जो भी स्टेटमेंट आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so नाउ much, thank आई you वुड so लाइक एक दो लोगों का मैं इंटरव्यू ले सकूं आफ्टर द रिव्यू। ओके सर, ओके थैंक यू सो मच। अच्छा और बताएं, सही था कोड सर? ऑफ हो गया। अरे बहुत मस्त, हीरो बन जाओगे आप लोग टीवी। सुनो, अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर DA क्लोज हो गया, कर लो कि आफ्टर वाला स्टेटमेंट कौन देगा। अगर DO क्लोज हो गया, आफ्टर वाल तो हमारे डॉक्टर देंगे, और मैं भी दूंगा एक बार। सो वी डिमांड हमें PD में ले,
या डीए रखें तो अरे तुम चुप रहो यार, तुम अभी वो तो आफ्टर अरे उसका है, आफ्टर है, वही वो बता रहा हूँ तेरे को। हाँ, ये यार ये मैं इनका तो इनका मत कहानी छोड़ो। सुनाता हूँ यार, मैं कौन सा गवर्नमेंट में हूँ, मुझे डिमांड हाँ क्यों वही बता रहे हो? हाँ वही वही इनको क्यों डिमांड बता रहे हो? वो तो नहीं, जज का अगर स्टेटमेंट है, उस पर डिपेंड वेजल करेगा। न्यूज में बताए थे ना, जनता जानेगी और जनता डिमांड। विजय भाई हाँ तुम तो शांत ये रहो यार सर अभी। आप अपने रॉक हाँ सर को बता दो, वही वो रॉक सर को पोस्ट वाले बताएंगे में और रॉक कोर्ट सर में। हाँ हाँ, रिप्लाई अरे करेगा। रॉक सर ही बताएंगे ना वो। हाँ हाँ, क्योंकि फिर हमारा प्लान है कि ये न्यूज़ फिर हम कल सुबह से पहले अबे आउट जज जा रहा है फिर से। डन हो गया। ओपनिंग स्टेटमेंट हमने दे दिया, एंडिंग रॉक सर वो ने नेता डन हो जज जा रहा गया। था। लेट्स गो। जाओ जाओ, गुड लक। जज जा रहा है, जज जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जज जा रहा है, जज जा रहा है। प्रशांत पास, प्रशांत बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। जीजा आगे क्या बोला तूने? आ रहा है, जज जा रहा है भाई, कॉन्वे देखो, कॉन्वे आ रहा है। कहाँ से कौन में दिख रहा है तुमको? ठीक। हमको तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। इधर लाइफ इन्वर्टर पे है। दिख रहा है। वाह। रॉक सर को बोलो भाई, उठाओ उनको बोलो। अरे यार रॉक सर रुको। आ गया हाँ जज। इस अंदर ही मुसीबत है रुकते हैं? भाई। अंदर रुकते हैं या बाहर रुकते हैं? यहीं रुको, कोई इशू नहीं है। पता चल दे, तो हम वेट कर रहे हैं बहुत देर से। Guys, stand inside for now. आप इधर ही बैठो। या तुम्हें बाहर रुकना है तो रुक सकते नहीं हो, नहीं कोई इशू नहीं, नहीं मैं है। आपको सिक्योरिटी दूंगा। अंदर आना, एवरीवन कम इनसाइड। Stand in front of Rock sir. आ गए अरे आगे जज आ खड़े गए। रहने की क्या जरूरत है? अरे चीफ है, डीए के चीफ है। कोई इशू नहीं। अच्छा डीए के चीफ। हाँ अभी तो पता ही नहीं। भाई अभी तक पता मनिया ही नहीं। मनिया भाई तुम कहाँ सदमे में रह ये रहे ना, राजा ये कौन सा रहे, फूक ये रहे हो? रहे। मानिया, लग रहा है मानिया मेरे हमारे पास, डिपार्टमेंट में ही हाँ लोग मेरे मजे लेफ्ट फूक में आ रहे जाओ। कोई आ जाओ, एसएमजी लेके मेरे लेफ्ट सिक्योरिटी। थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। धीरे ही है बात। क्या चाहिए? सिक्योरिटी आ गया। ऐसे स्वागत करेंगे हम जज का। अरे शांत रहो, आ गए क्या? आ गया बैड है। एसएमजी निकालो, एसएमजी निकालो भाई। सब गन्स अंदर। गन्स अंदर सर, गन्स अंदर। For the last अंदर time. करेंगे। अरे नहीं प्लीज वो देख प्लीज गाड़ी कम। साइलेंस को। अरे ठीक है मनिया भाई, ठीक हाँ है। ठीक। सर अरे जज उस दिन स्टोरी में तो पता आता है भाई पूरे। अंदर और होता है मनिया भाई, समझ रहे हो? अंदर क्या क्या होता है मालूम नहीं किसी। जज पूरे टोरे में तो आता है। तुम उधर ये रखोगे ना, अल्लाह तुम्हारे की आराम से। चलो शांत रहो, भी आ ही रहे होंगे शायद अंदर। अरे अंदर नहीं, अंदर नहीं। शांत चुप ले। तीन, दो, एक, आ गया दरिंदा। आ गया ए शांत है। अक्षर आ गया। आइए Rock sir. आप बुलाने तो दो। गुड इवनिंग सर। Can you guys just wait here for a while? Good evening, sir. Yes, sir, sure. I'll just see where we should do the review meeting and then Sure, sir. ओके। where's chief? He's outside. क्यों नहीं बुला रहे भाई हमको चीफ? I'll be back, okay? तुम्हें नहीं ऐसे स्पीच। I'll be just back. अरे हमारे ऑफ हैं, बाकियों के नहीं अरे हैं। पीछे से बोला किसी ने सर, पीछे से किसी ने बोला। ठीक है, the panel that was assigned आप लोग आ जाइए। अरे राटा पैनल में मेरा हो गया। अरे रुको नहीं हो रहा है। जो पीडी है वही वो है। हाँ वही पैन। एक मिनट, कोई इशू नहीं है। विजय हाँ हाँ। कोई इशू नहीं थोड़ा है। सा अपना गला और उनके हाई कमांड्स को ही लेके आए ये लोग, तो आप समझ रहे हो? क्या बोल? हाँ समझ रहा हूँ। गला कम करो अपना हाँ विजय। हाँ, गला कम है। गला कम करो सबके सब। कम है। भाई राना उसमें है भाई, मेरा हो गया। वो गला देख कम करो, क्या होता है? उधर देखियो, वो गुस्ताव पिंग खड़ा है। कौन है वो? सर वो कौन है? कम करो यार तुम, और थोड़ा और अरे कम है वो। धीरे बोलो, धीरे बोलो। कौन है? राणा है और रॉबर्ट अरे है। यार विजय भाई तुम ये कम नहीं है भाई।
ये काट अरे थोड़ा धीरे बोल लो भाई, थोड़ा थोड़ा गला कानों दूर में करो। बोलो, कानों चलो में। चलो चलो और रिव्यू मीटिंग है लेकिन बॉयज इतने चिल आउट पहुंच ले रहे हैं एकदम। और दिस इज द पावर ऑफ टीए। Future FIB. Future FBI. आगे बोलो तुम खिसकाना बंद करोगे तुम लोग साले इतने मुश्किल से ये बार बार खिसका रहे हो बताओ। शॉर्ट से बकचोदी कर सकते हैं? नहीं हाँ बिल्कुल पागल हो गया तो स्वॉट है वो। भाई फेल देंगे भाई। इसमें एक वो जानने वाला लग रहा है मुझे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें, अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते दैट डजंट मीन तुम उनकी रिस्पेक्ट ना करो। वी आर ऑन टॉप ऑफ एवरीबॉडी, वी डू Yes, we रिस्पेक्ट know पीपल। that. We know that, sir. We know that. We know that. State versus फेडरेशन होने वाला है बॉयज, लेट्स वी गो। नो दैट। लेट्स सी क्रेटू सर का क्या डिसीजन है। नहीं सुनो स्टेट वर्सेस पीपल हुआ है, स्टेट वर्सेस ईएमएस हुआ है, स्टेट वर्सेस डीओजे हुआ है, अभी स्टेट वर्सेस फेडरेशन होने वाला है। भाई अभी इससे पहले भी लोग मेरे को I तोड़ think, भाई sir, ये पता नहीं क्या इंग्लिश ही वर्सेस प्रॉब्लम है हिंदी भी इनको होगा मेरे। शायद। प्रशांत सर, ओ प्रशांत सर, ये पीडी वाली है, पिछली बार भी मेरे ऊपर केस। बोलो बोलो बोलो। बोलो वो हार गए थे सर, हम जीते थे। अरे यार इंग्लिश वो वर्सेस हिंदी भी होगा। उन्होंने जो अगर केस प्रेस नेता आ जाओ सर, आप लोग आ जाओ। हाँ ठीक बुला है रहे हैं आपको ठीक अंदर। है ठीक है आ रहे वन बाय वन कमेंट सर। राणा अगर चीफ आगे जाइए प्लीज। चीफ के पीछे you're gonna close, you're gonna open, you're gonna go its name. Yeah, नहीं Yes, absolutely. Yeah, you किधर can. बैठे हैं? Yeah, SWAT officers नहीं तो वो बाहर खड़े खड़े वैसे नहीं बोलोगे किसकी वो कर- प्रशांत बैठिए आप लोग। कोई नहीं सर, बैठिए। ऑलरेडी एजेंट के हाँ टाइलर है अलग, सामने वाले रूम में आ जाओ। बोलो डी2 अब सामने वाले think we can sit there. इज्जत है हमारी भी। जज खड़े हैं, खड़े रहो। Agents खड़े हैं। अबे ओ जज खड़े हैं, अभी खड़े रहो सबके सब। Guys, I think we can go there. नहीं वहाँ नहीं बैठ सकते। बुला दो, बिजनेस वाले को बुला दो। आवाज कम करो। मेन कोर्ट हॉल बंद कर दे। इट्स नॉट पब्लिक हियरिंग राइट। मेन डोर हम ब्लॉक कर देंगे। नहीं पिछले कुछ दिनों से यूनिफॉर्म में है ये फर्स्ट टाइम। नहीं ऊँगा गोला मंगवा दूँ, स्वेटर बुनेगा यहाँ बैठ के? ऑफिसर वीर, आपको पता है ना आप कहाँ बैठे हैं? यस सर, सॉरी सर, मैं वो तो कम से कम उस जगह की रिस्पेक्ट रख लीजिए। सॉरी सर। यू शुड बी। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, जज तोड़ रहा है बे। नहीं आ रही कुछ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब भोसड़ी के बोल दे कुछ मुँह से। कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहे। ठीक है। उधर खड़ा हो, थोड़ा उधर खड़ा हो। ये माने आराम से। क्या बोलना है? शांति
से बैठना है। Only we are the one who is standing back. Rest all are sitting here. Anything that you'd like? Oh, they are already here. Sorry, my bad. I didn't see. Officer Rock, I am guessing you will be the person who will be representing on the behalf of DEA. Yes sir. Along हाँ with तो me आप इधर आ Prashant जाइए. is there. Yep. अच्छा ठीक है, तो आप इधर आ जाइए. प्रशांत इधर आ जाएंगे. As many DEA officials who can sit here, please sit here. Only 5 can come. 5 ही आ सकते हैं वैसे. बाकी इधर There आ are more जाइए. than 5, then just sit over there. Sit here or wait. So I'll just introduce you to the panel, Officer Rock. I've tried to keep it as fair as possible. One more. There's Igor Yadav. There's Officer JB. There's Chief James Bond. There's Veer Suryavanshi. There's the head of HR, which is Ryan Knight. There's Officer Rana and Officer Robert as well. So this will be the panel. What we are here to review is the actions of DEA and how they have helped in neutralizing drugs so far from the city. And basis that we will either continue or discontinue the DEA department, and the decision will be taken today itself. आप बाकी के जो DEA officials है वो आगे chairs पे आके बैठ सकते हैं. So what we'll be doing that each one of us will be asking a question one by one, right? हम कोशिश करेंगे कि overlap ना करें. कोशिश ये भी रहेगी कि हिंदी में conversation हो पूरा, ठीक है? We'll keep the पहली language जो है first language वो हिंदी रखेंगे. जी सर. And सबसे पहले मैं आपने जो रिपोर्ट भेजी है वो सबके पास all these इन सबके पास है. So वो रिपोर्ट उन्होंने को पढ़ लिया. Highly confidential report that needs to be reviewed. Are you doubting all of these guys? I do because a few of them were mentioned. I don't. Yes. ये पैनल है और पैनल के साथ तो रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी ना. अदरवाइज उनको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या करा क्या नहीं करा. Sure sir, if you trust on them, I do trust on them in that case. This is like my most trusted officials, PD officials which are there in BCSO या LSPD या SASP, and you can trust them as well. Yes sir. तो आप शुरू कीजिए with an opening statement कि how has DA helped so far, and then we'll ask you questions and try and understand कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज तक, and जो रिपोर्ट आपने शेयर करी है we might ask questions from that as well. Is Weasel News here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you guys able to hear us? Yes, sir. Clearly. Okay, great. मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब शाउट करें, ठीक है? तो ठीक है सर. हाँ, please go ahead, Officer Rock. Yeah, regarding the incidents of all the drugs, we came to know specifically when I joined up the department that department was dealing in the specific field for weed, and that specific case was completely being neutralized when since we came to know that brothers who used to live at Parito, they were the main producers. Officer Rock. Sir, I have a problem in Hindi, so थोड़ा सा अच्छा, you have a problem in Hindi. Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए. Yes, sir. So what I was saying that what we came to know that brothers were the main initial suppliers for all these weed that was being distributed all over the city, and we had a few incidents. In one of them, a raid was being performed before I joined up the department, and later on we also had a situation. We busted all of their holdings, and a proper report was being produced to the DOJ as well. Later on, we
came to know two more drugs that were being that came to the city, specifically named as heroin and meth. And our units were determined in order to know the exact distribution from where it is coming, what are their sources and everything. And both the reports were being forwarded to DOJ regarding meth. The report was sent to you before you had an accident, sir. And regarding heroin, the report was sent today only. If it's not been forwarded to panel, I can share it right away. Like it's already forwarded to you. Yes, sir. That's it. Yes, sir. This was Okay. Anyone has any questions? I have a question, sir. I have gone through the report. There are mentioning of meth, there are mentions of the weed, meth, heroin. What are the evidences? Meth lab. There is no evidence regarding meth lab. कहाँ है meth lab? क्या है? कैसे दिखता है? As it's mentioned, we are investigating on that. It's only the only thing we came to know during our interrogation with one of the guys, that they have access to a meth lab, and when we tried to go for further interrogation, the problem is that the guy who has the access to it is not ready to comply with us whenever we are going to get him. And whether we had asked for PD help, we both the units were unable to neutralize him at that period of time for further interrogation purposes. Both the people name who has the access to that meth lab are being mentioned in the report. I have a question too. Yes. Yeah, So, please go on. As per your proceed, investigation, sir. as per your investigation onto the person whose name is mentioned in the report, Hmm. under what circumstances that investigation was done? Under the circumstances of the law that was passed during the terrorist issue which we were having during that time, that was specifically named as martial law. Okay, so you were doing investigation at the time of martial law. Yep. Okay. So he might be under pressure, right? Manishi. Everybody who is what we say under interrogation is under pressure. If I keep you in a cell, like lock that up, ask few questions, you will just be in that pressure, sir. Like you don't know what you will do. People cry as well in that cells. Yes. So you agree, right? So what I'm Ye- saying, yep. he gave you information, according to the report, he gave you information regarding meth Hmm. lab, correct? Yes. Whatever evidence you have, whatever he said, correct? But Mhm. there is no physical evidence Are you have guys able to hear them? मेरे को there आवाज is नहीं a आ रही. meth lab. It might be. We can say it might. There थोड़ा may be थोड़ा meth lab because we यार don't. बोलो ना उनको, shout So कर लो. did I proved over there कि there is a meth lab? It's under investigation to be continued is always been written in my reports. I have a I think question. I answer. Yes, sir. Rock, how did you know, like, तुम्हें कैसे पता चला ये heroin के बारे में? Was there any investigation? As I said, read my report, sir. Before asking that, ये it's इसी मैंने already पढ़ी तभी mentioned. मैं पूछ रहा हूँ आपको. Yes, it's mentioned in regarding the case of Andy Was Roy. that before Bala's raid or was it after Bala's raid? Before Bala's raid, Andy Roy. Very much before Bala's raid, so heroin was found on Andrew Roy. And जब आपने heroin like आपने पकड़ा होगा, Mhm. is there any report? It Specific is. report? It is a warrant was also being asked during this situation on Eightfold, where ADA Jolly was also being involved in that interrogation. You can Yes. have a cross question with him. आपको पता चला like heroin कैसे produce होती है and like, कौन बनाता है? Yes, we got the report from PD about the this. No, by yourself. By Um, yourself, we hold on a second. Let me answer it.
We don't have any kind of laboratory initially that was provided to us. So of course we have to be dependent on PD in order to know what exactly is the process of preparing that heroin. That will be my initial and final statement on that. On what basis Money Singh was investigated in the process of drugs? We were already having suspicion, since they were also been involved in the case in which all of the brothers guys surrendered with like high amount of this weed, and later on from our internal sources, we came to know they do have access to meth, as we came to know they are the ones who were supplying to different gangs. So of course when we came to know that Money Singh is around during that martial law period, and he was also having that mask, having a gun in his back, so we thought it's the best point where we can have a proper interrogation. So when you guys must have detained him or researched him, according to the evidence, you only got one bag of meth, as per the evidences you have mentioned in the report. Yes. So on that basis, you did an investigation at that time when he was caught. As I said, I also got an intel that they are the suppliers. So during that, when I was questioning him out, It was an I can. Official intel, or it was from your sources? So we are a federal agency. We have too many sources, and we can't disclose. No one has them. said that Yeah. DA is a federal agency. No one has said that. So stop No. calling yourself a federal agency. No So one said sir, that DA is a federal agency. So can you tell me what we are, sir? DEA For is my just an understanding. agency for a drug enforcement agency. It just summarizes that. You guys need to focus on drug. No one has called out ever that DEA is a federal agency. That's not the case here in Los Santos. You might be thinking about some other cities and getting inspired from there, but that's not the case in Los Santos. So what I was being told initially, I'm just telling it out that. I'm sorry, but you have been provided the wrong information. Yep. Ryan, you need to be louder. Like bit Hello, louder. hello. Am I loud Yeah. enough? So yeah, as you said, as you said right now in front of the panel, that you saw a gun on his back, right? Yes. But in the same thing, there is a evidence provider, and there is just a pistol that you can see. There's no class 2 or class 3 that could hang at the back. Yep. So you just said right now about having a gun. He had a gun at his back. And A gun have his back doesn't mean he can have a holster in which he can put out a gun, sir. So That doesn't mean if I'm saying a gun at his back means like a class 2 should be carried on. Like the way I am putting out a holster, I can put my class 1 firearm in it, which can be illegal. That can be also a case. For your better understanding, I just clear it out. Alright, got it. Yep. Rock. Yes. There was a report from a lady, Diana Reeves, कि आपने उनको एक धमकी दी थी कि आप उनको execute कर देंगे. Is DEA not focusing on drugs? Yes, we are. But if our information are being provided to outsourcing, we were also investigating that case as well. What do you mean by your information is providing to outsourcing? Can you describe that and elaborate on it, please? So initially, Diana Reeves was an ex-DEA member who was hired by old Chief Cypher. She resigned recently, and she was also been involved in one of kidnapping situation of ours along with it. So where we came एक to सेकेंड, know. आप ये कह रहे हो कि एक पहले there was someone who was a part of DEA. Yes. And she resigned, and she's now kidnapping DEA officials. Yes. She, according to our information, she joined one of an active gang members named Balas. Oh. Yes. Okay, great. So it was all about that. And do you have any idea how much information she has shared about, and whatever information you had regarding DEA or any other investigation that you have done with Balas, and probably Balas could have shared it with all the other gangs? On that, a little bit. I cannot give out a full description. Can I enlighten on that?
Yeah, Yeah, sure, go please ahead. go ahead. Yeah, so basically, Diana Rees was one of the earliest members of the DEA, and when it comes about her sharing the information, I don't know. She had some good friendships with those people of Balas. When she was off duty, she used to roam with them. Not pointing out on her personal life with the Balas guys, but definitely uh, I got some intel from my sources, not to reveal them, that she has been continuously saying that the DA department is not working thoroughly. So most of the criminal activities related to drugs increased a lot throughout that time. So, in short, let me be brief. So, when एक सेकेंड yeah, तो आर यू सेइंग प्रशांत दैट अभी मैं जज हूँ तो अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ जी सर। तो अगर मैं इसके बाद रेड माफिया के लोगों के साथ जाके चिल करूँगा या वेंडेटा के लोगों के साथ जाके चिल करूँगा या बालास के लोगों के साथ जाके चिल करूँगा दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके No, sir, that's not okay because you're part of a government agency, and you have a lot of word. hold on You a hold a second, lot of Prashant. responsibility to the state, sir. Hold on a second. So, initially, like we assign agents, the main thing as a detective, what people you need to understand is to have a good relationship with all the people. So, in order to have proper information what's going around in the Officer city. Rock, but Yeah. your relationship turned into someone who left DEA and could have compromised all your investigations. Sir, I totally agree on your point, but I was not the initial one who recruited her. And So are you the head of DA right now or the highest ranking official in DA right yes, yes, I am the chief of DA currently now? Whose at this position. responsibility is then? Yes, sir, it is my responsibility as of now. That's why we If were by having. chance tomorrow Robert is with Mhm. Legion, do you Mhm. think Chief James he will just say that I did not hire Robert, we did? No. I will be holding Chief James Bond accountable for it, right? For sure. Yeah, I please have a go ahead. question. Mhm. रॉब ये जो रिपोर्ट है ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है. आपने बनाई है राइट? उसमें जो सेकंड ग्रुप है Which group? उस Which सेकंड report? ग्रुप Which जिसमें group? आई मीन Two रेड्स. reports were being sent. Yep. ओके there's one MATLAB. रिपोर्ट मेटला वाली, ठीक है, जिसमें जो कि सेकंड ग्रुप में एक नेम है मैडी जोकर. मैं कभी ना उस बंदे से मिला हूँ ना उसके डेटाबेस में लाइक उसका कुछ रिकॉर्ड्स है. That's mad. So that's the thing. That's the thing. What information I get, I note it down. I'm not a like a person की जो मेरे को सुनने में आता है और जो चीज़ें पता चलती हैं. That's the only thing I act upon. Okay. I have a follow-up question to Jet Charles. You said, okay, even if you take, you were not aware of the hiring details of Diana Reed, right? Do you have hiring details of ex PD, that is public defender? Sorry, can you repeat? Okay. Recently आप एक ऑफिसर को फायर किए. Can you speak in English, Rana sir? I'm a little bit having No, he has a problem in problem understanding. speaking in English. Okay. Recently, you fired one of your employee, right? That I forgot his name. He was in public DOJ, DOJ too. Can you name that employee? That was Joey Gupta. Joey Gupta. Yeah, Joey Yes. Gupta. Were you aware of his hiring details? Yes, I was. While you hired, did we Madam not Junior inform Model. you that he was William involved Dishing. criminal Model, model, super model, junior model. He left DOJ and Did you guys have any reports on him? yes, we have. I had checked on the MDT. I did check on the MDT. Yep. Okay. Yes. Just said you only have verbal evidences. People, what you have heard is the only evidence you have, right? Guys, continue. Mm-hmm. Do you have any physical evidence?
On of any of the investigations you have ever done, Maitreya regarding or anything? regarding heroin or connection with brothers, yes. Check the today's report. It's in the last section of Palito. What if the information you are getting is just a false information to frame someone? ये था Whatever मल्टीपल information ड्रग्स you आएंगे get, डीए को और only get to be over there after एज I अ complete जज my हमने investigation. एक When the नया डिपार्टमेंट investigation लेके has आए हैं been completed, उसकी रिव्यू मीटिंग Just भाई simple यार स्टेट का पैसा जा रहा है भाई एक डिपार्टमेंट like the 25 like the मिलियन के Viran is एसेट्स asking हैं to trust on his जो statement गए हैं that Joey didn't तो have past उसकी criminal ओआरपी भी history. होगी ना So he's giving you the अब recording. आप ये बात बताओ फॉर एग्जांपल पीडी जो है पीडी तो करके लोग बाग वो करके अरेस्ट करके पीडी जो है फाइन्स मिल गया ठीक है मैं जानना चाहता हूँ डीए ने क्या करा है ऐसा भाई कौन सा ड्रग रुका है क्या है मैं पर्पस जानना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्या है So was that case done? तो मेरा जंगल के लिए नहीं लेना पर्पस नहीं है बाकी चीज को तो मैं आ रहा था Fined for $10,000 as well as 40 months of jail. Did he plead guilty? He did not even come back with fighting the case. So if so, listen, Mirana sir, if a person is not pleading out guilty, you need to go to what we say public defender, and initially at the later on stages you can make that report pleading guilty. Unless that guy is pleading guilty, he is ready to fight out on that case. I'm not gonna make him put like he cannot be in some other department. Okay, so officer, no, just a second, Officer Rana. Officer Rock, are you saying that someone who is even under the suspicion of, doing any criminal or illegal activities, and the suspicion is by your fellow colleagues, you are ready to not listen, not trust them, but instead trust a probable suspect? Sir, initially when I came to this Answer my panel, question in a yes or no. Yes, I'm answering that, sir. Only initially when I came I to need this, an answer in a yes or no, Officer Rock. no. But you did right anyway. I have You a did trust a probable suspect. A probable suspect, no sir. It was a reasonable suspicion over there. हाँ तो but don't you think कि reasonable suspicion वाले लोग भी नहीं होने चाहिए? Sir, Just but asking sir, you a question. yes, just answering my question. He was our informer for a very long time, and Did you inform PD about it? Regarding That he was your informer? No, I never like what we say share information about my informers to anybody. Then why do you expect PD to cooperate with you? If you don't, I'm not asking you to share it with everyone in PD. At least share it with the highest authority. At least share it with Chief Bond. For that, he needs to be present in the city. You can send him an email. Sir, just give me 1 second. Chief, are your emails blocked? Have you blocked? No. Is the inbox is open, right? Correct. All the transcripts and the emails are open. I come less to the city than Chief James. Just give me 1 second. Officer Robert. Yes, sir. How many times have Officer Rock sent you emails? 0. You guys don't exchange emails at all? You don't exchange. You exchange 0 emails. Not 0. अगर उन्होंने उनको like कुछ pictures के आपको बारे में email पूछा भेजते था हैं ना वो? जी, yesterday he sent me a picture. ठीक है. Officer Rana, आपको email भेजते हैं Officer Rock? Rarely sir, आते हैं. Yes. आते हैं ना? ठीक है. Any other officers जिनको Officer Rock के email आते हैं? Not me. Not Judge, I feel. How do you expect people to help you if you don't want to help yourself, Officer Rock? If someone is not in the city, if you want me in the city, I am not there. You have asked me on email to come. Have I come? Yes or no? Yes, you did. Why couldn't you ask Chief? Happy birthday, Pat. If one of the high commands are being present over here in this city, if I'm providing out that information and everything to him,
it's like I personally believe it should be communicated between them that I brought up that Agreed. information. Yep. Agreed. If So did you provide that informer information to any of the high commands? regarding informers, as I said, I don't share any of it. So then why do you expect PD to help you? How do you guys expect, why is your expectation is there that the PD should help you when you are not ready to share any information? And what if your just give me 1 second. Yes. What if your informers get caught while doing a criminal activity and then they are sent to jail? Okay, if the question is about I'm not sharing out information to PD, all the information about Legion and about the cases were being shared to the எனக்கு கம்மியுமா நம்பா பாரு எனக்கு கம்மியுமா எனக்கு பாரு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு பார்த்தா my personal First things week. are First see, week. இது இல்ல first week. आपने इन्फॉर्मर की इंफॉर्मेशन शेयर करी किसी के साथ? यार बात yes जो informer मेरे को information share करता है, yes I share it to CID people. You यार can बात have Mr. Veer, he is in the panel. அவளுக்கு மார்க்கெட் अपने इन्फॉर्मर की बात क्या तो वेट कर ले No, I did as I already cleared it many times. I don't. मां सिटिया तो वेट कर What if अगर आपका इन्फॉर्मर ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो? तेरी बात Sir, if my informers being there are like I don't know, there are like even people are there in the city who have done zero criminal activities and are ready to share out of the information. You're being a lawyer, Officer Rock. You're not answering my question right now. I am answering to your question, नहीं, sir. आप you're comparing the whole city. I am asking, what if your informer is doing criminal activities? I'm not talking to you about the rest. So of the he city right now. so that doesn't, so he will be punished according to it. That doesn't mean I Perfect. will. That's all. Yeah. So that means you will consider him as a criminal, right? Of course, I will consider him as a criminal, but that doesn't mean I will stop ठीक है, taking that's out all that I information wanted to from him. No, Not no, no, guilty until obviously not, proven, obviously judge sir. not. Not guilty until proven, sir. Are you trying to tell me what not guilty until proven is? No, sir. What You I'm think I saying don't is, know that? Yuki, definitly, you know that, sir. That is why you're the judge. What I'm The trying way to you say is, said ki it, the way you said will it, I consider. thought that you were trying to remind me of it. I'm really sorry if you consider that. I'm really sorry. Ashok, Sure, Robert, sir. Robert, can you please shout? Robert, speak up. प्रशांत आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू आप जी, डीए sir. में शायद रॉक से भी पहले है ना जी सर व्हाई वाज मिस्टर जरीन हायर्ड ही वाज अ मैं उनके बाद आया था सर क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर यहाँ पर अगर मेयर सर होते तो यू वुड एनलाइटन अस ऑन दैट बट डेफिनेटली इफ आई गो फॉरवर्ड विद माय आंसर सर जरीन सर के रिकॉर्ड्स पे मैंने ज़रूर फोकस नहीं किया क्योंकि आई वाज हायर्ड एज अ ट्रेनी एंड देन नाउ आई एम प्रोसीडिंग एज अ कमांड इन द DEA. I think that question should be to the most senior official, which is Officer Rock. एक second, Officer Rock, Robert. sir. एक second, Robert. Chief, आप कोई question पूछना चाहते हो? Please go ahead. Sorry to interrupt you in between. गुड नाइट சொல்லிட்டா திருப்பி What I feel is Officer Rock is a little confused. He comes up and say he's a federal agent and he can take care of things. So that is why in one meeting as well, when there were some questions happening, he said he's a federal agent and he will take care of it. It's a He federal was, department, I guess. yes, teaching as the US Constitution and everything. So the reason why I think he didn't email me or try to reach me. So I think this needs to be clarified what Officer Rock DEA position is. Related to James's statement, Judge sir, I have a question to Officer Rock. Yes, sir. Go ahead. Okay, ठीक है, पूछो. Officer Rock, is your investigation related to DEA is only limited to drugs? Yes. Are you sure? Yes. Also, Officer Rock, I want to ask, you said your reports are to be continued. I want to know if both the reports are to be continued or Yes, both the one reports of should be them. continued because regarding meth, still the main suspect Seth Norris and the other one, Mr. John Boyd, still need to be questioned. The interrogation is still pending. I can see you want a raid operation on brothers, and
investigate Red Mafia. Yes. But It then there are some names which you just heard of them and then you noted it down. yes. See, And you consider it that just as a proper okay. report for an investigation or getting a raid Okay, operation. I didn't ask for a raid. If you clearly read it, I want to go ahead with a raid. It's just the thing, until my investigation is fully completed, I don't want any Can you civilian tell or me the any. difference between wanna go for a raid and asking for a raid? Sir, it was a confidential report, as I said in the initial basis, that it was for our own understanding that what things are being done in the department as of right now. And I noted that point down that yes, if we get upon that in the fully investigated that case, You we haven't answered my question, officer. What is the yes, difference between ask for a raid and what did you yeah, write of to chief? put out a Go for a raid. yes, Go for a raid and ask for a i- raid. in इसके short बीच में आप डिफरेंस बता दीजिए प्लीज मेरे को. कि मैं ट्रेड कर किस वे में आप जानना चाहते हैं. आपने अभी बोला ना कि I didn't ask for a raid. I mentioned that I want to go for a raid. Yep. इसके that दोनों that स्टेटमेंट्स के yeah बीच में that डिफरेंस क्या है? means in like what I used to meant over there, according to the differentiation, that if I get the evidences, I will ask DOJ to help me with the SWAT unit to seize that specific thing if I Why totally SWAT find unit? it. Why SWAT unit? Because because I don't have specialized equipments to go directly and seal that thing. That's why. ठीक है. Okay. Counter please that, I continue with want the to ask you, why did you then a few days back only there was some incident happened at Palito only. Mm-hmm. What was that situation? Can you brief us a bit? So there are rough? many situations happened at Pareto. Can you just recall it? There was a shootout Be situation between. specific, Mr. Officer. Yeah, there was a Please be very shootout specific. situation at Palito a few days back, Sir, which was we between have you and daily some guys. situations. Can you just notify that date to me? I will. That Can was. I share it? Yeah, go ahead. जिसमें आप Alex Burns and I'll tell the date once. Yep. Yeah. I have the date once. Mm-hmm. The date was 28th January. Yes. It was a gang-related shootout at Palito. You guys were present at the beach just next to the Palito highway, where I guess you were disrespectful to our officer Alex, if you remember. Okay. 28th January. And my question to that situation was that you just said that you would be needing SWAT for handling some tactical operations, for which you don't have specialized, but Mm-hmm. still you can respond to someone's you can respond to these kind of situations, and there can be shootouts जो start हो जाते हैं, and you Mm-hmm. deal with that, but you don't have specialized equipments, you said, right? You are just twisting out the statement. I'm not twisting out the statement. I'm You just did, sir. rephrasing the word which you said you don't have those things. Yeah, that is twisting out. Okay, I I will know answer SWOT to you. support is required, but as Yep. you said, you don't have. Mm-hmm. I'm not here to argue. What just special asking. equipment do you need to conduct a raid? I'm not asking for in order to conduct a raid, sir. I am hereby नहीं नहीं asking. मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको ऐसे क्या स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जो SWAT के पास है रेड कंडक्ट करने के लिए? So initially, first to secure that specific area, in which we can't, because initially what we were assigned was to be as a detective agency. So if we are there in order to secure the items which we believe are illegal or which is leading to processing of any kind of drugs, we should be focused on that, and SWAT should help out there in order to secure that specific area while we are performing our actions. I still haven't, in the 5 lines you just said and the 2 minutes that you just said, I still haven't heard of a single equipment's name. And I asked you the question, what is the equipment that you need, you think that you currently do not have to conduct a raid?
that you need SWAT for it. Of course, see, and they have their. We don't have a tactical unit right now to be formed. SWAT is equipped with class 3s right now, which Okay, so is class right now. 3s, that's one. Yeah. Yep. Second, Yeah, in order to tackle out such high level situations in which such gangs are being involved, they do have this Officer Rock, can you tear gas. mention the second? Yeah, thank you. Yeah, Tear yep, gas. Second. tear gas, smoke grenades and all that stuff, which is like totally not our Grenade. job. It's totally not our job. It's totally like tactical unit job, like tactical department I job, know which whose we job don't it have. is, but Yep. मैं बस equipments के बारे में पता करता Yep. हूँ. Got it. Yep. Cool, go ahead. I think the conversation went a little sideways, got sidetracked, and the एक चीज पूछनी है बस, and I think Chief James want, and correct me if anyone wants, if I'm wrong, anyone in the panel. What is the purpose of DEA? What do you guys pursue on a daily basis? Purpose क्या है आप लोगों का? मैं वो समझना चाहता हूँ. Our initial purpose is to just stop the cut source of any kind of drugs that are being put out in the city. Okay, initial was that, and now? And now it's the same only, sir. You asked for the said purpose. that your initial you said that your initial purpose. So initial means pehle. Okay, and So the later what one, is the which is final all purpose? the not the final purpose. The second one would be whatever the drugs are there in the city to cut that thing as well out. Hold on a second. Let me put my phone on airplane. Sure. Yep. To put out all the drugs which are currently there in the city back to an end as well. Source and the present things. ठीक है. Yep. तो मेरे को बस आप एक चीज बताएं अभी. How successful have you been in doing that job so far as a department? As a department, I would say 40%. And ये metric कहाँ से आया? ये metric कहाँ से आया? What can you just speak? Can you just make me explain that? How did you come up to that 40%? What made you arrive at that 40%? 40% is a metric, right? Yeah. What made you say 40%? Initially, the reports for drug specific weed were on a very high amount. Yeah, for example, like PD used to get these wheat plantations and everything on a daily basis. Right now, it's been reduced. The only thing what reports are being shown of that How people did are. How did DA help in it? We, as I told initially, we did cut off the source that was coming out from Palito Bay. Specific gang which was involved was Brothers. एक जो source था that was what do you call it? Grapeseed was the one that we sealed, right? Yeah. Grapeseed था source. वो तो हमने seal करा था. I think Mayor and I went and sealed it. After that, one incident also happened. During that time, we also completely wiped out the sources by Brothers. A report was already been shared off before. ठीक है. तो एक second. But you are saying that Brothers upgraded. According to your report, you're saying that Brothers have a meth lab. Yes, and they do. So you technically did not eradicate weed. Brothers upgraded themselves from weed to meth. So technically you didn't do anything about it. Technically we did. How? Please explain the technicality to me. The technicality is like that. We cut out their sources. Was having how, as I told regarding busting out all the plantation. How did you bust out? Where are the operations and where can you give me a summary of the operations and when you did it, and when did these raids happen and how much amount of weed did you catch? That was done on this MDT thing. And hold on a second, let me. Which MDT, please tell. I'll take a look at it right now. It was. Judge, may I add something to that? Hanji, please do. So basically, I would like to add is after the weed sale went down,
after we stopped receiving the calls, the Seth Norris incident that took place, it happened way after the weed got cut out from the city. Yeah. So there was a And point we where here's what I would like to add. There was a हाँ point at which the weed selling was at its peak. जी After that, it slowly got down because, as you हम्म said, they switched from weed to meth. They upgraded, and it was way later on that the Seth Norris incident took place. After which the brothers came and surrendered with a huge amount of weed. And I want to add one more thing, just अच्छा ओके हाँ Rock said that he eradicated weed or फिर completely removed weed. फ्रॉम द आज सोर्स सुबह yeah, आज सुबह हाँ ही जी पेलिटो बैंक कंप्लीट पेलिटो में प्लांटेशंस हुई है, एविडेंसेस दिए को हम खुद प्रोवाइड करेंगे. सोर्स what do you have to say to that, Officer Rock? Of course, I have got that report. I did got that report that And they are back into that business. अगर तो weed अब वो वीड और मेथ दोनों कर रहे हैं Ooh, they are do one have one more thing, heroin. Attached in हीरोइन the भी कर रहे report. हैं तो आप क्या कर रहे हैं फिर मैं एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि उसके बाद एक्शन ले सकें. कितने महीनों से सर मेरे आई थिंक 1 मंथ. ये सेटअप कब हुआ था डू वी हैव एनी डेट एंड आइडिया अबाउट इट प्लीज कैन समवन So शेयर to be precise, it was last in back in September. सितंबर एंड Yes. तो कैन आई गेट अ रॉबर्ट कैन आई गेट अ लाइक अ सॉलिड डेट प्लीज ये ऑफिसर yes, sure, वील sir. की तो Just give me a याददाश्त second. कमजोर है गिव मी लाइक अ डेट I'll come on. Just a second. मैं आपको 1 मिनट में डेट दे देता आई हूँ. नीड अ डेट We'll व्हेन we'll DEA we'll वाज figure out. एस्टैब्लिश्ड एंड and it was there I wanted to ask one thing. Rock, आप जैसे बोल रहे हैं पलीटो में डेली सिचुएशंस हो रही हैं. So moving forward, how DEA is gonna tackle the situation? Because you know Palito एक अभी harmful place है officers या जो भी if your reports and everything are true और daily आप face कर रहे हैं तो आगे चल के like are you guys enough capable to take out the shootouts which daily happen on you guys या daily जो operations आप carried out करते हैं without notifying any of us Yeah, it is usually notified. You have a trooper named Jimmy, and sir. then how do you think कि आगे forward SASP should get Uh, involved and help you guys on this for sure, sir. situation? Officer Jimmy was being notified during these operation. Of course, you can have a cross check with him as well. कुछ बताएगा ऑफिसर जी मीना किसी को नहीं but I also want to know about that कि how do you wish to tackle out क्योंकि आप daily पलीटो अगर जा भी रहे हैं Oh, these yes. situations हो रही So the thing is that without proper evidences, I don't want any of the civilians to be harmed out over there. Okay. So regarding heroin, as we got to know a solid evidence, a physical evidence today, we what I wanted to do, we would have provided out information to PD, and they would have come with us in order to carry out the further operation. But that was Okay, the till the initial stuff time with you are finding out the solid evidence, yes. you guys are getting shot at, you guys are getting tailed, you guys are getting into situations Mhm. which eventually PD needs to get involved in order to give you guys as well, right? Mhm. So, don't you think you are lacking in the way of you guys are investigating right now? So we are lacking in the way right now in terms of manpower initially. Like these situation emerged when our cipher sir resigned. I'm not blaming any of the department or any person over here. And I was completely kept alone during that. Like the only person which were present over there was me and Prashant Kapoor. So we had to build out the whole force again, and That's true. right now we are trying out if all the persons are being present for a particular situation, then only we are going out for anything.
But there are many times when we are not fully prepared. People try to engage with us and we can't help during those situations. So in that case, of course, we do need help from PD. So On that's it. That's it. On 25th of September 2022, the request was taken for setting up DA department. 28th of November, DA department was set up completely, and the first batch was recruited on December the 1st. ठीक है तो 25th September से DA शुरू हुआ था. When did Officer Rock join DA? Give me a minute, I'm gonna check. Please. I have a पूरी question, information sir. लेकर आया करो Officer V, please. It was Don't from, like I half, told you, like- sir, the first recruitment was done on December 1st only. Officer Rock was just before that. From 28th of November, to be precise, Chief, their DA Chief, Officer Cypher, Michael Hans, and Rocksmith was there. I have a question, sir. Please go ahead. Okay. Rock, you said that you don't want to harm any civilians in your previous statement, right? Sure. Are you sure you did not harm any civilians? Yes, I'm pretty much sure. If I say that Sheikh Norris were harmed because of combined operation of DA and few officers were involved, then and do you still Do you have any evidences for it? Yes, one of the officer who involved, he gave a statement, but off the record he gave a statement to me. So just provide that on the record statement to the Nico. jury, and then we can go ahead with it. Nico was the officer who gave the statement that. So likewise, you are telling me the way my what we say informants are informing me how what are the things are being happening are all around the city, like regarding drugs. I should also trust the unofficial statement of your officer. Then of course, yeah, you should also trust my informants in that situation, Mr. Rana. But you don't share your informants, you just share their information. Yes, that's the thing. That's So true. they would have probably trusted you. Yeah, right now when he was telling out the name, he should have told that thing way beforehand. Why it's coming like right now? He should have shared out the information. Like if you ask right now, since you are my boss, sir, I'm ready to share out my informant name, but of course, not to everybody else. I am questionable to you, not questionable, answerable to you, not to others. No, that's okay. We don't want to know. Yep. And there is a follow-up question too. First thing. And recently you called me and said, "Do you want to see my new DA office?" Yes. Yes. So that was on the roof behind in the Brogue Avenue proximity, right? The topmost roof you used your. That was the proximity of Davis PD, sir. Behind Davis PD and both the proximity behind Davis PD. I would consider as Davis PD proximity. Yes, go ahead. So as far as we checked, that was not any official office. And secondly, on the date when the funeral took place of our officers, Ganesh Gaitonde and David West, the complaint we got is that you handcuffed Bahadur Singh and you got the chain from his pocket, correct? I don't know about Bahadur Singh, but yeah, from Double D I did. I gave that statement to Officer JB. I think he can elaborate my statements over here. Is this not provoking the civilians and getting an action or reaction out of them and Rana, creating an sir, unrest in the as city? I said, I think you should have a proper confirmation. I already informed Officer JB, who is present right now in the jury. It's better he can answer that or question that. It would be really grateful. Okay, Rana sir, so what was the situation? The situation was, I guess there was a misunderstanding between Rock and Bahadur, where he thought that the chain was stolen, so he took it from him and he returned it to one of the members of Red Mafia. I guess he knows someone, so he contacted them and returned it. So I that is also shown the proof for the message during that time yeah, as he well to gave me officer. the proof.
Also, Rock, there's one question from my side. Yes, sir. You told that you are now investigating regarding heroin and meth, right? Heroin Yes, and sir. meth. So, 80% of the reports, the incidents we make daily, the suspects we Agent, catch what's your daily, 20? everyone, each one of them have joints with them. Mm-hmm. So how are they getting these joints? If you said that you eradicated weed, you got rid of the weed thing, Uh-huh. then how are they getting these joints? 10-9? As I said, sir, brothers was one of their sources. We are also onto some other sources as Respond well. at the court You're house. saying And that the yeah. whole city is taking weed from brothers. So that's No, totally so. no. As I said, I'm repeating it again. Brothers was their major source, which we did completely cut off. But as of now, we also got out the evidences that they are back into business. So which PD provided us on the evidences. So apart from brothers, that doesn't mean that brothers are the only supplier for weed. There can be other one, and we are still investigating on that. But I haven't seen any progress because So the the joint prob thing haven't yes. reduced So from. the another issue which I would like to put it out, of course, I'm being answerable, but still, the thing is that I do understand your concern, but I usually never get out any kind of reports or even emails like the way you guys were saying by PD that we got these many amount of क्या कहते हैं, this joints from this person on this case. Like that's the thing which we got. The only Bedrock, message which I received, sir, let me complete my statement. Yeah. So the only message I received was today, and apart from that, nothing else was being shared. I usually have access to this MDT, but I have to go through the profiles myself and then ask for it. 90% of the times, what situation I am asking for, most of the times those MDTs were being incomplete, and that was being informed to the HR of PD as well. I'll And correct you in this. The descriptions were incomplete, but not the charges. The charges clearly mention possession of controlled substance, and the so, sir, evidence are before all knowing is there. out the incident, how would I question someone? I want to But know there that. is presence of wheat, right? And Yeah, that's but there why. is. Bedrock, Yes, you sir. have the Yes, I do. Bedrock. But of course it is. But a notification from your officers would be. How often do you check MDTs for the suspects you have named here in the report? Sabki, you keep a track of it, right? Yeah, I do. You go I through, do. check everything, right? I do. Then why do you want us to keep you notified for the thing जो already shared है तुम पे? Yeah. So, see, as I said, I have a small force which I just rebuild right now, who are being involved in order to find out source. And if jury is questioning me out why people are having a small amount of joints present with them, unless I am being notified about such things, how I would assign my units to be over there, Don't you who think are that's currently. your job Yeah, to take all care? right, all right, all right. I have a the basic Hmm. point is basically since you are doing the investigation, it is Hmm. your responsibility to put out a APB on the suspects that you think might Can be you just involved. repeat the thing? I didn't understand. What should I All put? right, all right. What I am saying is, hello, am I Mm-hmm. audible? Yes, you are. So what I am saying is, since you would be investigating some particular suspects, it is Mm-hmm. your APB that you are issuing to the DEA units, right? Mm-hmm. So how would we know which people are you currently investigating? What are you investigating? Since you already have the access, so you need to check it regularly rather than us informing you about it. You sure about that statement? Of course, I would take it. If I'm being wrong over there, I think I've made my point. According to me, it should be informed. If you think it shouldn't, it's totally fine with me. Because you only said that you regularly check the MDTs, right? Yeah, but there are, as I said, if I am focusing on brothers, them being so the main source for weed, and you are catching out a person who is from Vendetta and having a joint,
how would I get to know that is it being sourced out from brothers or somewhere else? So yes, but anyways, if you're not getting my point, it's totally agreed. Okay, Rock. The Yeah. time DEA started, Yes, sir. handle situations of brothers. Now you have these two open reports, which is to be continued. Yes. Is there anything else you guys are focusing on while DEA operations are going on, और कुछ भी चीजें हैं जो you guys are? I know I don't want your personal that information which you cannot share, but I want to know कि what else DEA is working on. If judge allows me, then only, because I can only share that information to him. I think the whole point jury is here and the meeting is being held is I what agree, is sir. DEA Agree, sir. doing But currently and of course, how things are going to go forward. of course, sir. So if I have sent you those two documents, that means I wanna only notify to the jury about those two things only. Further You things, I haven't think sent any documents to the I panel. did. It was me. Yes, sir. So I did send it to you. That means that was the only stuff which I wanted to Okay, go so ahead with it. jury knows that you have done the weed on Burris thing and then these two cases. That is all from DEA side right now, right? Yes. Anything else you would like to tell us about how DEA is working or what in future benefits, or I mean the way you guys are gonna go ahead with your force, not regarding operations only, but how you're gonna lead the department overall with the force training, specializations, or whatever your view is आगे के लिए. Okay, Sika, so in regarding to the future for DA, I would simply let you know, we are not the force who wants to be the person in action. We are ready to work on the back end, which means we just want to get out the if you want to get the evidences. For example, right now, let me share this incident. We are also working on Balas. As I mentioned in my report, we came to know that Balas is having access to heroin, what according to my information. So right now my people are having for our surveillance usually over there, where we also came to know about a specific place which information was being shared out to Officer Veer, him being CID lead, that what I came to know, there is a specific what we say shop in which they have a broken this, what should I call, a bus, where many a times I இது see கலிஃபோர்னியா people போவியா having, no அண்ணா கலிஃபோர்னியால specific சொன்னாங்க two கலிஃபோர்னியா weapons, not ரெண்டாவது எல்லாரும் கலிஃபோர்னியா போவா come இல்லை out, கலிஃபோர்னியால தான் they do have இந்தியன்ஸ் இதுமாதிரி கலிஃபோர்னியா நியூ ஜெர்சி நியூ இந்த கலிஃபோர்னியா போறியா I totally இங்கே inform டிஸ்டன்ஸ் that பாரு அங்கே information கார்ல to எடுத்து CID, so they can take up a lead. ஆர் மேப் But இதெல்லாம் of course, if தெரிஞ்சுக்கணும் they கண்ணா are having, they might be having class 2s inside it, there is a high chance possibility they might be டாலர்ஸ் எவ்வளோ smoking இது எவ்வளோ heroin காசு ஆகுது சரி or anything like that. இது So வேண்டாம் இது வேண்டாம் all these kind எல்லாருக்கும்னா of operations are கம்மியாக்கு being shared to ஆனா CID. என்ன சாக்லேட்ஸ் If இதெல்லாம் you are வந்து talking கொஞ்சம் கொஞ்சம் about வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் specific தரணும் which இல்லையா DEA is being என்னது attacked by பேக்கெட்ஸ் any வாங்கிட kind முடியாது of organization, பாக்கெட்ஸ் வாங்க yes, I would tell ஃபோர் you, ஃபோர் 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 I தரலாம் do ரெண்டு வெரைட்டி believe மூணு there வாட்டி is போடுமே security. The இல்லையா reason being that I have என்னது small எனக்கு group இது of மட்டும் people வாங்கிட்டு வா who are not பாரு active at சீப்பா that இருந்தா point of time. பண்ணலாம் And சீப்பாக தான் our வேண்டாம் main job is not to just fight with them, just to gather up the சீப்பாக evidences. எடுக்கணும் So if people are சீப்பா cheating இருக்கும் on தான் evidence, சொன்னேன் வேண்டாம் just try நீ to பாரு use எனக்கு our போர்ட் words. லிங்க் நான் அப்படி பாக்குறேன் லிங்க் அமுக்கிறேன் உனக்கு Taking care சீப்பாக of தான் வேண்டாம் my ம் main opinion, nothing else. குட் வேண்டாம் வேண்டாம் இப்போ வாக்கிங் பண்ணோமா Okay, even if 8 in ஆ numbers or 9 ஆ in numbers, காட்சியெல்லாம் வேண்டாம் want us to நாளைக்கே இருக்கு situation. சண்டே ஆ தான் I would நான் request கிளம்புறேன் please ஆமாம்மா shout நாளைக்கு because we பேக் பண்ணி cannot hear வச்சுன்னு you guys. பெட்டியில எல்லாம் Already shouting. சரி Sir, but we இல்லை cannot சரி hear you. இல்லை They சரி are talking. ம் இல்லை சரி Sir, यहाँ तक சரி आवाज நாளைக்கு नहीं வாங்க 8 or 10 of பேக்கிங் நாளைக்கு வாங்கி capable enough to take care of the situation or no? குட் நைட் படிக்கிறது இல்லை படிச்சேன்பா சாமி ஆத் சாமி அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் Yes, sir, बताइए. You are here to ask questions, Officer Anand. No, I was waiting. Okay, Rock.
Today, that is not even 24 hours past, we found lots and lots of weed, right? According to your statement and investigation, you say that you have completely removed or completely stopped eradicated weed cultivations, plantations from brothers, correct? Yes. And when I see today, it's been like 2 to 3 months as I remember. So आज जब मैंने देखा इतना plants, तो if I say the investigation which you have done is incomplete and you don't have proper information and you I would say So I would just answer to that, Rana sir. You arrest people on a regular basis, okay? Them having another illegal activity on the next day, do you say that person already pleaded guilty and during the next incident you're in I can simply question that, is your investigation incomplete? If yes, then of course my investigation was incomplete. That's two different cases. Reason, That's the same case, Officer Rana, over here. but you said you completely eradicated because of your You also say if a person is pleading guilty, he is being having a probable cause during that situation, then I should also not take him into considerance. For the example, I would say Joey's case. then you should not use the word eradicated, don't you think so? I'd never mentioned eradicated, Rana sir. It's the I never mentioned. Still, I'm saying it again. You can have a court recording again. It's the person you and HR's. Who's that? Brian. Yeah, Brian mentioned the eradicating word. I think I made my point clear. When coming to heroin and meth labs, only what we see is verbal statements, but there are no no reports, any progress. What do you mean by reports? What do you understand by reports, Mr. Rana? There are only verbal statements. I am again asking, what do you mean by reports? When I I said don't reports, understand. I What do you meant mean to by say evidences, physical evidences. So I So- don't see any progress in that. Okay. I'm sorry to cut you off, Judge. Is physical evidences means report? Just I might think I'm getting confused right now. Maybe Physical evidence is considered as proof. Proof. Yeah. Okay, I might have used the wrong word. I'm asking. There are no proofs, no evidences. What So? after the medical? What do we say after the verbal statement of Money Singh? There is nothing. So And what how you can we want? believe the verbal statement of a convicted That's felon? what I'm asking. What is the progress and how can we trust? You say you have informants. You do. You say there are only verbal statements that can be true and that can be false, right? We cannot. Yes. So, what is the progress in that? I think regarding meth and regarding heroin, it's been more than 1 or 2 months. I have a question to you as well, sir. You have been over here for a very long time in this city. You have been a part of CID. What proofs do you have against Legion? I can ask the same question to you over This here. review is for DEA, not for Officer Rana. Sir, sure, sir. I'm really sorry. I just wanted to answer that. Nothing I else. want to add up something, that's sir, if you wanna allow me. Yeah, please go ahead. So, CID's name has been mentioned so many times with the lead name also. I would request Officer Rob not to include that, as this thing is gonna be exposed by Weasel News also. So please be careful with your what, because it's gonna be a problem for. So in that case, sir, our information is being also been put out to Visa News, which I initially was a highly confidential report. Don't you think like that you are being part of this, what we say, jury, putting out those questions and asking anything out should Because this whole case is not centered towards the CID department. It is So to DEA. So something else has to be. I agree. So according to you, you mean to say over here, Mr. Veer, that our information should not be kept secretively if jury is being put over here who are a part of CID as well. I completely agree with you, but yes. currently we are discussing on DEA's So points, not on so of CID's course, so points. if The whole so jury if will understand. so of course, if you Will agree with understand, so sure, Veer, if you understand the importance of
Veer, do you information. think anything about CID is known by DA? Sir, half the information No, was wait, being wait a second. provided to Wait a second. him by Wait, us wait a only. second. Wait a second. Wait a second. Do you think they know anything about DA? About DA as in? Sir, sorry, can you repeat the question? About DA knows anything about CID? See, not I would say they know, I guess, who people are involved, but they don't have any proper information related to the department work. If you cannot keep CID undercover and your information undercover, then there's no point of CID. But sir, if you think whatever he says right now, if he knows about it, then what? There are so many people who are not even aware there is a काला राइस है मसाला साग ना काला मसाला नहीं काला राइस काला मसाला साग ना सुनने काला मसाला That was my just opinion that be careful with your words. That's it. Nothing else about it. We'll get it redacted from VSL News. That's fine. If anything you That'll be want appreciated. redacted, we'll get it redacted. That'll be appreciated. Yeah, please go ahead, Professor. I think, sir, I'm done. Anyways, I'm not here to question any of others' department. It's totally fine. I'm not the one who like simply comes up and put out question to some other department rather than doing out their work. Okay, that was I don't know. I'll let go of that statement. Officer Rock, Yes, can sir. you justify? I'll just send across an email to you. Yes, sir. Okay. Is it possible for you to justify DEA's presence inside the city? I just want to know that basis the amount that the state has invested in DEA right now. Okay, just give me 1 second. I'll just send Sure. it to you. Yes, sir. I received it. Yeah. Sir, just a question. Was Scorpio paid from the funds of DA? Anything that has been used by the DA, it's been used. It's been paid from the funds of the state. Oh, okay. But sir, just to have a counter to it. Wasn't like that Chief Cipher was a part of PD when this thing was And that came from state funds. Yes. I'm saying I haven't changed my statement yet. It's paid for by the state. Yeah, it's 22.2 million. Yeah, it's a huge amount. It is. Okay. I just want to understand. Okay, and I'll stick to this, and let's just have questions and answers around this only. Yes, sir. DA's job in the city was to control drugs and Yes. try and eradicate them. Has that job been fulfilled? What are the successful operations that you have done? Yes, you're saying yes, Officer Rock, but Officer Rana is telling me that he saw weed plantations in Palito today morning. Sir, I But saw. according to you, you have cut out their source.
I do, sir, but just I think it would be similar if I might be questioning their department. I'm really sorry. I have just seen people having class 2's SMG hanging out at tuner, but none of the things were being dealt out. And Mr. Robert was also being okay. Just a thing, sir. I might not. You don't know. Mr. Robert was kidnapped yesterday. I informed that people were having class 2's firearm during this situation. I don't think so कि वो अभी related है इस चीज़ से. I am just. Can I complete my statement, sir? Again, Or Officer, I yes. will just say the same thing again. So I asked that let's just stick to Yeah, the if you are DEA discussing aspect. something about DEA, then let's stick to DEA. It is to DEA. Like if I am informing out something, isn't that like that it's something related to DA? It might be related to drugs. Sorry. If I I'm just want to understand Yes. that how kidnapping of Robert, how Yeah, is that related to because the kidnapping was drug? done. I know Can how you wanna explain it, but it's your explanation is with the examples basically. We don't want examples here. Yep. No, I'm just saying because the people who kidnapped him was from brothers only. That's why I was just putting out. Sir, if I can speak, can I ask a question? Sure. Just one. Sir, I respectfully stand up first. So I just want to ask you one question, sir. I know that DE has not been 100% working. I know that the things are not the drugs have not been eradicated, but we are trying our best, and a lot of things have been controlled, which even the police officers have seen. A lot of people Officer, carrying a you're good. very lot of less drugs. एक last चीज sir, that आपका शुभ 100% नाम बता दीजिए. crime cannot be eradicated. Obviously. Otherwise there won't be any DEA, there won't be any police department. So Absolutely. and the limited resources we have been given, we are trying our best to do it. We Limited have our resources. officers, the limited resources regarding the Sir, manpower. DEA पे manpower is not my department, right? Yes sir, we always ask PD for I some can backup provide and you the resources. Wait a second. You asked PD for some backup. Do you inform? And this is something that I told Officer Rock way before. That do you inform PD before going on any operation? And I mean, if you go on any operation, then you suddenly give a call for ki backup leo. That's not possible. This is something that I've explained before. That there are multiple things that the PD officials are also doing. They cannot just leave a situation and come to you for backup at all points in time. I have told this thing before that if DEA is going for any operation, can you tell these guys in advance, 8 hours, 24 hours, that hey, we will be going tomorrow for an operation here. We need 4 people. How difficult is it to do? This has been discussed before. And I'm sorry, your good name, officer? sir, this is of senior special agent Abhikarthos. Abhikarthos. Mr. Abhikarthos, can you also tell me what resources you asked for and you did not get from the State Department? Okay, sir. Regarding the backup, I can completely I am understand asking that you they regarding the state aspect. Answer my question, please. Sir, whenever What we resources used did you to ask? What the resources Yes, that you that is asked from one. the State Department, did you get them? What resources you didn't get? Sir, one of the major resources that we could have detained people and interrogated, but always there was a clause that whenever we used to detain Are you or not arrest detaining someone, people and questioning already? sir, whenever we used to do it, there was always a complaint, and we were always held responsible for some things which was never to be asked about. For example, detaining someone, and we are always in the captain office with Rock. Even I was there present with him, and we were always used to be asked about why we detain him, why did we question the other person, how did we question the other person, just on Because the basis exactly, of you need small to have proper complaints. proof. You need to have proper proof for it. I don't even allow PD to go ahead and just start raiding houses. I don't. Sir, raiding houses and There is an interrogation. arrest warrant which goes out for people, Officer Abhikarthos, and it goes Exactly, out sir. only basis proofs.
Exactly, sir. That is why we didn't even request for any raids till now, so that we can But you are confirm saying every bit detaining. of information. Sir, Arey detaining a sir, person and asking them questions is a very small thing. It's the you first know part of the that you need investigation. proper. No, I'm so sorry to say that you need to have proper proof to detain an individual. You cannot just go around detaining individuals basis your whims and rhymes. You think that okay, a person just because you think that a person has done wrong, you cannot. That's a No, no, civilian's sir. right. That's not I'm saying. I'm saying Do you have on proof? basis of probable cause. Probable cause, Basis sir. of probable As per cause. the sir, पुलिस वालों की ही रिपोर्ट है. For example, miss in terms of Diana's case, she was a convicted suspect in a kidnapping of one of the DA officer. That's why we questioned her. That's why we questioned her in our terms, because we wanted to know that what kind of Was she information got red-handed? regarding She got. particular. Was she got Yep. red-handed? Yes, sir. So then you can Exactly. obviously detain her. Yes, that is what I'm trying to say, sir. When we detained her, when we questioned her, just because of one single complaint that she filed on a rock, we were questioned for like 30 minutes. And it's like it felt like we were always on a part of a question where we have to prove ourselves that we are trying to question someone on the basis of probable cause, which PD already knows that what is the probable cause and why we are detaining, why we are questioning someone. That is what my whole point is. When we are even held for questioning a convicted suspect on a caught red-handed kidnapping an officer being involved with the gangs, then what is our credibility in terms of trying to show that we are trying to do something? I'm not even saying that we are trying to Because raid I'll someone. just I'll just say one thing. Wasn't that person a part of DEA? Sorry, sir. Was that person a part of DEA? That person was part of DEA only, right? Yes, sir, she was. What do you have to say about that? Tell me one. I think there has been only one person from the PD department. I'm forgetting his name. Which officer was that who went ahead and joined some gang and then did some stuff and is nowhere to be seen in the city right now? Aiden. Aiden, yeah. He was caught Eden Scott. red-handed. He was caught Yeah. red-handed and he was. And I think he left, he was let go of, he was fired, right? He 3 by was 3 fired, strikes, yeah. right? He was suspended and fired. Yeah. The guy Yes, was she suspended resigned, and sir. fired. She exactly she also resigned That was before doing this. that was her choice, no? Exactly, sir. That is PD what I'm. PD eradicated that particular one rotten apple from the good basket of apples. Sir, exactly. That is what my point is. When we are trying to do the same thing, we are getting questioned every day and night. सर वो So छोड़ के निकालने में और छोड़ के जाने में फर्क है ना? exactly, sir. But information तो information है ना, sir. चाहे तो DA आपकी की जाए ठीक है, या PD आपने की करा, जाए. आपने हाँ उनको रेड हैंडेड कॉट करा, ठीक है. Again, my whole question, my whole question around everything is, wait, Officer Rock changed? Yeah. He had a code 0, sir. Oh, okay. Is he coming back? Most probably, yes, sir. Most probably, yes, sir. Okay. My only question is, you tell me what are the successful things that you have done. मैं तो आपसे आपका आपने जो कुछ भी नहीं करा या कुछ नहीं हुआ मैं तो वो मांग ही नहीं रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ आपने सक्सेसफुली क्या कंप्लीट करा है मुझे वो दिखाओ. पैनल को वो दिखाओ. Sure, sir. First of all, let me introduce myself. My name is Bittu Rana, Senior Supervising Special Agent. So basically, I am from the starting of the DA. So I think I can answer this question very correctly. Okay, so our first case was in the guidance of Cypher sir when we raided on a house at Winewood where they were like growing weed, a lot of weed. It was around 500 with the help of PD. And our second case was at Palito against brothers when they surrendered in front of PD with all their equipments and accessories.
Who did? related to weed and all. Who did? And the other cases were like when we like questioned Andy Roy. He was like leading in related to drugs and stuff. He also Heroin, to be specific. yeah, to be specific, it was related to heroin. He told us about all the things which is required to make heroin and to like how it is like made up in the city, like using that heroin table and all this stuff. And we have also questioned Mani Singh. He gave us the like verbal statement that brothers are holding up meth lab, and still we are working on that case. And we have मेरे one को more case. Yeah. Yes, sir. Judge sir, I have a question. Betu sir. Yes, sir. You यार you मैं are from एक सेकंड yes. let me ask a question. Yeah. A group of people, you said that you eradicated their weed, is still growing weed in the city right now. That's one. They upgraded themselves from weed to meth. Two, they are also doing heroin as per your information. Three, I just want to know how did you, what made you think that you have eradicated their source? Why their source is not eradicated? They have upgraded. Yes, sir. Yes, they have upgraded, but the thing अगर is मेरे like पास एक iPhone 13 है और अगर मैं नोकिया 3310 पे आता हूँ, इसका मतलब मैं डाउनग्रेड हो रहा हूँ और मेरा जो है सोर्स इरेडिकेट हो गया है और सोशल मीडिया नहीं देख सकता मैं और मैं ऐप्स नहीं चला सकता. लेकिन अगर मैं 14 प्रो मैक्स पे पहुँच गया हूँ, दैट मीन्स इट्स बेटर. दैट्स एन अपग्रेड. yes, sir. समझ रहे हैं आप? या बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. But the thing एक is like एक क्रिमिनल रोज की रॉबरी कर रहा है, कल को मर्डर करना शुरू करे और उसके बाद वो गैंग बना ले. अब वो गैंग में है तो वो चोरी चकारी नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसका चोरी चकारी का सोर्स काट दिया सक्सेसफुली. नो. अब उसके पास गैंग है. ही इज बिकमिंग एन इवन बिगर क्रिमिनल राइट नाउ. yes, sir. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Yeah, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ. Yeah. So that's why we are working still working on that case, ना sir. कब तक? Judge and jury, sir. I have a question. Can I ask? Can I ask a question? एक सेकंड. हाँ, प्लीज गो अहेड एंड आंसर. So जो अभी बात हुई कि उनके पास upgrades है and today what an incident happened that I totally condemn कि आज ये incident हुआ. We got an information from PD and I totally support them, but sir जो ये चीज़ें हो रही हैं, क्या उसके लिए DA डिपार्टमेंट अभी भी नहीं रहना चाहिए जो हमें इतना कुछ सक्सेस मिल रही है in the recent times? I honestly think that the PD department can do this better. So for that we need records, Do you know about the raid at Balas? Yes, Yeah, sir. we Yes, do sir. know. We know. Do you know Balas is almost crippled in the city right now? Do you know what all information we found? What all important information we found? आपको सिर्फ एक Yes, हेरोइन sir. पैकेट मिला है. हेरोइन बनाई कैसे जाती है वो रॉबर्ट को मिल गया. So We So also know technically that. they got the source. we They also know are that, getting sir. closer to the source. Agreed, sir. Agreed. They are getting closer to I the want point. to put forward a point. Please tell me. Sir, incident number 900 बिट्टू राणा. So जितने भी DEA में है, most of them, not everyone, most of them have a record. बिट्टू राणा was involved in the store robbery. मतलब उसमें kidnapping भी है, reckless evading, robbery. Hi संतोष, welcome to live. Wait, what? Yes, Yeah. And इनके जो स्पेशल कमांड थे वो तो ग्रैंड थेफ्ट आउट ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व थे. Sir, may I speak? Wait a second, I just need to wrap my head around this information right now. So is it like something के are criminals allowed in DA department or something? ऐसा कुछ है? Date is 23rd July 2022, which was
prior to the establishment of DEA. Sir, may I speak? So there is in no my defense? NOC procedure, there is no background Wait a second. verification, nothing? Can someone open the MDT and check what all Diana Reason has done so far? Yeah. Sure, I will. Providing. हाँ भाई DEA के बस पे है पार में गया Or should I? Let me just have my medication. Oh, I'm so sorry. Need it right now. Sir, can you give कोई me नहीं, that कोई नहीं, medication to me as well? मेरे को भी लग रहा है जी सुनने का जरूरत पड़ेगी. Okay. You have to get a sniper shot for that. What did you say, Veer? कह रहा है you have to get a sniper shot for that because I got a sniper shot and because of which I got the medicine. Yeah, Oh, that's his okay. recovery medicine, not prescribed. yes bro हाँ please बताना जरा and check नहीं officer आना please check if there is any before she joined the DEA department. Checking. yeah गया भी DEA बाहर Sir, I have a question to you, Judge Charles. Can you answer me थोड़ा सा हाँ May I speak in my defense? कर लो बोल लो. सर आपका डिफेंस तो हो गया आपको तब केस करना था तब डिफेंस होता ना Sir, क्या डिफेंस I mean regarding like my one sin that I committed. it's fine. Judge Charles, can I make a statement over here? इनको पहले ये कुछ दिखा रहे हैं इनको दिखाने दो फिर then make that statement. सर वो जब तक ढूंढेंगे तब तक वो थोड़ा I was waiting for your go ahead, sir. No, go ahead. Criminal possession of firearm class 1, possession of stolen property, felony possession of controlled substance, kidnapping of government employee, vandalism, possession of stolen, obstruction of justice, reckless evading. bro Diana Reese. Sir, I would like to highlight and repeat felony possession of controlled substance. Controlled substance. That means drugs, maybe. Yes. Yeah, in large quantity. In large quantities. oh bye Because that's felony, right? That's felony. Not misdemeanor. More than 20 is felony. बोलिए ऑफिसर लोग. Sir, I just want to know, since you are like my superior, my boss. So of course I was not there when this department was being what we say brought up in, since I was having a misconception of federal agency as well. Like you were one of the maybe the initial founding bodies who established DEI, according to me. Sir, I just had a similar question. I don't know. I never got this answer. Maybe today is the right thing to ask. A person who was initially being suspended and later on, I don't know whether he resigned or being suspended from PD. He was suspended. Becomes he become the chief of DEA, and like having similar incident. I wanna know, like as I came to know, like Bittuji. Bittuji had criminal records. Like initially, since department sir आपके verification के through ही गया होगा sir, तो I thought कि an NOC would have been provided by any of the superior bodies like here or either from you, like आपने because मारे भाई initial भाई department में sir मार आपको दी किसी से bro To the chief. to the chief. Shall I answer, sir? To the chief of DEA. Ex-chief. Yeah, I just had that doubt now, like chief of DA would have been appointed by your presence only na sir. That's why I was asking this. एक सेकंड आप शॉर्ट में बताओगे आपको क्वेश्चन क्या रहा.
सर मेरा क्वेश्चन ये था, जिस तरीके से इनिशियली जो फाउंडिंग ऑफिसर्स थे या एजेंट्स थे डीईए में, लाइक बिट्टू जी, हमारे चीफ जो थे पुराने, साइफर जी, जैसे जो वो सस्पेंड हुए थे अकॉर्डिंग टू ऑफिसर रॉबर्ट स्टेटमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू राणा स्टेटमेंट बिट्टू जी भी इनिशियली वो थे, क्या कहते हैं, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे एज बीइंग टोल्ड टू अस। सो जब डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो रहा होगा तो ऑफ कोर्स सर आप हमारी सुपीरियर बॉडी हो, आपके साथ कोई और भी होंगे, तो आप लोगों ने कुछ तो एनओसी प्रोवाइड की होगी जब ये डिपार्टमेंट सेट हो रहा होगा, एंड सो दिस क्वेश्चन हैव नेवर बीन पॉइंटेड इट आउट, क्योंकि बिना आप लोगों के अप्रूवल के। Yes. I would like to Okay, answer go this. ahead. The NOC I'll add regarding after you. yes, the After NOCs you. and regarding Cypher was already given, discussed, and वो time पे Cypher had only one or two member जिनके साथ भी जिनका भी NOC check हुआ था, and he was informed that there should no criminals or anyone with a MDT record involved in that department. क्या who बाकी was everything with him? procedures were done. Cypher के साथ I don't लीलू remember. प्रधान सर थे initially So yeah, so लीलू लीलू प्रधान सर जी के ऊपर भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे? No. Okay. और सर उनके साथ गुल खान भी गए थे एंड अच्छा हाँ, गुल खान नहीं was नहीं there, सर yes. सर I want to answer that question. May I speak? No, no, एक wait a second. I'll just add to it because the Okay, question okay, has sure, been sir. raised to me as well. So Sure, Officer sir. Cypher was suspended from जी सर. LSPD, right? He was suspended from LSPD. Mayor and I were there. He approached us that he wanted a new department to specially focus only on drugs. Of course. Just because he was suspended from LSPD, he proved to us in the conversation and the reports that he had then shared, he had back then shared with Mayor and I, that what's his plan to go ahead with it. So what we decided to provide Officer Cypher all the things that is necessary, because we at that point thought that yes, there is a lot of drugs that's happening in the city which the PD was not able to control back then. Okay, agreed. And that is the reason why we gave Officer, your chief, Officer Cypher, all जी. the power to hire, and there was no Overwatch, no PD, nothing, because he wanted it that way. No Overwatch, nothing, and even we were not the Overwatch. The only people they were used to was to report to the mayor and I. So we So did not get involved in the recruitment process because obviously I have 10,000 things to do. But of we course. had clearly drawn out and told him that please no illegal activities. As Of simple as course, that. agreed, sir. And when did PD find it out that Bittu Rana was being involved in any of the criminal activities? let me answer that. And Yes, when sir. coming to when he was involved, we informed this same thing to Cypher long back, and he said it is cleared. I don't know how it got cleared. And when coming to NOC, let me tell you something. आपका एक business नहीं है. Even if it was a business owners request or interviews, HR did whatever recruitment process. I they think asked Rana, NOC. sir, your chief SSP chief already mentioned regarding the NOCs and everything. So we should not go to the point of I'm just business saying. over here. I'm Sir, just sir, saying. let's not waste the time of jury and judge and ours like by just your saying statements over here. I'm saying NOC should, if you need an NOC, you should have been requested, not we proactively provide. That's what I'm saying. Rock. Yes, sir. What is the procedure to get inside DA? He Do you needs require to. NOC? I know in my tenure, I don't ask for NOCs. I ask for a why? Like I have made that what we say So what is the like procedure. Yeah. Regarding the procedure, I asked for a resume. Yeah. If And uh-huh. do you check Yes. their background? Of course, if it's a resume, sir, our background would have been written on it. How How do you verify it Background as if the in person has been a criminal or not? like of course like after that we check their MDT as well. हाँ वही तो पूछा मैंने उनको कि तो वही तो resume में पूछ कौन रहे हैं। लिखेगा? That is what I'm asking you. Yeah, so that's the thing which I did. As I'm saying, I was being Okay, appointed right now. I think we've come a long way, and I think Yep. the last question
that I'm going to ask you is, Yes. give me a reason why I should not dissolve DEA right now. Give you a reason. So if you would get to know that I and my colleagues have been trying to rebuild the whole structure for DA, which we believe initially we were having too many issues, due to which we were also unable to provide out all the necessary proofs, would I say, instead of getting reports like Rana was saying, uh, to the necessary department like DOJ, and would have carried out proper, what we say, this execution of certain operation with the help of PD, which was not being dealt earlier, can easily help us and the whole city in order to reduce the drugs. Because there one point which we all are forgetting, and Judge, I don't know whether you are aware of it. From the initial days of the establishment of DEA, both the departments, PD and DEA, were having certain kind of irregularity between certain natures, like respect amongst each other regarding information sharing. And what I would propose, if you help us out, like not help us out, I would just simply request you, if you just allow us to comply with our duty right now, we would be providing out all the necessary steps which are being required in order to have our department excel in all field, not only in पीडी की drugs दूरी को but तुम in दूरी मान something रहे else as well. Okay, I'll just give my verdict now. I have the proof. Anyone has any other questions, or should I move ahead to the जाओ verdict go. Sir, from the Yeah. panel? should I clear my point, like the allegations which are put on me? Those are No, not no, 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 allegations. no need, no need. And we are done with it. That's Okay, a long sir. time. Thank you. Judge Charles, I have a point to say. Yeah, please tell me. Judge Charles, sorry if like मेरे opinion से किसी को कुछ like harm होता है, but I have an opinion to make. I think sure. the jury you have selected is biased. Okay, thank you. I have a proof for that now, so that's why I'm stating it that. What is the proof? The proof is I got a recording from someone. The high commands of PD hates rock, so that's why before also PD has never not helped us in one situation also. I have like all the recordings and all. Do you think I don't have recordings of you guys saying stuff about PD? But we are not the jury, sir, na, right now. They are like our departments on the time, so that's why I'm Do you saying. think I should? Do you think I should not dissolve you immediately after saying shit about your colleagues? Maybe not the department, the person too, who said shit. Why not the department? Because the department. Because it's should being not- cultivated. Because it's being cultivated. I don't think so, sir. We have our own brains and all. अगर एक बंदे का कोई decision होगा, he should go with it, but not the whole department. But you do understand that the whole panel cannot be wrong, biased. There can be one or two people which might be. It was my opinion, sir. मेरे पास recordings and all है जिस चीज मैं में पूछ तो लोग रहा ये हूँ बात कर मैं आपसे तभी पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि पूरा पैनल में सब बायस्ड है? For me, yes. क्योंकि उन्होंने बोला था हमारे high commands because should I explain the situation to you? It's okay, Professor. There's no point. It's let him give out. Yeah, no, please explain the situation to me. I want to know. Okay. एक दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ था without any like notice and all. ठीक है. In that attack, PD was also like seeing everything. हमारे agents को उठा के Legion पे लेके गए थे. Legions पे they were having a massacre of like our agents. Can you tell me the proof in the summary, please? Proof I was having a video recording and of everything. My bodycam was off. I was off duty and I was like standing near them. और मैंने उसी time PD को inform किया. When you say them, can you please be specific? There were specifically two gangs, Red Mafia and Balas, at that point of time. Okay, so you're saying Red Mafia, and who is the person on recording and what have they said? I have the face, but I don't have the name. So I have to like cross verify with someone in the PD who know, yeah, or like have a verification of his face. But Is that person Robert. Okay, Robert was saying what?
ओके, मैं वही आपको बता रहा हूँ एक-एक चीज़ उसके रिगार्डिंग। उस टाइम हुआ क्या, मैंने कॉल किया नहीं, आप मुझे प्लीज ये बताइए रॉबर्ट क्या बोल रहा था? आई वाज ऑन अ कॉल विद रॉबर्ट कि रॉबर्ट नहीं, मैं आपको स्टार्ट थोड़ा सा पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। पहले वो लोग लीजन पे थे, लीजन पे पीडी हमारे सामने आई, हमारे सामने दे वांट टू स्टॉप द लाइक उनको पीडी हैव हैड अ कॉल विद लाइक सीनियर हाई कमांड। उनको एक कॉल मिलती है रॉक कि ने क्या बोला रिकॉर्डिंग में, आप मेरे को ये बताएंगे प्लीज इन शॉर्ट? मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक पहले उनको रॉबर्ट जो था मेरे सामने, उसको एक कॉल आती है कि इनको बोलो कि लीजन पे मत करे, जो करना है डीए ऑफिस पे करे। दिस वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। फिर उन लोगों ने बालास को आस्क करा कि गो टू द डीए ऑफिस। डीए ऑफिस में मैसेकर हो रहा था। आई वाज ऑन द कॉल विद रॉबर्ट, इगोर, बोथ ऑफ देम। आई क्राइड, आई बेग्ड देम कि हमारे एजेंट्स को बचा लो, दे आर हैविंग अ टेररिस्ट अटैक, एक आप आ जाओ, सेव देम। दे हाउ सेड डू यू नो हमारे इट वाज अ सीनियर, टेररिस्ट अटैक? because there are 20 people attacking on department with the SMGs, ARs, It and was the an open katanas. shootout on us, Judge. Yes, sir. Do you know the definition of? Do you guys know the definition of a terrorist attack? It was a government office and they were shooting on the government My office. question was, do you guys know the definition of a terrorist attack? Do you guys know who is a terrorist? I think if a government body is A attacked by multiple person people, who does not No. fear any government entity apart from their association is a terrorist in front of You're government. absolutely wrong about that. A person, exactly. When the whole city is at a threat, when civilians are at a threat, the job Okay. that you have chosen, guys, it is there where there will be threat on you guys every single day. सर पीडी पे there अटैक को are फिर टेररिस्ट अटैक आप मेरी बात सुनो, नहीं माना गया पीडी पे अटैक को टेररिस्ट अटैक. There सर have been माना times गया when है, PD. स्वॉट की 20 यूनिट How do you लिखी know हैं that? हाँ तो सर SWOT मेरे की 20 सामने यूनिट निकली हुआ है. एक सेकंड SWOT की 20 यूनिट निकली है, तो how the fuck can you say it that this was there, that we called it a terrorist attack? मेरे को राणा सर ने अपने मुंह मेरे मुंह पे बोला है डीए वाले पागल हैं क्या ये उन्होंने जो बोला है रिटन में, आप मेरे को रिटन में बताओ कहाँ लिखा है टेररिस्ट अटैक? either you want to listen or you don't want to points listen. हट रहे हैं, points I'm हट रहे हैं. telling I am you asking straight you. up. Rana sir I am said to ask. me, My question to you is, I am asking you in written, where have we classified it as a terrorist attack? I do not believe on words. leave the Okay, terrorist okay, attack. okay. Leave the terrorist वही attack. मैं कह रहा हूँ. Why should I leave the terrorist attack now? Yeah, Why should I leave I'll the tell you, terrorist I'll tell attack you. now? Yeah, I will. I अभी will सर give एक you मिनट, the एक मिनट, अभी reason. सर I'll एक give you मिनट, the एक मिनट, reason. I'll give एक you मिनट, the अभी reason. सर प्लीज, अभी सर एक मिनट जाओ. चाल सर, सॉरी, मेरे मुंह से अगर टेररिस्ट मैंने रॉन्ग वर्ड चूज किया, आई एम सॉरी अबाउट दैट. देयर वाज अ अटैक ऑन अ गवर्नमेंट. Do you guys know that I stopped PD from assigning people as terrorists? Do you know how much jail a terrorist gets? Okay, that was It is very no. Listen to me. It is very easy to throw around the word terrorist when you don't even know the meaning of terrorist. You guys are in a job where your daily lives are at risk. If you do not like it, leave that job. मैंने कभी उसकी नहीं. No. He's saying ना government official के ऊपर वो होता है, रिस्क होता है, गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर रिस्क होता है, तो उसे टेररिस्ट कहते हैं. Because the government body protects the city, and if the first line and the last line of the defense And exactly have my been point. taken out by a certain amount of people, sir, If there is an attack on the city to create terror in the city, that person and the person who's causing it, those are called terrorists, not on the Okay, government sir. So body. what do you mean by for example, we're not calling ourselves a federal agency, leave that alone. A government agency, 10 officers on gunpoint, cuffed, and they were sliced, or they were using melee और attacks on publicly them. assassination of the Openly, publicly. What do you mean by that? What did you guys You do? explain me the situation No. now. अब आप No. situation explain. I'll get in deep into the situation. Listen to me. First of all, you do not ask an explanation from me. One. Second thing, I I'm will just only trying to give you an understand, sir, explanation. क्योंकि मैं- Listen to I'm me. trying to get Now answer you to listen to me. Listen to me, Officer Abhi Kartos, or I'll suspend you right now. I will not just basis 10 seconds of a particular situation. I will not take a decision. I have never done it. I always get into the depth of a particular situation and then I take a decision. If you just tell me that there are 10 people who were sliced off, what did you guys do? I would like to get into the depth of that first. What led to that situation? Yep. So if you give me the 10 seconds of a situation, then there's no difference between you and Weasel News. Okay.
एक मिनट रुकना प्रोफेसर सर. मैं second thing, I'm trying to educate myself, sir. I'm sorry if you feel that I'm just questioning you. I'm really If you sorry. need I'm just education trying. right now, first, no, listen to me. If you need education right now, resign from DEA immediately. No, You I'm are just at a trying to pedestal. ask you You are part of a because government body. sir, If you need High education, you Command should of resign Police from DEA. Department says something else. You are telling me something else. I'm just trying to be on a main ground where I Tell me. know the good and the bad of the both. Okay, I'm just asking you one question. When I Yeah. came to PD, when Rock was kidnapped, I came to PD, asked for their help. I did Hmm. not enter their premises. I was told by Rana sir, ये डीए वाले पागल हैं क्या, ये पीडी में आ जाते हैं. एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, ये डीए वाले पागल हैं, पीडी में आ जाते हैं, पीडी पे गोली चलवा देते हैं और फिर वहां पे हम लोग उसको वो 99 का कॉल बना देते हैं. Do you have any proof of it? एग्जैक्टली मेरा बॉडी if you स्कैन हुआ have a था सर proof, उसी वक्त. no. If you have proof of it, I will suspend Officer Rana immediately. I will give you the proof, sir. मेरे पास कुछ Great. प्रूफ है, मैं मेरे उसके पास उसके बॉडी कैम रिगार्डिंग का बात पूरा करूँ क्या प्रूफ सर? है, मैं वहीं से निकला था, उनके सामने से निकला था. And I And overheard it as well. It was and what very about the shocking proofs to hear against that DA? from sir. You have proof against DA, sir. I am ready to get suspended right now, but I need to understand on a plain ground that like even if we अभी are सर एक taking a सेकंड ना, अभी decision on सर a एक whole सेकंड, department, एक it सेकंड is अभी why सर, is सॉरी PD प्लीज. versus DA all the time. I'm just asking, हमारा डिपार्टमेंट क्यों नहीं हो रहा सर? एक मिनट ना, एक क्या ये मिनट, एक पीडी मिनट, एक वाले, मिनट, ये सॉरी डीए सॉरी क्या सॉरी, कर रहे हैं, अभी ये सर, पीडी अभी सर वाले क्या एक कर रहे मिनट, हैं, ये सब नहीं होना चाहिए ना अभी सर. सर एक मिनट, एक मिनट. जैसे सर नहीं चाल नहीं, सर क्यों आपने नहीं कहा होना अभी, चाहिए? एक मिनट ना सर प्लीज, मैं एक चीज बोलूंगा बस. आपने हाँ जैसे जी, अभी कहा कि आपको अगर प्रूफ मिलेगा आप राणा सर को सस्पेंड कर दोगे, राइट? जी. आपने ये तो नहीं कहा ना कि मैं पूरी पीडी सस्पेंड कर दूंगा, पूरी पीडी को हटा दूंगा उसी टाइम पे. Obviously. हाँ. एग्जैक्टली, सो दैट्स माय पॉइंट कि अगर मेरे ऑफिसर ने किसी ने ये चीज कहा है सर, सस्पेंड दैट ऑफिसर राइट नाउ. Obviously, I will suspend that officer. एग्जैक्टली. मैंने कब और कहा कि दूसरी मैं चीज, मैंने कब कहा कि मैं DA सस्पेंड कर रहा हूँ? वही मैं आपको और चीज बता रहा हूँ. पीडी पे उस टाइम पे मेरे पास एक एक प्रूफ है कि जब डीए पे अटैक हो रहा था, मैंने इगोर सर और क्या नाम है अपने रॉबर्ट सर, दोनों को कॉल करके बैक किया है कि सर प्लीज भेज दो अपने ऑफिसर, देयर इज एन अटैक, प्लीज आप हेल्प कर दो. ही सेड कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे हाई कमांड ने क्लियर मना किया रॉकी हेल्प करने से. दिट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. Your officers from DA office. Who was the one? I was the one, right? क्या? And एक मिनट. जेट चार्ज Just let me मेरे ऊपर step. allegations है. हाँ मैंने Just बोला sir, था. if you have permission, ठीक है. may I Please, speak? I need बड़ी कम permission to बड़ी explain कम you. Reason is ठीक that है. Just give आपको me मैंने minutes. Yeah. एंड बोलो. यहाँ सारे ऑफिसर्स एग्री करें. सर एक बार नहीं, हर बार हमको 911 आता है, सिचुएशन कहीं और शुरू होता है, ऑफिसर्स कोई सिचुएशन में होते हैं, पीडी के अंदर घुस के गेट्स गलती से अगर बंद है या ओपन है, पीडी के अंदर घुस के गोलियां चलाई है, एंड दैट सिचुएशन वाज टर्न्ड इनटू विद 99. एक बार नहीं तो 2-3 बार हुई है. एंड 19 हमको 911 कॉल्स आते हैं, वी गो देयर टू हेल्प, बट हम देखते हैं लीजन की तरफ से गाड़ियां, पीडीए की गाड़ियां सीधा पीडी के अंदर, एंड दैट इट्स लाइक ए कैवलरी गेटिंग कंप्लीट गैंग्स इनसाइड पीडी. And in that we have lost our officers, we got casualties. मैंने ये बोला था ये पागल है कि यहाँ क्यों आ रहे हो, we are responding, ये बोला था मैंने. हम एक मिनट आना मैंने सर. ये नहीं बोला था कि टेररिस्ट अटैक, मैंने ये बोला था लीजन ने बॉम्ब थ्रेट्स दिए, 6 बॉम्ब्स लगे, एंड यू आर गेटिंग द कैवलरी इनटू द पीडी. मैंने बोला था सर, आई डोंट नो, मैंने बोला था because multiple times they got the situation inside PD garages into PD reception. Can they deny PD reception से ये फायरिंग की है क्लास 2 की, जबकि सामने से Can I say something, Officer Rana? And everyone present in this courtroom. What was the purpose of getting of this meeting? I understand sir, my bad, sorry, but allegations कर रहे तो उनका गलती अभी बोलना चाहिए था ना सर. हम ये किए थे. आज आप ये कह रहे हो कि अगर आपको कोई आप पे कोई उंगली उठाएगा तो आप उस पे भी उठा दोगे? ऐसे नहीं सर, अब पॉइंट में है स्केल टू टेम्पर, क्योंकि मेरे सामने खड़े अभी बड़े बड़े आदमी खड़े हैं. everything and every time we get blamed, हमको हेल्प नहीं करती है. And you know our chief कितने बार हमको बोले कि जब भी आते हैं उनको हेल्प करो. ऑफिसर राणा, मैंने अभी क्या बोला? My bad sir, I'm sorry, I'm keeping Rana sir, relax, please. Robert, you can sit down as well.
again, last question. As I was telling 15 minutes ago, is that why I shouldn't dissolve DEA? Please tell me. Sir, do you want me to repeat it? Please do. Sir, it will be difficult for me to make that statement again. Try to understand. ऑफिसर रॉक, आपको रोना आ रहा है या हंसी आ रही है मुझे समझ में Sir, Sir, can we break for like 5 minutes if you don't mind? Yeah, after let's all let's this have a thing? break. Let's have a break for 5 minutes, please. Please. Thank you. Thank you, sir. Can I see the panel in the chamber? Yes, please. So this is locked, sir. खुलवाओ भाई. Sir, can you open the door? That's हाँ, अंदर जाके चाय पी लो भाई, चाय पी के पार्सल बन जाओ, हो गया। कॉफी पी लेते यार। हाँ, शांत हो जाओ पहले तो, सारे शांत हो। रॉक से गिर रहा है। रॉक से मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है? है क्या रॉक से? लुक, बताओ, सुन रहा हूँ। एट लास्ट ये सब छोड़, ठीक है? बोल दो कि DEA एंड SSP के बीच में कुछ भी हो, वो हो गया, जो हो गया वो छोड़ दो। Why we are separating the departments? After all, we are a government servants and working for the government, and we are people के लिए help कर रहे हैं, we are trying to save them. ये बोल दो क्लोजिंग स्टेटमेंट। अरे वैसा कुछ नहीं है यार, देखो सिंपल सी बात है। Judge is the one taking the final decisions. हाँ वही, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट बोल दो बस। जी सर, बताइए सर। हो गया? क्या हो गया? सर 5 मिनट हो गए? नहीं। हाँ ओके, मतलब 5 मिनट सुकून से भी ना बैठे सर, इतना सब सुनने के बाद। चाहते क्या मेरे को, मतलब मैं कंट्रोल तोड़म तोड़ा, इतनी तोड़म तोड़ाई। कंट्रोल करके आता हूँ थोड़ा। यार मैंने तो चालू भी नहीं किया अभी। चालू नहीं किया, लो हमारा हो गया इधर। आपने मशीन घुमा ली है? कौन सी मशीन? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें क्या बोल रहे हो मशीन घुमा ली इसको? You know. क्या you know? What I know? क्या नो मतलब? अरे मशीन अभी घुमाने का मौका ही नहीं दे रहे हो यार तुम लोग। घुमा मशीन घुमाओ। अभी थोड़ा बात तो कर रहे तुमसे, तुम्हें मशीन से क्या मतलब है? यार मेरा डिपार्ट क्या बोलूं भाई? अरे भाई उनके पास लीजन के रिगार्डिंग क्या प्रूफ है? ट्वीट। See, we can't question this actually, क्योंकि हमारे खिलाफ है यार। नहीं हम ड्रग्स के अलावा बाकी सब कुछ करके दे रहे हैं उनको। नहीं, हमारी खिलाफ नहीं है, हम ही ने तो एविडेंस प्रोवाइड किया उन्हें। क्या बोले अब बताओ? हम ही ने तो एविडेंस। आज को भाई डिपार्टमेंट बचा दो, पीडी में डाल दो हमें, है रॉक सर? नहीं भाई, पीडी में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, आप लोग चाहिए। आई विल बी हैप्पी एज अ पब्लिक डिफेंडर अगर कुछ हुआ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि ये जो चीजें चल रही हैं कि हम दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन उनको, कल हम जाके उनको MSTD का जो उन पे हो रहा था, बट ये केस में नहीं बोल सकते ना कि फिर बोलेंगे कि ड्रग्स रिलेटेड नहीं, वो भी हम ही दे रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन। हम ही दे रहे हैं वही भाई, हम अंडरकवर जाके कर दे रहे हैं, हम उनके रेडियो पे घुस गए, मैं और विजय। क्या बोलूं अब मैं रॉक सर, मतलब लिटरली मैं अपनी टोन डाउन करके वॉइस जितना बोल सकता था ना उतना बोला इनके सामने, जज चार्ल्स के सामने। आई हैड अ लॉट टू से। अगर मैं बोलूँ ना जिस तरह से मैं और बिट्टू जी डिपार्टमेंट में है, जो बिट्टू जी का केस ला रहे हैं, जरीन जी का केस ला रहे हैं, डिपार्टमेंट सेटअप होने के पहले हैं, और एनओसी तो ये रेड माफिया वालों को भी देते हैं। खोलूं मैं पत्ते फिर? पॉल शेल्बी 15 दिन से क्राइम नहीं किया, एनओसी है उसके पास, सिविलियन है भाई। कोई सुनिए भाई, कोई सुनिए, अरे द गवर्नमेंट पास मैं फिर पत्ते खोलूं? रेड माफिया में होके दे आर डूइंग ओपन शूटआउट्स एंड दे आर अ पार्ट ऑफ अ वीजल न्यूज़, दे आर अ पार्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग एजेंसी। प्रशांत मेरे बाद तुम ही हो चीफ, चिंता मत करो। क्योंकि सर मैं पता शांत रहता और प्यार से बात करता हूँ ना,
इन इसके लोग लिए को तुम पता ही नहीं तुम रहता कि ही मेरे पास चीफ क्या-क्या हो पॉइंट्स है। तुम ही चीफ हो बे नेक्स्ट डोंट वरी मतलब हद होगी, मेरे पास पॉइंट्स इतने हैं ना, बट कहते हैं फिर ड्रग्स से रिलेटेड नहीं, मेरे को फिर ड्रग्स से रिलेटेड करना भी नहीं है। आराम से बाहर तक आ रहा हूँ। अरे फायर थोड़ा गन का शॉर्ट गाइस आई लव यू मैन आई लव यू शॉर्ट गाइस। क्या शांति से खड़े रहते हो, कैसे रह लेते हैं? हाँ वही। शॉर्ट गाइस वी लव यू मैन थैंक यू। we need your equipments we need you in DA। जरा फ्लैश फेंकना की तरह। जरा झुक के अरे रुको ले एक पर DA में आ जरा जाओ। फ्लैश एक फ्लैश फेंकना जरा। टमाटो ये सही। अरे गीली हो चुकी पूरी बस। है जी सारे पसीने से। हो गई क्या जूरी आ गई क्या ऐसा वापस? नहीं किया आपने? हाँ आए तो बताना। हाँ वैसे न्यूज़ भाई, क्या न्यूज़ है? लेटेस्ट न्यूज़। क्या लगता मजा आ रहा है तुम्हें विजिट न्यूज़? अरे बहुत मजा आया आज तो भाई आज तो ओए होए ये होते न्यूज़। देखो मैं कह रहा हूँ अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट को कुछ हुआ विजिट न्यूज़ वाले भाई तो तुम्हारे लिए हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के देंगे। हाँ एक सर, क्या तुम्हें क्या ईएमएस वीएमएस सबका इन्फॉर्मेशन इधर से उधर मिलेगी तुम्हें। इसलिए तो यहाँ खड़ा हूँ मैं। भाई बस पैसे ज्यादा चाहिए चीफ को सिर्फ रॉक थोड़ा और अंदर घुस जाओगे ना मजा आ जाएगा एकदम। घुसा दो आके तुम कल तो घुसा। एक और घुमाओ और ऐसी बातें कर रहे हो भाई आपस में घुसाने की। हाँ मुझे लगता है बात चल रही थी। रॉक के चॉइसेस बदल गए हैं। चॉइसेस तो मेरे हर जगह हर तरीके से अलग बदल जाते हैं टाइम आने पे। हे भगवान। अरे रुको मैं वो तुम्हें बॉडी कैम का देखता हूँ पुराना से लगा रहा हूँ। देख तो अभी कार्तूस अभी कार्तूस वो उसका निकालो बॉडी कैम रेडी रख। क्या हो गया? अरे उसका बॉडी कैम रेडी रखना पुराना का तो बोला वो। अरे नहीं कर सस्पेंड करेगा ना करने दे सस्पेंड करने दे देखते हैं हम भी। कौन सस्पेंड हो रहा है? अरे वही कोई नहीं, अरे शांत रहो। रॉक सर आना जरा। क्या हो गया है? एक मिनट। अरे बीन को मार अभी ऑफ द रिकॉर्ड है, अभी टेंशन मत लो। वो बीन को मारने नहीं। ए कहां पे? बताओ आ रहा था आउटसाइड ये हॉल का। वही आओ जहां पे थे सब वही समझ में आ रहा मुझे। भाई मैं शांत बैठा हूँ तुम लोग पता नहीं क्यों उठ रहे हो भाई। वही दैट व्हाट आई एम सेइंग। हमें पता है भाई देखो उनकी वर्डिंग स्लो और उन्हीं को तोड़ो वहीं पर जैसे उसने बोला करेक्ट रिपोर्ट तो भाई मैंने कहा हाँ भाई क्या बज रहे हो तुम? अरे 1 वर्सेस 8 हो रहा है अंदर। वो भी नहीं, उसने बोला ना कि राणा को सस्पेंड करूंगा। अबे तो पूरा पीडी नहीं कर रहा था, पूरा डीए कैसे करेगा सस्पेंड हमारी एक बात पे? बात तो सही है बात तो सही है। आप लोगों की सही है बट फिर वो सिचुएशन देख लो ना कोई कैसे हो रही है। नहीं देखो Negative way में हो रही जज को लेने दो डिसीजन। अभी आप लोगों ने बहुत कुछ चीजें बोल दिया है ठीक है। इट्स फाइन चिल आउट जस्ट कूल डाउन कोई यस दिक्कत नहीं देख लो। व्हाटएवर द डिसीजन करवाओ भाई राणा को सस्पेंड करवाओ। लेट्स गेट द डिसीजन डिसीजन के बाद देखते हैं क्या करना है क्या। डिसीजन के बाद देखते हैं सुनो अगर डीए और डीईए नहीं है बैलेंस बन जाएंगे भाई। चलो वी गो डाउन टुगेदर गाइस। हां पीडी और इधर प्रशांत इज द चीफ। हां बेंच और एलेक्स बस भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर बढ़िया। हम दोनों का अलग ही चलता। अच्छा स्वॉट ऑफिसर्स। हाँ अगर कुछ होता है डिपार्टमेंट का तो पीडी का ठेली लगा सकते हैं क्या हॉट डॉग की? एलेक्स बस ठीक है दे दो ना, इतनी परमिशन तो दे दो भाई। मैं तो खुदाई कमांड वालों के भरोसे चल रहा हूँ। वो बोलते कल मैं खुद रेडी करा दूं बाहर। डीओसी ला देते तो क्या बोला? बैकअप रख के बैठे तुम लोग। बैकअप नहीं बहुत है भाई। आपकी ऐसे तो भाई लग रहा है रॉक भाई से घर वर खरीद लेंगे कुछ। बहुत बैकअप है हमारे सी कर पास। देंगे। मैं एक मिटा के सी कर देंगे। दूंगा मैं। फुल सपोर्ट भाई फुल सपोर्ट। हां फुल सपोर्ट। टेंशन अगर डीओ SWAT X DEA। ओके गो बैक टू योर पोजीशंस। आ गया क्या? या पोजीशंस। Units please assemble back in the court please. Ask them to get to the normal positions. Hello? DEA units
please be back in the court? Yeah, back. Get seated. Okay. चलो भाई. एक सेकंड. Where are the rest of the players? थोड़ा भाई थोड़ा प्लीज ब्रो अरे ये नहीं हो क्या ब्रो बालाज बन जाएगा बालाज सब हाथ ऊपर करो. लाइक डेनर यूज Okay, I guess everyone is able to hear me. Yes, sir. Heads Perfect. Basis the evidences which were hardly showcased to me, basis any proofs which were hardly showcased to me, basis only and only things that you guys have said, everyone has said, and what happened today in the courtroom, what I can see is that the DA department is not fit to operate on their own. And that is the reason why I have decided to dissolve the DEA department, because we cannot make further investments in one department which has criminals, ex-criminals, where people from that department have left and joined criminal organizations, I'm at N2, guys. where multiple things have happened, and there are constant complaints that, you know, from both the sides. I'm not just saying that DA that okay, DA did this or PD did that or this happened or that happened and so on. And we do not have the funds, because there are not a lot of taxes that we collect from civilians. We do not have the funds to run a department, let a department run solely. So DEA department will be dissolved. Anyone who has been part of the DEA department, however, you guys can interview for the PD department now. You guys will get a direct interview to the PD department. These guys will be able to take you within PD, and then I think a joint effort towards removing drugs, or at least having an effort which makes a difference towards removing drugs, is something that will happen. One person which the PD department has called out, no matter what, they will not even interview, and has been blacklisted from the PD department, is Officer Abhi Karthos. So, Officer Abhi Karthos, you are suspended from the duties of DEA, which is no department right now officially. Officer Rock, I would request all the DEA officials to hand over their lethals, every single thing to the PD officials today itself, in a cordial manner. And PD officials, high command and everyone, I would request you guys to release and share dates with them today itself on the interviews that you can conduct with these guys, on getting them, if you guys feel that they can be in your departments, in CID or in any other department that you'd like, by within a week. Those need to be completed. Yes, sir. Sure, And if this is not done, trust me, I'm going to take action against every single one of you guys. It will be done, sir. Yes, sir. Okay. All right. The court is dismissed. Thank you so much. Please hand in your lethals to all the PD officials. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Come to DA office, sir. No need.
अच्छा भाई सब लेके जाओ यार। रन सर आप लेंगे क्या? Rock will come there. Will come there. I don't have नहीं दे रहे हैं या space. मतलब पीछे वाले को पकड़ा देते हैं। हम इस वार्ड वाले We'll take it in a proper manner. हमको records Guys, भी maintain ऐसे करने नहीं, don't hand over like this. PD आ जाइए आप लोग. PD आके दे दो प्लीज। आप लोग PD आ जाइए then. People from the just give me 1 second. People from Weasel News. You cannot release anything which is confidential. Yeah, we understand. Only the verdict. I will make sure that Weasel News gets shut down if anything that is confidential gets released. No, sir. Nothing except direct quotes, and the verdict is going to be out. Please do. And Officer Robert is your point of contact. Just show that report to him first, and then only you can release it. Understood. Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you. Can you give me a number? Yes, sir. Just can you give me a minute, please? Sure. ठीक है. What would be your My chambers. place? Contact me whenever the thing is ready. Huh? What would be your Sure. way to your place because I need to guide the convoy. So do we have something else to do today, or you're gonna? We are going back to MRPD to resolve the other issues. Okay. Officer Veer. Sure. Okay. So I need to inform the Yeah. other officers. Did you that's forget? why. No, I Did you remember forget that. what we discussed? Yeah, great. I did. Let's Okay. go. Officers, sort of officers, please. हाँ सर। Let's go. Don't get out till the time all the officers not there. Sure thing. Otherwise, we are into. Hope interview goes well and. So, Rock sir. हाँ। Ram sir. Got it. Oh. What about your plans? Are you shifting to the PD? PD? No. I am not here to give out interview to any of the people. Okay. I'm the person who gets offer from places. Yeah, I know. Yeah. So मैं किसी को इंटरव्यू देने नहीं बैठा हूँ. So I said it'll be a private. तो बोलते कोई चलो वो अल्फ्रेड ने जो वर्डिक्ट है कोर्ट का वो डाल दिया है या सर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं कभी. मैं पागल हो गया. रेस्टोरेंट खेल लेते हैं. Provision? Oh bro sir. रेस्टोरेंट खोल लेते हैं. बोलो. इधर आ. तेरा प्लान क्या है अभी? कुछ नहीं है. नहीं दे रहा हूँ PD को. हाँ? मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू PD. नहीं दे रहा? ये DEA ऑफिस क्या होता है? No, what does mean? 76 to the PD and I'll be handing out the badges and stuff. Guys, can we inform PD that we need to take our persons belongings from the DEA office? Let's first of all handle our official armory and lethal weapons to the PD, and then go to the DEA office for the final protection. Yeah, 10 for. Go to the PD first, okay guys? 10 for good. Move in a convoy, don't be away. So final statement here. Offices. Offices from DEA will be having interview. Final movement. क्या हुआ? The final movement चलो.
let the PD first department. Park the vehicle outside only. Outside. Not inside. We are not the DA officials right now. So boys, let's have the last. Boys, sooner or later, I have an offer for you guys. Stand in front of me. Sooner or later, I will have an offer for you guys. You will be contacted over your email. If you want to join, you can. If you want to work under me or not work under me, work with me. I don't consider people working under me. If you want to work with me, I'll soon will be able to contact you. Where I will train you from the core. From the core से train from the GM. अरे listen, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब कुछ लीगल मतलब जो भी अपना काम है वो खत्म करके फिर उसके बाद थोड़ा कपड़ा चेंज करके बैठ Then we'll discuss it. Last time DA office को bye bye भी बोलना है Guys, instead of DA office, कपड़े बदल कर chilling करते हैं and we'll talk about. Yeah, sure. We'll wait in the reception, no? Well, let's wait in the reception. Let's go. Sure. एको प्लीज हो रही है क्या बोलते हैं उसको वो ही हो रही है चलो प्रशांत सर कहाँ गए Prashant sir, I need a suggestion. See, actually, my main motto, as you know, to serve under the city and to serve the people of Los Santos. So I would mind going to the PD. So would you guys mind? Personal vehicles. Sure, Prashant sir. So would you guys mind if I go to PD or stuff? See, my main motto, my main motto is to serve people and serve the nation. इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कौन सा मेला लगा है बाद में बात करना छोड़ो पीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं डीए वाले नहीं कर रहे यार क्या मसाला लेने आया ना यहाँ पे अरे घूमने आए थे यार मसाला लेने में कोई मिला नहीं तो इधर आ गए सुन हाँ बोलो तो पीछे हाँ वो तो सबको दिख रही है आपके पीछे तो guys, I'm interested in going PD. डीए ऑफिस लगे नौकरी नहीं हुई है क्या बात कर रहे हो सर क्या हो गया बढ़िया है ओरिजिन हाँ प्रशांत सर थोड़ा साइड में आ जाओ हाँ वी आर ऑलवेज गुड एनीथिंग कोई भी डिसीजन हो वी आर नथिंग द डिसीजन इज फाइनल यू कैन नॉट अरे थोड़ा दूर जाइए ना पर्सनल थोड़ा पर्सनल बोलो विजय so the main motto is to serve the nation and to serve the people. ठीक है किसी डिपार्टमेंट का देना तो my motto is the same. So I would go for the interview if you don't mind. If you guys sure, mind why it, not? It's your personal decision. I yeah, have it's no my one to say personal no. decision, I but would also I try see for the all interview. of the PD DE department are against PD and no one is willing to go it. So I would just let you know that I want to join the police department. Sure, So, you are granted that permission for that. वैसे भी मैं कोई नहीं अब आपको permission देने वाला. no permission नहीं yeah. as a friend as a I think the end because I think my career can be improved by joining the I wanna take time.
Yeah, because I don't want to keep a full क्या stop to पीडी my इंटरव्यू दे career. रहे हो तुम लोग? Yeah, I'm going into professor. 20 दिन में जाने वाला है सब कुछ, बड़ी अरे सुनामी आने वाली है, रहने दो सब अरे त्याग दो। वो उसमें भी आ जाएगा ना पीडी, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, आ सब जाएगा। कुछ सब कुछ वापस से होगा पागल आदमी। नहीं Can नहीं we give a call to PD ASAP? नहीं ऐसा नहीं होगा, सब ऐसा ही होगा। Don't no one give the call to PD. They are busy with judge once they are back. हाँ मैं हम लोग वो एक ऐप खोल रहे हैं अभी। एक गन एक गोलियां बेचते वो हैं। करोगे? Good evening, sir. Sir, we are here to hand over the guns and our badges. Yeah, DA is dissolved and that's Charles told to hand over the DA materials to the PD members. चांदी leave the other. हमारी jobs अभी नहीं लिए guys. We have a time for that. ठीक है? So can we hand it over We to have you? some time period. नहीं सर एक मिनट दोबारा बोल, मैं ध्यान से सुना नहीं क्या बोल रहा हूँ। DEA is no more, it's dissolved. So judge said to hand over the DEA badges, SMGs and all the lethal and non-lethal weapons to you. Yeah, sir. That's why we are here. That's why we are here and I also need to speak with our PD officer. Okay, मैं एक बार highest ranking officer को बुला लेता हूँ। If possible, call Robert sir, no? Robert sir, okay. Yeah. Okay. Yeah, we are waiting for all Bittu ji, I actually decided not to keep a full stop to my career, so I would like to go to PD. Yeah, sure. We can go. Yeah, it's your personal कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो? Yeah, because it's a personal career and I can get more improvements and yeah. बोलना क्यों कर रहे हो ऐसे? 300. Thank you for your हाँ service. बोलो, thank you for your service sir. I will go into your office and do it. हाँ बोलो। तो भाई नौकरी छोड़ दी? मल्ला ये काम कर। हाँ बोलो। सर आ रहे हैं सर वापस? आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। हेलो। हाँ आ रही है बोलो। आवाज आ रही है, बोलो हाँ बोलो। अब आ रही है हाँ बोलो। क्या हो गया, ये ट्विटर में देख रहा हूँ मैं। Yeah, DEA is dissolved and it's no more. So thanks for your support and for your पर informations and आपको अभी things. जो बालाज का जो आप बोल रहे थे फिर उसका क्या? It's handed over to PD. Actually, we got an offer. रेडियो जो कॉल देनी है तो Actually, ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंशियल है, वो ठीक है, वो मत बोलो। नहीं सुनो. There's an offer that if officers from DEA wants to join PD, you can give interviews. So I had choice to go for the PD. I'll letting them also know to this thing. I'll call you and definitely thank you. Thank you for the information and thoughts you have done towards the DA department and thank you very much. I'll contact you soon. Stay tuned. Sure. Ma'am, is Robert sir available? रॉबर्ट सर हैं जी, बताइए। Actually, we are here to hand over the badges. योर नेम? Vijay from DEA department. विजय। And I also want to speak to Robert sir regarding the PD. Sure, I'll just give him a call. Like to Prashant sir, I'll be coming in 5 minutes to DEA office. हेलो सर, वो डीए वाले आपसे मिलने हैं रिसेप्शन। ठीक है सर। अरे सर, I had that call 10 for him. Is he coming? Yes, he's coming. Okay, sure. Direct to Prashant sir. 10-4, send it. I'll come in 10 minutes. I'll speak with Robert sir. 10-4, no issues.
will not stop my career was like if I get it definitely for at least 20 days, learn something, and again apply for the Soul City. I agree it's different, but हाँ सर रॉबर्ट सर डायरेक्ट टू रॉक सर हाँ जी मैं इक्विपमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली I need to speak with Robert sir. 313 Director Robert, could you please 25 at the reception? Yes. हाँ सारे लौंडे कहाँ चले? We are in the DA office. Where are you? I have pistol ammo and let me hand over this one. नहीं मेरी जेब फुल हो गई है, नहीं आया आधे सारे। DA बैच नहीं है? बैच आया but I didn't get मैं थोड़ा ले लेता हूँ। I'll give you the camera and ऊपर वो रिसेप्शन रिसेप्शन पे खड़ा हूँ नहीं दिख रहा ना। कितने पिस्टल आमो दिए? 5 5 and the camera. Radio I would buy on my own, so should I give it? Radio is okay, radio is okay, radio. प्लीज कम लास्ट Radio टाइम is fine. इन द मीटिंग तो मुझे क्या दे रहा? That's it, sir. 6 पिस्टल 5 पिस्टल। हाँ एक कप। You can check me, check it. ओके और कुछ नहीं ना? नहीं और कुछ नहीं। You can have a search. हाँ clear. It's okay. Yeah, it's okay, sir. Done. चल नीचे चल. We need to put this. सर इसमें कोई PD कमांड है कमांड? हाँ बोलिए। Actually, I would like to give an interview. Like, मेरे DA department, no one is interested, but I can't because one department is dissolved. I can't stop my career. There will be a meeting. Listen. There will be a meeting regarding this. After the meeting, I'll inform you. Okay, what is your name, sir? My name is Vijay. Vijay, right? There will be a public announcement. Okay, for the D officials only. Okay. Yeah, no one. Yeah. All right. Thank you. You'll be informed. When should we meet? Sorry? Can you repeat? D officer. Every unit available right now in the meeting room, please. 10%. I have handed over the PD. You guys can. The details now. Handed over. गैंग साइन कर ले यहाँ पे बहुत सही। सर डिपार्टमेंट बंद हुआ है पर हम मिलकर कुछ कर सकते हैं ना। नहीं कहाँ क्या कह रहा है बिंकी गैंग खोल ले क्या? चलो चारों सुपरवाइजिंग स्पेशल एजेंट्स और एक सीनियर सुपरवाइजिंग स्पेशल एजेंट प्रशांत फॉर द चीफ। चलते हैं सर चलो 42 चला जा बॉस सही की। मैं तो ऑन ड्यूटी हो गया भाई। कहाँ है मेरा एमडीटी रुको। हैं आतिफ सर आप अभी आगे पूरा सीन होने का बाद सब एजेंट्स आ गए, सब एजेंट्स हो गए। और कोई आखिरी सैलरी ले लो। सर को आराम। आखिरी सैलरी ले लो आतिफ सर। आखिरी सैलरी ले लो सर। चल ही रही है सैलरी तो। मैं सैलरी तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं अभी जब तक मिलेगी मिलती रहेगी। नहीं पूरा मूवी होने के बाद आतिफ सर आए। अच्छा अरे मतलब समझो मजबूरी होती है। उसका दिमाग का दर्द बहुत ज्यादा था। अरे रॉक सर का वो जॉब चला गया। एमडीटी देखो। अरे जॉब नहीं किया उनका, वो उनके पास 2 जॉब्स हैं। क्या जॉब है? पब्लिक डिफेंडर है डीओजे में। अच्छा अभी कान मराएंगे सर पब्लिक डिफेंडर में। सर उनके पास तो बैकअप है, हमारे पास तो नहीं है। क्या बैकअप नहीं है? सीधे जाएंगे बोलेंगे ब्रदर्स भाई आ रहे हैं हम लोग।
हाँ बोलो ब्रदर्स को। मैं नहीं तो चल रहा है क्या? नहीं मैं अरे रोक आ रहा है शायद। बे मैंने किसको पानी दे दिया? they said that they'll be having a meeting, then they'll be deciding what to do Sir, but regarding it's the already PD this one. 12:36. So No, I'm कितना saying beta होगा? regarding the PD this one. आई डोंट नो भाई, मेरा मन भी नहीं कर रहा उनके खिलाफ वो वाला केस भी करने का, कोई मतलब ही नहीं बनता अब, डीए ही नहीं है। हाँ मतलब नहीं है, मतलब केस वेस रॉक सर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं यार? तुम्हें 9:30 बजे बुलाया था, तुम बहुत लेट हो गए। सुन लिया ना तुमने? सो हाँ गाइस, सुन लिया मैंने सुन लिया। व्हाटएवर द थिंग हैपेंड, ठीक है। हाँ दे दो, एक स्पीच दे दो। हटो हटो एक स्पीच हो जाए रॉक सर, हटो हटो हटो। आ ही नहीं रहे थे, मना कर रहे थे आने के लिए, जबरदस्ती बुलाए ने। हाँ जबरदस्ती सर, स्पीच तो बनती है एक। Yes. So guys, whatever the thing happened, it was unexpected. But anyways, like we have to move on, accept our mistakes. अच्छा। Accept the mistake. You उनकी गलतियां भी मान लेते हैं, कोई नहीं, वो बायस थे। नहीं कंप्लीट करने दो ओए। हाँ अच्छा, सॉरी। Accept the mistake. We trusted the DOJ department. Exactly. Of the city of Los Santos. Back in your uniform, guys. Shut खोल के please. Department of Los Santos. Who आराम से claims to be नहीं non-biased by calling out the PD officials और who वही official initially बुलाए जो अपने साथ was वो है। having problem with our department. Exactly. But भी कोई नहीं। we being but guys, no, nothing like that, guys. And Chill out, yeah. chill out, Chill out, chill out, boy, chill out. Yeah. Chill out, guys. But we being super sweet-hearted, we ignore stuff. Super mature. Yeah, Super we mature. being super mature. सुपर क्योंकि बच्चे मैच्योर तो सारे पीडी का हाई कमांड से ले लिए। चैट क्योंकि बच्चे तो सारे पीडी का हाई कमांड से ले लिए, क्यों गाइस? हाँ सही बात। तुम So देखिए अभी आपके पीछे एक टीवी है, यहाँ पे भी कुछ वीडियोस बनेंगे। शांत हो जाओ गाइस। सबसे आगाज तुम ही हो। हाँ कार्टोस ओ भाई कार्टोस इज ब्लैकलिस्टेड। हेलो सर को ब्रीफ तो दिया नहीं आते सर। क्या बात? पहले हमारे डिपार्टमेंट क्लोज्ड हुआ है, इनके तो फायर्ड हुए हैं। दो अलग अलग सीन है, हमारे लिए डिपार्टमेंट वो बंद हो गया, इनके लिए बस फायर हुए पहले ये। इनको पहले फायर किया, सस्पेंड किया वे, फायर नहीं। एक ही बात। अरे ब्लैकलिस्ट किया भाई। अब ये मत बोलना कि टेररिस्ट वाला अंदर हो गया थे। अच्छा चलो एक कॉल करता हूँ, बोल देता हूँ बंदे आ रहे हैं, उनको संभाल लो। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा था कि गाइस यार माँ की कौन कॉल पे कॉल। यस हु इज दिस? बिल्कुल सही पता चला है, आगे बाद में बात करते हैं। कौन है? जोई बज रहा है। कौन? जोई सब बजेंगे आज, सब बजेंगे भाई। कुछ नहीं। हाँ यार, एक तो ये जोई बेबू भी नहीं है जो जोई को रिक्रूटमेंट करा के गई थी। क्या बोलूं अब? हाँ ठीक है। सो वेयर वाज आई? सो हाँ, we being super mature, super flexible, we ignore this stuff. I know guys, the way you were recruited in the department, I know your capabilities, you will excel in future, but it's totally up to you whether you want to join PD department or not. I don't mind, but guys, I just want to make out one statement to you. Ki if you are expecting me to join PD department, it won't be a possibility, because I am the one who take interviews, not give interviews. Exactly. Same. Yeah. So that's all guys. I hope you would have a bright future, and tata, sayonara. पॉलिटिक्स ट्राई करी आपने कभी? सायोनारा मेरा डायलॉग है। हेलो अरे दरवाजा खोलो बे। किसी के पास बैच चाहिए भाई। अभी पब्लिक डिफेंडर।
सामान किसको देना बता दो सर, किसको जाना है बस। अबे जैसे कि हमारे पुराने चीफ कहते थे, मेरा कद्दू करे पीडी में नौकरी है बिट्टू जी। मैं 10-2 और कोई बता सकता। अरे जैसे कि हमारे पुराने चीफ कहते थे, स्टेज नहीं खोल पा रहा हूँ। किसके स्टेज खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा। I think we need So this is my last call. This is अभी एक साथ देंगे, रुक जाओ रहने दो। अरे हाँ तो मैं अपनी चीज तो कंप्लीट कर लूँ। वहाँ तो नहीं हुई सब भाग स्टेज के ऑफिसर का तुमके। स्टेज खुल रहा है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं अभी आ रहे हैं, वो पीटी आई है, उसको सामान दे दो। मैंने दे दिया कुछ। तो पहले पीठबाजी हो जाती है, फिर उसके बाद पीडी को दे देता हूँ। वही अलग से थोड़ा जल्दी ले लो। हाँ जिसको जल्दी है जल्दी कर लो, फटाफट पहले कर लो। लाइन बना लो गाइस। मैंने तो रख दिया वैसे भी। मैं दे दूं? हाँ दे दो। क्या करें गाइस, आज भी कल कंटिन्यू करते हैं या आज करेंगे? Five 20 10:42 forever. Hope we meet somewhere else again, and thank you lot. Thank you guys. It was a short journey with you. एक साथ दो कॉल, किसी को भी दोनों की बात समझना है। अरे सब लोग आ जाओ, एक मीटअप करते हैं भाई, मीटअप जो है। जितनों का भी इक्विपमेंट है भाई। हाँ मैं दे दिया सर, वीडियो में आके दे दिया। बस सबको बोल दे बाहर आके, नहीं मैं लाया हूँ, वो तो करनी हाँ ठीक है। Guys, please submit your DEA badges and stuff to the PD officials waiting outside the DEA office. सब लोग उनको दो ताकि वो हैंड ओवर कर सकें। मैंने ना स्टेज में रखा था, उस स्टेज का लाइक एक्सेस नहीं हो पा रहा है मेरे से इस टाइम पे। You can't access ना, it's okay. हाँ I guess so। अरे रहने दो, स्टैश में ही रहने दो, you can't access the stash. Don't worry. किसी और का कुछ है तो प्लीज रखना। बस यही है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। रेडियो एंड फोन। रेडियो अरे आर्मर है। हाँ रखो दैट इज आर्मर का कोई इशू। तो सेफ्टी के लिए एक ये मिल जाएगा मेरे को, क्या बोलते हैं ऑफिशियल। अरे भाई कोई सुन क्यों नहीं रहा मेरी? क्या हो गया? लाइसेंस करवा दो एक बार। मैं कह रहा हूँ सब लोग चले गए। देखो लाइसेंस के लिए मैं बता देता हूँ। मैंने नीड टू डू दिस फॉर अरे लास्ट कॉल देनी है अभी या नहीं? हाँ दे दो लास्ट कॉल। बोलो सर, बोलो आप। हाँ तो उसके लिए व्हाट इज योर नीड टू गेट एन एनसी एज पीडी। एक बार एनसी हो गया get the guys, I am in the waiting room of the DEA office. This is where I first came as an informant with 35 feet to Diana Reed. अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, बात सुनाने कहानी, रुक जाओ। सर आपका नंबर मिल जाएगा मेरे को? Dispatch, this is going to be 300. अरे फोन भी नहीं। Show me 42 for the last time in the DEA. And for thank you for your service in DEA department. For the fucking final last. 506 42 for the last time I had you. For your service. 520. It was in. Guys, 520. It was a short journey with you guys, and I have learned many things. I hope you guys will meet in future for sure. And thanks DEA office and Prashant sir, Rock sir to give me an opportunity to add an objective to my career. And yeah, that's it. 520, 42 forever in DA department. Thank you. Stand for
बहुत याद आएगी भाई Hello, thank you, Vijay, for giving me a great opportunity and objective to make it and understand my what is DEA. Thank you. Yes, best of luck for your future. Just do your best wherever you are. और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके. मिलते हैं कभी कहीं और से. And for sure, once again, thank a you. big thanks, a very big thanks to Bittu Rana ji, Diana ma'am, Cypher sir, Jareem sir, Gul Khan sir, each and every person who was there with me from the start. DEA has been a big thing to me and I'll never forget this family. Info, same topic. Safe traffic. And let me clarify, success में full stops नहीं होता है, commas ही होता है. So if you guys want a success, better you know what to do and carry on with your life. Be in touch. That's it. हाँ सर, एक लास्ट टाइम सैल्यूट करना चाहता हूँ सीनियर ऑफिसर. गाइस एक चीज मैं बोलना चाहूँगा. If your services are required again, you will be contacted. So hope for the best. Yeah, 10 10 for Abhi kar do, 10 for so- Abhi. Thank you. And मैं hope last time- we maintain this relation in the same way. सीनियर ऑफिसर को. Thank you Manya for the salute. Hope this relation maintains I'll be in back after our Code Zero dispatch. department. Yes. कहाँ पे रहे? We are ex-DEA officials. सेम ट्रैप पे आपसे कॉल करके गाली दे सकते हैं क्या? Thank you everyone. Thank you so much for your efforts and time. है जी ठाकुर, क्या कह सकते हो? आज नहीं हमारे साथ of course जो प्रसाद ने mention किया. कह रहे हो? आओ बाहर चलते हैं, दारू दूरू पीते हैं आज. Cypher sir, Gul sir, अरे नहीं और यार, अपने दारू दूरू जरीफ पीते हैं sir, बाहर जाके, क्या दाली देनी. डायना जी, मलिका जी, huge shout out to all these प्रधान जी, इन सब ने डिपार्टमेंट को आज जहाँ पे है मदद करी और of course you guys You guys, thank you for 200 subs. Thank you so much sir. चलो भाई, बालास के उठ चलते हैं, चिल करते हैं, चलो भाई. तो वही जा रहा हूँ, एग्जैक्टली वही जा रहा हूँ. आ जाओ मेरी गाड़ी में, आ रहा है किसी को? आ जाओ. नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ. मैं आता हूँ, रुको मैं आता हूँ. I can't understand you guys go. अच्छा, Rusty, what is your future plan? So you're not joining PD? Can anyone? Yeah. Can you drop me a PD? एक मिनट. PD पे? मिलेगा? नहीं तो? प्रोफेसर वेट करना एक मिनट. चलो PD. अबे रुक जाओ, अभी नहीं जा रहा पीडी में. अरे PD में ड्रॉप कर लो ना, ड्रॉप करके पीछे आ जाओ. अरे डिक्की में बैठो, अभी चलते हैं वहीं पे चलने वैसे. यार अभी उसको बैठा लूंगा आने को. Oh, bike में. Who's in the bike? No, bike में है ना? अरे मुझे ये पीडी छोड़ देना था. आ जाओ. नहीं, मानिया के साथ जा रहा हूँ. प्रोफेसर कैरी ऑन. आप क्या पीडी आ रहे हैं क्या? गाइस मैं तो जा रहा हूँ पीडी बिकॉज़ आई डोंट वांट टू स्टॉप माय करियर. देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स and my motto is to serve people and serve nation. So anywhere I can do it. अभी नहीं, बस be chilling today and maybe रॉबर्ट को मैंने मैसेज किया. तो नियर फ्री मैसेज में they are in a meeting actually. So after the meeting, अभी मत जाओ पीडी, अभी मत जाओ. तुमने बोला ना. हाँ थोड़ा चिलिंग करते हैं, पिज़्ज़ा या उधर लेके. Guys, shall we have a meetup anywhere? We are just 76 to one place, then we'll come. Which place? अरे प्लेस बोलो. डायरेक्ट तो जैसे मेरे को भी जाना था वो प्लेस में, मेरे को भी लेके चलो. बोलो तो डायरेक्ट तो आतिफ सर. बालासुर जाओ, बालासुर तो बालासुर कहते हैं. बालासुर जाना है, सब लोग बालासुर जा रहे हैं. बाय डीए.
बहुत इमोशनल फीलिंग थी यार, गलत हो गया। रॉबर्ट को डीएम किया, आई मीन मैसेज किया। अच्छा, I'll get into BCSO डिपार्टमेंट में भी। अरे तुम्हारा नंबर दे दो। अच्छा आप ही वो विजय है आपका? हाँ विजय। अच्छा अच्छा, आपका नंबर तो है, ठीक। वो विक्रम आदित्य आप ही ना? हाँ नहीं है। चलिए चलो एक बार लास्ट वीक दे देते हैं इनके लिए। इनके साथ भी मिल लेते हैं ना लास्ट। मैं तो बोल रहा हूँ उससे मिलना है डायरेक्ट नहीं जाते अंदर। हाँ ठीक है, डायरेक्ट जाते हैं भाई, ये नहीं है भैया। मजा। अरे नहीं, चलो चलो, इसमें क्या? I can't listen. I'm going for the top. I'm going for the top. क्या? I'm going for the top. I can't. तुम कहाँ कोप हो? I am going for the top, right? I can't. अभी तो क्यों ना? नहीं, I can't. तो नहीं कर सकता। मेरा feelings accept नहीं करता। Hello, everything is there on the radio? हाँ, टेलीफोन। Can someone drop to the Pond Cafe, please? I'll be reading here. VLTRP, yeah, sounds good. Mark करो। Where are you guys? I'm in the cruise ship, near the cruise ship. 10-4, मेरे को सामने लोग मिल रहे हैं। So I just go to your office. I got bit to G. Okay. जी भी आप तो आए ही आज है ना, बहुत टाइम मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉप था वो इसीलिए। कहाँ पे जाना है बोलो? Guys, where can we meet and chill out for a piece of time? अरे कहाँ पे जाना है बोलो तो सही। DEA office. DEA office? Yeah, I mean the XDEA office. डायरेक्ट टू प्रशांत सर। 10-4 send it. 25 में to Woo send it। I'll be 25 to Woo Cafe when I have a 91. Yeah, काम करता हूँ 23. एक मिनट, मैं अपना एक काम करता हूँ कि वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी देता हूँ, वो गाड़ी को ट्राई कर लो आप लोग सर, and then store it in the garage, okay? And I'll be submitting. कोई रेडियो का फ्रीक्वेंसी दूसरा। सर आपका मीटिंग हो जाएगा आज? हाँ जी आ जाएगा, कल तक आपको ये आ जाएगा, अनाउंसमेंट आ जाएगा Announcement. regarding that। हाँ, and I can assure you there would be no bias in terms of the recruitment, alright? Yeah, sure. I prefer I go to PCSO because I have an experience in that. That all will be done हाँ वही so interview। हाँ वही रॉबर्ट सर से एक बार बात कर लूँ इसलिए। हाँ जी आज मीटिंग होगा तो एक बार बात कर लेता हूँ मैं। हाँ जी no worries, I'll be taking care of it। हाँ। कांटेक्ट कर लेना नंबर से। अच्छा नंबर ले तो है लेना। मेरे पास। हाँ विजय आ गए तुम? हाँ गाड़ी है? हाँ है मान्या के पास। चलो चलिए। ओ के पे 99 का 2 के पे चल। 10 on that, प्रशांत सर को वहीं भेजो, रखो, मुझे गाड़ी देनी है उनको अपनी। अरे है गाड़ी है, we are taking Final questions. 99 at Woo Cafe. I'll be getting my vehicle to Woo Cafe, guys. 400 boys, 400 at 2. पूरा स्पीड गवर्नमेंट का। Shut the fuck up. मैं तो क्या कोड 100 सिविलियन हो चुकी। जरा वो चलना पॉइंट कैफे चलना। अरे पॉइंट कैफे क्यों जा रहे हैं? गाड़ी पड़ी है क्यों? अरे क्यों दे रहे हो? मैंने क्यों बोला तुम्हें? चुप रहो ना, क्यों पॉइंट कैफे का बोल रहा हूँ? रीजन तो होगा। ये बंदूक कहाँ खरीद सकते हैं? अरे सर आपने मुझे सुनो, बंदूक कहाँ खरीद सकते हैं? चलो चटको सीधा जाओ वहाँ पर एमिनेशन
फ्लोर को कांटेक्ट करो। एमिनेशन बदला है मेरे पास। वो चाहिए होगा एनओसी 10-4 ऑन दैट, एनओसी लो। पैच एनओसी के बाद आपने पहले मुझे प्रोवाइड करवा दिया होता एप्लीकेशन तो अच्छा होता ना। फ्री में गाड़ी कैसे रिपेयर कराएंगे? एकदम से बैक लेने कुछ नहीं, फ्री में गाड़ियां रिपेयर नहीं होती हैं, साले सिविलियन हो। अभी तो बने सिविलियन।